Good evening, cricket lovers. Once again, welcome for the day number 2 of the prestigious SVT Trophy 2026, which is proudly presented by SVT Volunteers Association, Karshit Mangalore, which is proudly presented by Abaran since 1935. After that successful day number 1, we are into the day number 2, the match between Agrasali Super Kings versus Naganakate Panthers. Winning the toss, elected to ball pass. Here comes the first ball of the day number 2. Right arm over the wicket, nicely played it down to mid wicket. They're going for the quick single, chance of run out in the non-strikers end, but throw which is not quick enough from the fielder at mid wicket, and both the batters are completed single. I request extra player of both the team, please be reported immediately in the commentary box. This time Srinivas played it uppishly but quite safely. Oh, absolutely good judgment. He just stopping that strokes in the last moment and checking the stroke in the last moment, and he got the boundary for that. The first boundary for the innings of team Agrasali Super Kings. Here comes the next one. Tata made a slash it hard and went outside the boundary line, and he need to go outside the boundary line as well because of that slash which is outside the line of off stump, which is offered off the back foot. Vignesh just wanted to go for the square cut. Of course, he played a square cut, but in this particular format of a game, it might be a little bit dangerous to play the shot, and he faced the penalty for that. Wicket number first back in the pavilion. It's 5 for 1. Anish Bhatt is a new batter in, and the bowler is already got the wicket from his bowling. Srinivas Pai, right arm over the wicket. Oh, beautiful, perfect Yorker and delivery. The last moment, the batter absolutely negotiated by keeping his bat into the line of the ball. Beautifully bowled, well executed Yorker and delivery from the bowler Srinivas. Right arm over the kitty balls, played it back to bowler. Chance of run out there. The midfielder, of course, is standing in the deep region, so that both the batters completed single. With that single, scoreboard moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. GK Bhatt is now, of course, the opening batter, and played it very nicely in the gap, and fielder is there in the extra cover region, so that Sandy there at extra cover, the experienced campaigner, covering that fielder very well. So one more over, first over completed. After completion of over number first, searching for the right track, team Agrasali, Agrasali Super Kings has got a start which is 7 for 1. Both the teams has got a start. 7 runs for the team Agrasali, 1 wicket for the team Naganakate Panthers. The fantastic weather condition, of course, after that bright sunny morning and afternoon. We are just starting the day again with the exactly at 5:25 in the second day. Down the leg side, starts with the warm-up delivery of the evening. The bowler brought into attack from the commentary box and to bowl the second over of their innings. And Nagesh starts with the warm-up delivery and warm-up for the umpire as well. He called it wide, and one more extra. 8 on the board. Played it nicely in that extra cover region for a single. With that single, scoreboard moves on to 8 for 1. Nothing much to do with the delivery. Left the ball rightly so, and Nagesh a little bit struggling to get his line and length, and of course need to adapt to the condition. Again, a lovely delivery off the backward, played it down to extra cover region. Again, Sandy, the fielder, not trying for the run out. Of course, the opportunity is created for the run out, but both the batters completed the single. With that single, scoreboard moves on to 11 for 1. 1-1-1-1 all Nelson in the scoreboard. All right, Tom over a lovely delivery, just to try to make a little bit room to play the shot, and getting himself away from the line of the ball to get that extra cover drive, but missed it completely. And Arshit behind the stump did the rest back to bowler Nagesh. Right, oh, very lovely delivery there, very close to the outside edge of the bat. Again, the same technique is implemented by GK, but try to get that one off the back foot. Very lucky indeed. That ball is just missing his the bat, and the wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Good bowling performance so far there from Nagesh after 2 wide deliveries. Came back very strongly. This time full toss.
And fumble from the field, a chance of run out in the non-strike. Oh, now first attempt, second attempt, and the last third attempt he managed to uproot the stump and batter GK, but is already given up. He's not really run quickly between the wicket and pays the penalty for that. Wicket number 2 gone. It's 17 for 2, 11 for 2, correction. It's 11 for 2. A good comeback, a very good comeback here by Nagesh. Now is Akshay, the new batter in it. He will be the non-striker. Here comes Nagesh, right arm over the wicket, bounce system off the back foot, tried to turns the ball on the onside region. Just misses the line completely. Lovely over, fantastic over there from Nagesh. Excluding that 2 wides, I think it's a great over. And now cameraman is very much excited to focus about the eagle which is standing in the edge of the building. And of course, we are only talking about the spectator, but of course, even birds are also sometimes enjoying the cricket here, coming here in this beautiful high school cricket ground to enjoy the SPT Trophy 2026. After that successful day number 1, we are in our second day of this cricket tournament, and Arshit brought it attack to ball the second over. Again, nicely played it, but lack of placement. A good piece of fielding there by Nagesh. And it's gone, my goodness. Well, it's absolutely suicidal, and I think there is no chance of any run there, but already the batter walks into that strike zone. Good presence of mind there by Nagesh, just getting the ball into the hands of bowler, and he just complete the formalities of making the run out. Thank you very much, cameraman. V424 into 7, because yesterday we are not having any focus about in our community box from the cameraman. Today is straight away is having a camera into the commentary box. Thank you very much, and all the best for all the participating team on behalf of all officials. And here comes next delivery. And the third delivery, again nicely played it down to backward point region, gully region. In fact, we're going to pick the single for that, and with that single, Akshay got his run, and total score now moves on to 12 for 3. Welcome for Dikshit is joining an official panel today as umpire. The one more very stylish umpire known as Dicky Bird of South Kendra. Again, little correction. Oh, that might be a single. It's not a Dicky Bird, and I just forgotten the name of the umpire. Billy Borden, actually. The Billy Borden is a kind of the umpire who made a sensation in international cricket, and again now dot delivery. The Billy Borden of the Mangalore, Dikshit, and 13 for 3. Over number 3 is in progress. Shivanand again. So far, very quiet over is in progress. Just some flash straight to the hands of again Sandy. Is a busy customer. Wherever Sandy is going, the ball is absolutely choosing him, and he is a busy customer in the point region. One more dot delivery. 13 for 3. Off the back foot, beautiful slow delivery and well-directed slow short pitch delivery to end the over number 2. 3 correction after completion of over number 3, searching for the right track, and the team Agrasali are really struggling in the middle. It's 13 for 3. Talking about day number 2, and day number 2 will be, of course, we are as per the schedule given in this pictures. We need to complete 10 matches today, and so that we needed some quick work from all the teams, not to waste the time. We need to complete today as early as possible, because tomorrow we need to come back again in the morning. So it's very, very important for each and every team to cooperate with the organizers to complete the matches as quick as possible. Sandy brought in attack the ball of over number 4 of the innings of team Agrasali Super Kings. Vivek is the batter. A sharp, beautiful shot. No need to run for the bat. Off the back foot all the time in the world. Short pitch, almost the batter Vivek, not really, of course, what he wanted to hit it with that one pretty hard, but he's getting a position so quickly and played it square off the wicket for 4 runs. Very important boundary and welcome boundary for the team. 17 for 3. Sandy balls again going to be a wide. Moving that ball is too much again. Lekater outswing delivery.
And Sandy saying that batter is shuffled, but of course after ball delivered, then batsman is players Angeuka. So young Prathamesh, and one who got a fantastic tournament in the last season, is brought into attack and swept that one straight away. Lovely technique there from Vivek. Premeditated before the bowler will go in to deliver the ball. Vivek Prabhu has, of course, made his mind that I wanted to play the sweep shot, and ball came in a full toss. So that's so easy for Vivek to get the direction by sweeping the ball down to square leg for 4. And it's a very important boundary for the point of view of team Agrasali Super Kings, because they needed some runs in the last over. And 25, the quarter centuries comes up here for the team Agrasali Super Kings. And Prathamesh, what we are talking about, a very talented young player for the side. One more full toss, one more placement, good one. Intelligent cricket from Vivek Prabhu. Of course, sometimes more than the power, sometimes this kind of format of a game needed some mind work, and that was delicately played by Vivek Prabhu. Even the full toss ball, he did not really try to hit it hard. He just gets the placement right to get the boundary. The couple of boundaries to start with, and with that couple of boundaries, Kopan moves on to 29 for the loss of 3 wicket in the over number. Last is in progress. Ball down, cleaned him up. Now again, Vivek Prabhu wanted to go for the sweep shot, but he's choosing a wrong delivery for that. Ball pitched in a line on the block hole, and cross-batted stroke which is attempted by Vivek pays the penalty, and the middle stump is uprooted. All middle and off stump is uprooted. It's 29 for 4. Straight away the electrifying atmosphere here in Kendra High School Cricket Ground. The supporters, the coach, and everyone is absolutely the backing of their team. And well, it's going to be so excitement. It's an excitement day of cricket, no doubt at all. And here comes Prathamesh. Ajit, the new batter, in and played it down to mid wicket. Is a chance of run out. But again, the throw is absolutely not good enough. And ample time for the batter to complete the single. 30 for the loss of 4 wicket. Ajit Bhatt is off the mark, and that brings Akshay into strike now. Last over is in progress, and last 2 deliveries left in their innings. And wait and see how well the team Agrasali Super Kings will going to finish their innings. Here comes Prathamesh Chennai, right arm over the wicket bows. Lovely shot, but lack of placement. Played it down to extra cover. No, they're not going for the run. Maybe the Akshay wanted to keep the strike for the last ball. At least he wanted to get the boundary in the last ball. 30 for 4. Good comeback here by Akshay. After that, of course, Prathamesh, after that, 2 boundaries in the opening deliveries. And it is the last delivery. Slash and slash it hard. And you got the boundary for that. This is what the level of confidence. Why Akshay is not interested for the single in the previous delivery. Because you know exactly that he need to finish this innings with a big shot. And he got the boundary for that in the last delivery of the over. At 34 for the loss of 4 wicket after completion of over number 5. 35, which is a target for the team Naganakatte Panthers to win this match. And that means exactly 7 runs per over, the required run rate for the team Naganakatte Panthers. And wait and see how well Naganakatte Panthers batters will going to get this total. And wait and see how Agrasali Super Kings bowler will going to restrict their opposition. We'll take a short break in commentary box. And before that, I will request once again Sudhindra Warriors as well as Jagali Chirkis, the 2 teams, please get ready for the next match. And it's time for Gopi to take over the microphone. And Gopi, good evening and welcome to the day number 2 of this prestigious SVT Trophy 2025. And today is the most excitement day of cricket, because everybody knows that this is the one day that people wanted to come here and enjoy this gentleman game, the cricket, because all 4 teams which are competing in this particular day number 2 is definitely they wanted to be in the final of this prestigious SVT Trophy 2026. It's over to Gopi. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं को भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला एसवीटी ट्रॉफी 2026 जीएसबी वॉलंटियर्स प्रीमियर लीग सीजन 4 की बेहतरीन शुरुआत इस दूसरे दिन का यहाँ पर हो चुका है और मुकाबला इस वक्त जारी है अग्रसाली सुपर किंग्स और नागरकट्टे पैंथर्स के बीच। अग्रसाली सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन से बनाए। नेक्स्ट मैच जगली चरकेस टॉस विन जाऊन फील्डिंग घेतला 35 द टारगेट 35 रनों का लक्ष्य इस वक्त रखा है अग्रसाली सुपर किंग्स ने और नागरकट्टे की पारी की शुरुआत होती हुई पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। एक रन पिलाके से नुकसान के दोनों आरंभिक बल्लेबाज अर्चित, शिवानंद और नागेश इस वक्त तैयार और यह गेंद अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल रन के लिए दौड़ पड़े इस वक्त तेजी के साथ एक रन पूरा करने में सफल। इससे पहले की गेंद को शॉर्ट कवर पर स्वयं गेंदबाज द्वारा फील्ड कर लिया जाता अपने आगे की ओर जाने के बाद एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर। जीके भट्ट गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ कर चुके हैं और निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतर क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत। एसपीटी वॉलंटियर्स एसोसिएशन का स्टेट मैंगलोर ने इस श्रृंखला का आयोजन किया है। आभरण ज्वेलर्स इस श्रृंखला के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स और जहां तक सवाल है इस वक्त जूनियर कैटेगरी में पहला मैच यहां पर खेला जाता है अग्रसाली सुपर किंग्स और नागरकट्टे पैंथर्स के बीच। नागरकट्टे पैंथर्स के लिए 35 रनों का लक्ष्य 5 ओवर में। जीके भट्ट इस बार swings and this time he finds the gap. This is an outstanding struck came from the bat of नागेश। फ्रंट फुट पर जाने के बाद गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर काफी तेजी के साथ मोड़ दिया था स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट के बीच चौके के लिए नागेश ने और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर 6 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट। जीके भट्ट गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए यह गेंद एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने का प्रयास लेकिन इस बार गेंद पैरों पर टकराई रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के 6 विदाउट लॉस इन ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और जीके भट्ट गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नागेश के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार फिर से रिवर्स शॉट खेलना चाहा बेहतर गेंद थी फैंटास्टिक कमबैक मेड बाय द बॉलर जीके भट्ट आफ्टर बीइंग कंसीडिंग अ बाउंड्री ही बॉल्ड 2 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स। और जहां तक रनों का सवाल है तो रन इस वक्त रुक चुके हैं 6 रनों पर 6 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। कुल मिलाकर इस ओवर में 1 गेंद 2 गेंद और बाकी 2 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर और जीके भट्ट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। हाथों पर द विकेट कट्स एंड दिस टाइम इज गॉन। दिस टाइम इज गॉन। नागेश डिपार्ट्स फुल टॉस गेंद को इस वक्त कट किया था। गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है इस वक्त और इस श्रृंखला के टूर्नामेंट के नियमानुसार इसे यहाँ पर ये आउट कहलाएगा। और देखिए किस तरीके से जस्ट स्लैशिंग स्क्वायर कट बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम इट वेंट फुल टॉस आउट ऑफ द लाइन। तो नागेश का विकेट गिर चुका है और पहला विकेट गिर जाने के बाद इस वक्त स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और नए बल्लेबाज इस वक्त योगेश इस वक्त क्रीज पर मौजूद। जूनियर विभाग का इस वक्त पहला मैच खेला जाता हुआ यहाँ पर और मुकाबला इस वक्त जारी है नागरकट्टे पैंथर्स और अग्रसाली सुपर किंग्स के बीच। इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। रज्जी के भट्ट गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार है। ये गेंद रक्षात्मक तरीके के खेल बैक टू द बॉलर की दिशा में। ओवर के समाप्ति फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड आफ्टर फर्स्ट ओवर मिक्स स्टार्ट फॉर Nagarakatte Panthers 6 runs scored for losing 1 wicket after completion of first over, chasing the victory target of 35 in 5 overs. Now the equation stands 29 to get from 24 deliveries with a required run rate of exactly 7.25 runs per over. और इस बीच काफ़ी लंबी बातचीत चलती हुई अग्रसाली सुपर किंग्स के बीच कि अगला ओवर किसको दिया जाए। कुछ बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है अक्षय, जो कि इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज शिवानंद कामत। और शिवानंद इस वक्त सामना करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज अक्षय इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार। दिस इज आउटस्टैंडिंग वन। अपील इस वक्त कट बाहर के लिए, लेकिन शायद गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बेहतर गेंद थी इस वक्त, कुछ हद तक उछाल लेती हुई अंतिम क्षण में और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार अक्षय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार कट किया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए। बेहतर स्ट्रोक था शिवानंद कामत का, थोड़ा सा विड था और इस विड को कबूल करते हुए गेंद को कट कर दिया। स्लैशिंग स्क्वायर कट और गेंद इस वक्त
कवर पॉइंट सीमा रेखा को पार कर चुकी है चौके के लिए। फैंटास्टिक स्ट्राइक का, और देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को कट किया था इस वक्त। एब्सोल्युटली परफेक्टली स्क्वायर कटिंग दैट वन फाइन, और 4 रन इस वक्त प्राप्त करने में सफल। फिर से एक बार अक्षय गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस बीच तैयार रहा। ये गेंद इस बार कट किया, एक बार फिर से गेंदबाज जाते हुए एक्स्ट्रा कवर पर रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इस बीच शिवानंद कामत सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को खेला, रन के लिए दौड़ पड़े इस बीच। इस बार फील्डर अजित जो फील्डर थे, गेंद को उन्होंने फील्ड तो जरूर किया सीमा रेखा के अंदर, लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए। खुशी की बात यह है कि गेंद को उन्होंने छोड़ा नहीं यहाँ पर, वरना निश्चित रूप से चौका उनके पक्ष में आ सकता था। और अक्षय दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर योगेश के लिए। इस बार कट करना चाहा, बेहतर गेंद इस वक्त, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। हर डॉट गेंद के साथ गेंदबाज का मनोबल इस वक्त बढ़ाते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी तालियों के साथ, सीटियों के साथ। और इस बीच अक्षय अपने और की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर 4 रनों के लिए। God is outside edge on that at the last moment, but the ball went fine just wide of the wicket keeper at the last moment. और चौका इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करते हुए। 2 overs completed, 9 runs came from this over, and after 2 overs the equal battle is now on. 15 for 1 after completion of 2 overs. Meantime, the next match, Sudhindra Warriors will take over Jagali Cherkes, and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. और जहाँ तक इस मैच का सवाल है, शाम के इस वक्त में इस वक्त ये जूनियर विभाग का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ, और दिन धीरे धीरे मैदान पर अंधेरा सा इस वक्त छाता हुआ और रोशनी काफ़ी हद तक कम होती हुई। इन फ्लड लाइट्स की खंबे की बत्तियाँ इस वक्त जल चुके हैं, और मैच एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करता हुआ। गेंदबाज अजित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। शिवानंद कामत इस वक्त सामना करते हुए यह गेंद बैकफुट पर गई, गेंद को कट करना चाहा, बॉटम एज पर गेंद टकराई, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और स्कोर रुक चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर, थर्ड ओवर इन फैक्ट। और अजित फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार शिवानंद का स्ट्रोक, लेकिन मिड ऑफ फील्डर के हाथों में रन नहीं मिलेगा। बेहतर गेंद इस वक्त अजीत की, और बेहतर फील्डिंग मिड ऑफ फील्डर द्वारा, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अजित दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार शिवानंद के लिए। इस बार गेंद को खेलना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, फॉलो थ्रू में अजित गेंद को फील्ड करते हुए थ्रो किया इस वक्त, लेकिन निशाना चूकता हुआ। और इस बीच बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर। दैट मींस 19 रन्स मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 15 डिलीवरीज। 15 गेंदें बाकी, 19 रन और चाहिए विजय के लिए। और अजित इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अजित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। और फील्डिंग में जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त योगेश सामना करते हुए। यह गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया इस वक्त, कवर पॉइंट पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। 1 more run added to the total with that single run, the scoreboard moving up to 17 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. The equal battle is now on। और अजित फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। शिवानंद कामत इस वक्त सामना करते हुए अजित की गेंदों का। इस बार गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर, मिड ऑन पर कहना पड़ेगा। 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 18 रनों पर। 18 for 1 इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और जहां तक सवाल है इस वक्त अजीत का, तो गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन, गेंद को खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। ओवर नंबर 3 की समाप्ति 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहां पर जोड़ चुका है नागरकट्टे पैंथर्स। स्टिल 17 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs, that means in remaining 12 deliveries and required run rate, और रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त जा पहुंचा ठीक 8.50 रन पर ओवर, एग्जैक्टली 8.5 रन पर ओवर द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम। और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का,
चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार गेंदबाज विघ्नेश और शिवानंद कामत इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए शिवानंद कामत इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और इस बीच पहली गेंद पटकी हुई गेंद पुल किया मिड विकेट पर फील्डर मौजूद रनों का खतरा लेकिन नए मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं यहाँ पर बल्लेबाज बेहतर फील्डिंग वहां पर मिड विकेट फील्डर द्वारा रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ अब इक्वेशन सीम्स टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टिफर फॉर देम दैट मींस नाउ 11 balls remaining 17 runs required और विघ्नेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट ये बेहतर गेंद थी फैंटास्टिक डिलीवरी अपीलिंग फॉर कट बिहाइंड लेकिन यहाँ पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं बेहतरीन गेंदबाजी फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर विघ्नेश और बाएं हाथ ओवर द राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी की थी रन से बल्लेबाज को नहीं मिला 10 गेंदे 17 रन द इक्वेशन स्टैंड्स फॉर नागरकट्टे पैंथर्स ड्रोन कैमरा जो के मैदान के पिच के ऊपर इस वक्त लहराता हुआ और हर क्षण को इस वक्त कैप्चर करता हुआ ये गेंद ड्राइव करते हैं मिड ऑन की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है अजीत का थ्रो सीधे स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ शिवानंद कामत की बारी पर पर्दा गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा लक्ष्य और भी यहाँ पर कठिन हो चुका है देखिए रिप्ले पर दिखाया जा रहा है गेंद को ड्राइव किया था मिड ऑन पर अजीत तेजी के साथ गेंद पर लप के थ्रो किया निशाना स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ और शिवानंद की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है नाउ 18 for the loss of 3 wicket 3.3 or 17 ball that means in remaining 9 deliveries they have to score 17 more runs for victory quite difficult target but not impossible if they batted bravely it would have been possible for them और पिच के अति निकट इस वक्त ड्रोन कैमरा इस वक्त लहराता हुआ और ऐसा कहना पड़ेगा इस मैदान के हर चित्रण को इस वक्त वो अपने कैमरे में कैद करता हुआ और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला एसवीटी ट्रॉफी 2026 की शानदार प्रगति होते हुए ये गेंद इस बार बेहतर वन मोर डॉट डिलीवरी दिस इज टर्निंग आउट टू अ फैंटास्टिक ओवर गेंद को इस वक्त कट करना चाहा था चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन बल्लेबाज को नहीं मिला 8 गेंदें बाकी 17 रन चाहिए बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए गेंदबाज विघ्नेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट पटकी हुई गेंद एक बार फिर से बेहतर गेंद इस वक्त थोड़ी सी उछाल लेती है विकेट कीपर के हाथों में रन नहीं मिलेंगे और 7 गेंदें 17 रन इस ओवर में सिर्फ कोई भी रन इस ओवर में प्रदान नहीं किया पहले 5 गेंदों में गेंदबाज विघ्नेश ने no runs conceded by Vignesh the bowler in this over in his very first 5 deliveries fantastic bowling performance continuing here from him और इस ओवर में अंतिम बार बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार बेहतर मेडन विकेट इनफैक्ट इट्स अ मेडन ओवर बाउल्ड बाय विघ्नेश रन आउट के रूप में एक विकेट गिरा है मेडन विकेट नहीं होगा मेडन ओवर यहाँ पर कहलाएगा और जहाँ तक सवाल है इस मेडन ओवर के बदौलत यहाँ पर अब इस वक्त अग्रशाली सुपर किंग्स का तख्ता यहाँ पर बारी लगता है बेहतरीन गेंदबाजी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस गिवन बाय द बॉलर विघ्नेश अंडर प्रेशर इन द क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मैच नाउ द इक्वेशन स्टैंड्स 18 runs they are scored that means 17 runs more now they have to score for victory in remaining last over that means in remaining 60 deliveries and this is an absolutely difficult task in front of the batsmen of Nagarnakatte Panthers but not impossible if they batted bravely it would have been possible for them और जहाँ तक चौके और छक्कों चौके का सवाल है छक्के तो नहीं है चौके का सवाल है इस वक्त इस अंतिम ओवर में चंद चौकों की उन्हें सख्त जरूरत है यहाँ पर इस मैच में कमबैक करने के लिए और इस बीच गेंदबाज मैच निर्धारित ओवर मैच डिसाइडिंग ओवर स्टार्ट और गेंदबाजी इस वक्त करते हुए गेंदबाज जबकि दाहिने हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर सामना करते हुए अनीश भट्ट गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 17 to get from the last over सिर्फ चौके ही इस ओवर में इस मैच में वापस ला सकते हैं यहाँ पर नागरकट्टे पैंथर्स के बल्लेबाजों को और अनीश भट्ट इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार बॉल्ड आउट स्टंप्स एक्सपोर्ट करते हुए उछालना चाहा मिड ऑन लेग स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है श्रीनिवास की पारी समाप्त पूरी तरह स्टंप्स एक्सपोर्ट करते हुए गेंद को ऑन साइड पर पुल करना चाहता चूके और गेंद सीधे उनके बल्ले को वंचित करते हुए मिड ऑन लेग स्टंप पर जा टकराती है देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था वेल कहते हैं रिप्ले और लेग स्टंप उखड़ कर यहाँ पर गिरता हुआ लेग और मिड स्टंप कहना पड़ेगा अब 5 गेंदें बाकी 17 रन चाहिए 17 runs to get from 5 deliveries
Absolutely a difficult task in front of the batsmen of Naganakatte Panthers. Naya ballebaz, new batsman Sandeep Kamath, Sandy is now comes out to the middle. और इस बीच गेंदबाज अनीश भट्ट गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए और गेंदबाज अनीश भट्ट अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। संदीप याने सैंडी के लिए ये गेंद फुल टॉस, चूके इस वक्त ढीली गेंद जरूर थी फुल टॉस के तौर पर, लेकिन स्ट्रोक्स खेलने में चूके और गेंद सीधे पहुंचे इस वक्त विकेट कीपर के हाथ में। अब 4 गेंदों में 4 चौके अगर लगाते हैं तो मैच टाई हो सकता है, लेकिन मैच को इस यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं इन बचे हुए 4 गेंदों में। और लगभग 4 गेंदों में अंतिम 4 गेंदों में 4 चौकों की जरूरत है इस मैच को टाई करने के लिए। और अनीश दाहिना तो बढ़ता विकेट नागेश के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहो ऑफ साइड पर, गेंद गई ऑन साइड पर, रन नहीं मिलेंगे, डॉट गेंद। और अब 3 गेंदे बाकी, 17 रन चाहिए और अगर गेंदबाज को नो बॉल या वाइड ना फेंकते इन बचे हुए 3 गेंदों में तो यहाँ पर अग्रसाली सुपर किंग्स की विजय निश्चित है। और अनीश भट्ट दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद सैंडी के लिए, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 10 गेंदों पर, अंतिम 10 गेंदों पर कोई भी रन बनाने में सफल नहीं हुए यहाँ पर बल्लेबाज नागनकट्टे पैंथर्स के। और अब ऐसा लग रहा है सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गई है। 2 गेंदे 17 रन बाकी चाहिए। ड्राइव्स एंड गॉन, Sandy departs and 1 more wicket fallen, and now it looks like just a formalities remaining in this match. 1 ball remaining, 17 runs to get. This is an absolutely impossible task in this type of format of cricket. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो अंतिम गेंद का सामना करते हुए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। Just formalities now remaining this match. 17 to get from last delivery. और रनीश भट्ट तैयार, नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार चूके। और इसी के साथ यहाँ पर दूसरा मेडन, consecutive second maiden ball by the bowlers of Agrasari Super Kings, and they won the match handsomely by 16 runs against Naganakatte Panthers in the first round of the junior category. And with that 16 runs big margin victory, Agrasari Super Kings back the complete points against Naganakatte Panthers. So the bottom of 1 match ended the second match of the week. So these are what is the Delhi champions, और वो मैच शुरू होगा 23 छोटी देर के बाद हम आपके सामने काफी से उपस्थित होंगे मेरे काफी दोस्त। अगले दिन से 3 मिनट अगला मैच आपका शुरू होगा, तो अब वक्त ब्रेक पाकिस्तान को ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। The man of the match of the previous match, which is goes to Vivek Bhatt of Vivek Prabhu of team Agrasali Super Kings for his
big contribution from the batter, the 15 valuable runs in 9 deliveries. 1 minute, umpire, please await. Pawan Nayak brought into attack to ball the first over, and Aniruddha will going to take the strike. And here comes the first over of the match number 2. And the innings of Jagali Cherkes. First ball, innings of correction of Sudhindra Warriors. The first ball, lovely, fantastic delivery indeed. Short pitch delivery and well within the reach of the batter and no chance of any run. Right arm over the wicket, balls off the back foot to try to pull the ball. Played it down to short square leg region. Completed the swing quickly. And Vasudev is a new batter, of course, opening batter. Will come to the crease now, and he will going to take his first delivery of the over number first. And Vasudev Kamath will going to take the strike. Pawan Nayak once again bowled the short pitch delivery. This time umpire will going to call that wide. Yes, it is. Umpire just saying that is a one from the over. The one from the over, and umpire already given on from the over, so that yes. Of course, Anirudh is saying that if a bowler bowls bouncer, you can go for the big shot because it might be the wide delivery. If you bowled another short pitch delivery over the waist or shoulder, lovely, beautiful shot. That was absolutely elegant from Vasudev. This time, actually, just waiting for the ball coming to his bat and played it off the back foot. Steers the ball quite nicely into that gully region for 4 runs. Delicately played there by Vasu, and perfect technique to implement when you're playing such kind of format of a game, 30-yard game, when you wanted to play the ball along the carpet, along the ground. This kind of technique definitely will going to help you to get the runs to your team. 6 without loss of and wicket. This time, umpire will going to call that no ball because already one warning has been given in this over. So bowler can't do the mistake by bowling the 2. So he will be taken off or not? I think oh my goodness, actually the bowler is in trouble. Actually bowled a second short pitch delivery and it's no ball. The free hit delivery for batter Vasu. And here comes the next ball. Right arm over the wicket, balls to Vasu. Vasu off the back foot, played it. Good piece of fielding there by the fielder. It's not so easy when you're standing in just an edge of the boundary line. It's very difficult time for the fielder how to judge that the ball very well to field the ball, and he did a good job to prevent the boundary. One more run added to total, 8 without loss of any wicket. In the over number first is in progress. Splash it! Oh, good presence of mind by the cow point fielder. Is just once wanted to get the ball. And Aniruddha is saying that can umpire go for another no ball? Umpire saying no. It's not that much of a height. It was absolutely in a good height. You slash the ball, your mistake, and he slashed the ball pretty hard. And the fielder at cow point region, once he tried to get the ball to take the catch, quickly realizing that the ball is going out of the boundary line, is getting away from himself from the line of the ball. And Aniruddha is back in the pavilion. It's 8 for the loss of 1 wicket. Pancham. New batter just wanted to reach to that delivery, which is wide outside the line of off stump, but well within the reach of the frame line. First over completed. After completion of first over, both the teams has got a same start. 8 runs for the team, batting team, the 1 wicket for the fielding team. That means team Jagali Cherkes got 1 wicket. At the same time, Sudhindra Warriors got 8 runs from the board. We have two gentlemen and a man left. They're doing a fantastic job in the scoring department. We have Aditya in online scoring department in Crick Heroes, and of course we have Ramshir is of course online scoring department for V4 24/7 channel, and we have Mr. Sri, Mr. Don Sri is Drone Sri means is a specialist of drone operator, so that he's got a nickname of Drone Sri, and his direct hit is gone. What a presence of mind, what a fantastic throw coming from the wicketkeeper behind the stump. The wicket number 2 gone. Lovely work done by Vinod behind the stump. Just have a look at it in the replay.
And batter just tried to flick the ball, and wicketkeeper quickly moving to the direction of the ball. And have a look at the release point. Absolutely fantastic. Right on the money, right on the target. Wicket number 2 gone. And 8 for 2. And Aditya Bhatt, the new batter, came in to bat. One more experience. The batter, Aditya Bhatt, wait and see how well he's going to survive his team. They got 2 wickets back in the pavilion. Venkatesh, right arm over the wicket, bounce and lovely delivery indeed off the back. Could try to steer the ball and didn't got that much of room to play that shot, and missed it completely. No run scored. We have a V4 24/7 channel live telecast under the great leadership of Manik and his team. So far did a great job. Of course, here comes the next one, right arm around the wicket, and right, lovely delivery just outside the line of off time, going for the slash, missed it completely. And in our technical department, the mixing department, we have very experienced Irfan is doing a job so far. Very good job in yesterday as well. Again, played it gently down to point region for a single. With the addition of that single score, moves on to 9 for loss of 2 wicket in the over number second in progress. Wood tight bowling performance so far from this time. Played it very nicely. Good stop. Very good stop. Fielding is really good so far from the Cherkis. And Cherkis means boys, I think so. And the boys are absolutely doing a great job here. And for the team did a great job, especially in the fielding department. Everyone is giving their 100% in the field and restricting some runs, restricting some boundaries. Again, played it in the gap. This time, no chance. He just split that cover and extra cover and played it nicely. This is second boundary for the batter Vasudev. And the previous one in the first delivery, he played first over, he got one. Vasudev Kamath. Adi, I think he got a first boundary from his bat. Vasudev got first boundary in the first over. So altogether 2 overs completed. They're going exactly 7 runs per over. It's 14 for 2. You're watching SVT Trophy 2026 season. Of course, we are season 4 and day number 2 of the prestigious cricket tournament. SVT Volunteers Association, Car Street, Mangalore, absolutely providing the platform for everyone, all categories, the age categories. Yesterday, we have witnessed super juniors performed very well in this particular day number 1 yesterday, and even the senior players also performed very well. And again, played it down to point region for a single chance of run out. Umpire says he's out. And this time, I think the throw which came from the fielder, it's absolutely on the over the bails. Just have a look at the replay. Cuts it hard, and good piece of fielding, good return as well, and he complete the job. Of course, the ball in his hand maybe, and the wicket number 3 back into pavilion. 14 for 3. नेक्स्ट मॅच उग्राण सेवक आणि महामाया क्रिकेटर्स दोन्ही टीम कॅप्टनान तुमगेल टीम रजिस्टर करू का. फर्स्ट कॉल. Varun Kamath is a new batter in. This time Aditya played it down to mid-off region. Now Aditya quickly realizing that his presence is very important here to get some good score. 15 for 3. 15 for 3. Here comes Sanket, right left arm around the wicket, he balls. This time lofted and well stopped by the fielder. He's not really tried for the catch. You know exactly more than the catch. He need to save the boundary, and he's putting his body behind the line of the ball. Ball is came in off volley for that fielder at mid-on, and no run scored. 15 for 3. Oh, lovely delivery. Just wanted to steer the ball down to third man region, beaten by that extra bounce provided for Sanket in the negation. Pissed that one into that outside the line of off stump, and Anvit behind the stump did the job, and back to bowler. Right left arm from the wicket. Pulls it beautifully. Fantastic technique in the negation. And this time you need to be a little bit to become tall enough. You just have a look at the stroke in the replay. This is absolutely fantastic, because he need to deal with that extra bounce, and at the same time almost standing on his toes, pulls it away into the mid-wicket for 4 runs. And typical 30-yard cricketing stroke. Slash it hard.
This is absolutely short pitch one outside the line of off temp all the time in the world for the man who's got too many boundaries from his bat. No way missing this opportunity to get the boundary. Nice way to finish the over number third. Just have a look at this short pitch delivery. Shots outside the line of off stamp, and they enjoy that stroke. One into the mid wicket, one into that extra cover. This time, Vinod brought into attack. It's 23 for 3. Vinod will go into ball. Vinod Kamath will go into ball to Aditya. But Aditya Bhatt played it beautiful. That was absolutely gorgeous. It's a control of that square cut has been absolutely fantastic. Because if you slash the ball, you can get out. If the ball will go into the pull, it can become out. But just have a look at the control in that shot. Absolutely perfect control. Adjusting the stroke in the last moment. It's 27 for 3. Once again, try to repeat the stroke. This time it just pushes that one instead of hitting it pretty hard. Just pushes the ball down to point region for a single. With that single, score moves on to 28 for the loss of a 3 wicket in the over number 4 is in progress. Lovely cricket is in progress here in this beautiful Kendra School Cricket Ground. Kendra School Cricket Ground began played it a little bit late in the negation. Vasudev waiting for the ball and just guiding it down to gully region for a single. Sensible batting so far from these two batters. The very good partnership is progressing. 29 for 3 in the over number 4 is in progress. Vinod Kamath to Aditya Bhatt. Again, Aditya Bhatt edging it down. Good stop. Very good stop. Lovely stop by Adi. And sometime in cricket, you have to play some football as well, isn't it? Especially in this the kind of format of games, you need to be good enough to use your feet to stop the boundary. Ugrana Sevakani Mahamaya cricketers second caller. Team register Jauka. It's 30 for 3 now. Again, played it down to mid-on. This is a good cricket altogether. Both the batters are not wasting any single delivery. They're rotating the strike. Whenever they're getting a chances to get the boundary, they deal with the boundaries. Altogether, good cricket. 31 for 3 now. Right arm over the wicket. Balls down the leg side. It's going to be a wide. Little margin for error. When you are trying to get the ball outside the line of leg stump, you need to be very careful. 32 for 3. We can see the good score on the board. In this format of a game is always seeing that 40-45 runs is going to be a winning score. Again, off the toes, flicks it away down to mid-wicket region. A little late reaction coming from ground Vasudev. Saji. Daikornumi Vedike Reuka. So 4 overs completed. It's 33 for 3. Again, we can see the Nelson in the scoreboard. 3-3-3. And 33 for 3 after completion of over number 4. Last over remaining in the innings. Next match, the match number 3 will be played between Ugrana Sevakas versus Mahamaya cricketers. So that I request all the players to complete your formalities of signatures and get ready for the next match along with the tossing ceremony. So last over of the innings of the team Sudhindra Warriors. The last over for Sudhindra Warriors. So far the Warriors, they played like a Warriors. And last over remaining. Nagesh Bhatt brought into attack. And this time I think a little bit misplacement there. The short pitch outside the line of off temp. Adi not really trying to hit it pretty hard. He can slash the ball ground to ground. But he just managed to complete the single. Maybe that he wanted to get Varun into strike to deal with this time. This is why Adi Bhatt wanted a single, because you know exactly this man is a perfect player to deal with the last over, and the man who already got some runs from his bat. I want to say how many runs he scored. Ugrana Sevakani Mahamaya cricketers final caller. Tumgal captain and immediately registration desk Yoka. 14 is batting on 14 in 7 balls. This time again played it gently down to point region. They wanted to complete the single. They complete the single. They have to run quickly to complete that risky run. But you have to take the risk because they're dealing with the last and final over. And with the addition of that single score, but moves on to 39 for the loss of 3 wicket. Wonderful, wonderful cricket is in progress of the second day of prestigious SVT Trophy
2026. A good number of crowds already enjoying the game of cricket. The sample said, oh, what a stop. What a stop by the fielder at square leg. That was absolutely certain boundary, because you can see that the reaction time is absolutely the couple of seconds, not more than that. You have to react to that fielding very quickly to stop the boundary. But he did a great job to stop the boundary. 40-3. Again, lovely full shot. You can't do the mistake of bowling the short pitch delivery for this man. He's got every technique, the great technique of hitting the ball down the ground. Pulls it beautifully, and scoreboard jumps into 44-3. Now it's a huge score as far as this format of game is concerned. The 30-yard format of a game, the 44 is always going to be a good score. Now going to be a wide pressure now for the bowler after that boundary. And last delivery, the bowler wanted to restrict the runs, but Varun wanted to finish the things with a big one. This time, a lovely finish for the over. A chance of run out in the non-strikers end. Adi, but maybe short of his crease is gone. Umpire says he's out. That's it. The team Sudhindra Warriors, they finished their innings of 5 overs with a very good score. And they scored 45 runs in the stipulated 5 overs at the rate of exactly 9 runs per over. And they set a target of 46 to win this match. That means required run rate is exactly 9.25 runs per over for the team Jagali Chirkis. And wait and see how Jagali Chirkis, the boys of Jagalis, how well they're going to chase these runs when they're going to come into bat. And wait and see how well the Sudhindra Warriors, the Warriors of Sudhindra, how well they're going to ball here. So altogether, it's going to be a good match here for the good spectators. We'll take a short break in commentary box. It's a time for DJ to have some entertainment, and after that, my friend Gopi will going to take over the microphone. Thank you. वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर। 2 लगातार वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं गेंदबाज पंचम भट्ट, और अपने सही लेंथ और लाइन को प्राप्त करने में कुछ हद तक दिक्कतों का इस वक्त सामना करते हुए, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार पंचम भट्ट गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद फ्लाइटेड गेंद को मोड़ना चाहा एक बार फिर से, लेकिन इस बार गेंद लेग से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। द स्कोर स्टेज एट 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 21 बॉल्स रिमाइनिंग, 37 रन रिक्वायर्ड। एलईडी स्क्रीन पर इस वक्त इक्वेशन दिखाई देता हुआ, और गेंदबाज पंचम अगली गेंद के लिए तैयार है। यह गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खेलना था। लेग ब्रेक गेंद इस वक्त अंतिम क्षण में गली पर गेंद फील्ड होती हुई, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका। 1 more run added to the total. That single run, the scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. और इस बीच रन्स सिंगल्स के रूप में बनते हुए जगली चरकेज के बल्लेबाजों के लिए चाहिए इस वक्त चौके इस मैच में कम बैक करने के लिए उनके बल्लेबाजों को, और पंचम अगली गेंद लेकर तैयार। फ्लाइटेड इस बार शेयर किया, फाइन, एंड नागेश भट्ट इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और इस वक्त गेंदबाज विकास गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हैं। 2 रन चाहिए, 4 गेंदें बाकी। 2 runs to get from 4 deliveries. डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त सुधिंद्रा वॉरियर्स के गेंदबाज विकास भाई को इस मैच में कम बैक करने के लिए, और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज विकास भाई अपने गेंदबाजी के मार्क पर जाते हुए इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के नए बल्लेबाज नागेश भट्ट जो कि सामना करने के लिए तैयार। और यहाँ पर स्ट्राइक वापस अपने पास रख चुके हैं विनायक भाई, और वाइड का इशारा हो चुका है, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। रनों की बराबरी हो चुकी है। वेंकटेश भाई क्रीज पर वापस स्ट्राइकर एंड पर वापस आ चुके हैं। अब रन से चाहिए सिर्फ 1, गेंदें बाकी हैं 4, और ऐसा कहना पड़ेगा जगली चरके से इस वक्त अपने विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है। और इस बीच गेंदबाज विकास गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं। वेंकटेश भाई जो कि एक अपने टीम के लिए बेहतर पारी खेलते हुए सामना करने के लिए तैयार, और विकास हल्के से पुश कर दिया, शॉट कवर की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े और निशाना चूका, और इसी के साथ जगली चरकेस are won the match thrillingly in the last over with just 3 balls to spare against Sudhindra Warriors in a thriller, and with that victory they are through to the next round of this competition. So a fantastic match ended, which won by Jagali Charkes against Sudhindra Warriors in the last over. Thrilling victory for them. And
So, so that is the main, and now the third match is now going to start between Ugrana Sevaks and Mahamaya cricketers. And we'll back right after the short break with my friend Satish in English when the next match will going to start right after this short break. Thank you. Dhanyavad. आमगे लोटो हंगा कैप्टन कापू श्रीधर शने आयिलस 21 ग्रेनेडियर्स इंडियन आर्मी एक पटी हंगा वेदिके रेवका तशी ती नेक्स्ट मॅच उग्राणा सेवक आणि महामाया क्रिकेटर्स दोन्ही टीमांना क्रिजारी लाईन अप कर का एक पटी महामाया क्रिकेटर्स आणि उग्राणा सेवक दोन्ही टीमांना क्रिजारी लेफ्ट अँड राईट साइड लाईन अप कर का कॅप्टन जाऊन सेव करता एक गर्वा विचार आमका आता दोन्ही टीमांना उग्राणा सेवक आणि महामाया क्रिकेटर्स दोन्ही टीमांना संकट प्लेयर्सांना लाईन अप कर का एक पटी गेस्ट तो घेऊन तुमके एक विशेष करताची त्याच्या नंतर मॅच स्टार्ट जाता उग्राणा सेवक सकडान एक पटी येऊ का सत्य एंटरप्राइजेस अदकुनु विवेक पाई माम एक बड़ी वेदिके रेवका दोन्ही टीमांना लाईन अप करतात आमगेले गेस्ट येता सजी
धन्यवाद सक्कड अतिथीनं वापस स्टेजावर येऊन वयसून मॅच पळोवका मंडी म्हणून घेता आता टॉस जाल्लो प्रकार महामाया क्रिकेटर्स टॉस विन जावन फिल्डिंग येतील आसा ऑफिशियल्स आयिल्ल आसा जी मॅच स्टार्ट जाता ओवर टू कमेंट्री टीम So thank you so much. Coming to the match number 3 of the day number 2 between Ugrana Sevaks versus Mahamaya cricketers, and everything is ready here for the match number 3. The umpires ready here, and everything is ready for the match number 3. I request extra player of both the teams, please be reported here immediately. ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಮಹಾಮಾಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ So opening batters already they made their way to the middle of the pitch. आता कॅप्टन कापू श्रीधर शणे अंका आमगेल्या असोसिएशना वतीनं एक सान सन्मान करता आसा जी वेदिकेर आशिल्ल्या इतर गण्य व्यक्तींना तांकां सन्मान करपाक मंडी म्हणून घेतास. So winning the toss, captain of Mahamaya cricketers elected to ball first, and Lakshmesh has got a ball in his hand to start the proceedings. And two umpires, Rakesh and Rupesh are the umpires. They're taking their respective position. And here comes first delivery, Lakshmesh. Balakrishna is on strike. Lakshmesh with a short run up, bowling away from us. He will go into ball right arm over the wicket. The first ball outside and off temper, nicely behind the line of the ball. Short pitch delivery, direct it, but the batter has made it. No damage done, and Balakrishna is off the mark, and team is also off the mark with that single. One without loss of an wicket in the over number. The first is in progress. The Pratham will going to take the strike. Oh, a lovely delivery, beautifully bowled, extra bounce in derogation. So they're going for the quick single in the form of leg by. Yeah, with that leg by, Scoburn moves on to 2 without loss of any wicket. Good start there from Lakshmesh as bowling his first over and right on the target, right on the money. Not really given any opportunity for the batters to freeze their arm. And 2 singles in the first 2 deliveries for the team Ugrana Sevkas. And Ugrani Sevaks have to get some good total here against Mahamaya. Again, nicely behind the ball. A soft hand comes into play.
nicely behind the line of the ball. Good cricket altogether. Even though if you are not able to get the boundaries, at least have to rotate the strikes. The singles is very important in any form of the game, because the rotation of strikes will go into some kind of confidence for the batter, and getting the singles in each and every good deliveries and hitting some hard deliveries for the boundaries will go to get them into the good target. Here comes Lakshmish again. Right arm over the wicket. Prathamesh, lovely delivery. Beautifully bowled. Extra bounce on the occasion. Not at all enough. Of course, the Prathamesh is a little master and try to get that one off the back foot, but beaten by the bounce and the turn, and no run scored. First shot delivery of this over. 3 without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Lakshmish again back to his bowling mark, searching for the wicket. Right arm over the wicket delivers. Again, played it gently down to back cow point region. Good piece of fielding there by the fielder at cow point region, saving the boundary. And Prathamesh have to settle for the single. With that single, scored numbers on to 4 without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Lakshmish Baliga, experienced campaigner and good bowler, already got a good start, decent start from him in first over. 4 runs conceded. Final time in this over. He will go into bowl right arm over the wicket. Balls again, drives that one. Lack of placement, straight to the hands of mid-off. Almost he tried to york the batter outside the line of off time. Good over there from Lakshmish. Excellent over after completion of over number. First, it's 4 without loss of any wicket. You're watching the prestigious SVT Trophy 2025, and which is proudly presented by Baran Jewelers and well organized by SVT Volunteers Association, Karshit, Mangalore, in this historical Kendra High School cricket ground here in Dongarakeri. The bowler brought into attack. The ball are now one more young talented player brought into attack to bowl the second over. It's a good contest between two very good talents, young talents, Arnav versus Prathamesh. Here comes first ball. Right arm over the wicket. Oh, full toss delivery. Missed it completely. Well, and Pratham will going to take the strike. Pratham this time he's leading into a drive. This time he got the placement right. This time what he did is that he's just waiting for the ball. The full toss ball, juicy full toss from Arnav, and he got that one leaning into the drive, getting that one into that extra cover region for a single, stretching his front foot, and placement is good enough to get the boundary for his team. So with that boundary, scored moves on to 8 on the board without loss of any wicket in the over number. Second in progress. Arnav to Pratham Naik. Shot on up. Again, the shot outside the line of off time. Pratham fails to take the advantage of the delivery, and he will go to pick the single for that. 9 without loss of any wicket. Pratham, I still remember in the last season, he scored plenty of runs from his bat. He's shown his talent in batting and bowling. Good all-rounder for the side. And we will see how we'll go into perform in this season 4 of SVT Trophy 2026. Left-hand batter is on strike, right and left combination. Balakrishna will go into face Arnav. Shot outside the black stump, going for the full shot, but missed it completely. But umpire will not going to miss that, call that wide. Rupesh, the umpire. We have the qualified umpires, qualified in Karnataka State Cricket Association. 10 without loss of any wicket in the over number. Second is in progress. Again, played it in the gap, and he got to back boundary. Lovely placement from Balakrishna. Just played it wide of the bowler, and instead choosing the straighter version, and got the boundary for that. 14 without loss of wicket. Again, good placement and played it down to short correction, long of mid-off region, wide-ish, and picked up a single. 15 without loss of any wicket in the over number. Second is in progress.
Again played it nicely into the extra coverage and for a single 16 without loss of any wicket. Over number 2 which is comes in, and 8 runs per over run rate which is progressing here for the team. (16) without loss of any wicket. Good going here for the team so far, for the team Ugrana Sevaks. There are 2 Sevaks out there in the middle for Ugrana. They try to get some good start for the team. Already they got a start, a very good start. 16 runs in 2 overs at the rate of exactly 8 runs per over. And Vijay Raj, one more experienced campaigner, good all-rounder, brought into attack. Right above the wicket, lovely delivery. Chance of run out. It's going to be a suicider. And I think there's no chance at all for any run. And fine surface. The pitch is absolutely very fine. If you're not having a proper grip in your shoes, then it's going to be a trouble for the batter. Of course, he need to a little bit stop his run. By doing that, I think he's just lost his balance. And the bowler on his follow-through, Vijay Raj, making no mistake at all. Complete the formalities of run out by throwing the ball into the hands of wicket-keeper. Raghavendra completes the formalities of making that run out. 16 for 1 in the over number 3rd is in progress. A new batter in is jersey number 78, the lovely cricketer Gautam. नेक्स्ट मैच श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स आणि राजांगण रॉयल्स दोन्ही कॅप्टन आणि टीम रजिस्टर करगा. फर्स्ट कॉल. Gautam won the Man of the Series award in the Panthers League, which is ended in a usage cricket ground. And Panthers Super League umpire, there's a very good sportsman spirit shown there by Gautam, and umpire not really having any idea that ball has got a touched the bat, and he's given a wide, but quickly the Gautam is also said that yes, I got a bat onto that. A good true spirit of cricket here from Gautam, and 16 for 1 sportsman spirit shown by Gautam. Again nicely turns that one and misfield there by the fielder. It's a stoppable one, isn't it? The fielder is standing in the edge of the boundary line, and he couldn't manage to stop the ball. And just have a look at the replay. Off the back foot, nicely turns, and boundary comes off here. Boundary, with that boundary score moves on to 20 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. And Vijay Raj so far is almost succeeded to put some break on the run rate, but 1 boundary once again giving some kind of comeback here for the team Ugrana Sevaks. Vijay Raj just missed his run off and is back to his bowling mark, bowling away from us. Right arm over the wicket, delivers. Again, now lovely improvisation. Oh, what a stop! My goodness. It's an excellent piece of fielding there by the fielder. First he stopped the ball from his shoes, and the second attempt he is using his hand, and altogether a good stop. Just have a look at it in replay. Stops it from his legs, or it could be a certain boundary, and again you can see that presence of mind to get the ball, and in the second attempt he saved the boundary. Just a single. With that single, scope moves on to 21 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. So now a bowler wanted to come round the wicket because left-hand batter is on strike. Balakrishna so far is batting on 7, and he will go into face next delivery of the over number 3rd. Full toss, spread it down to mid-on, not for run. And Arnav there at mid-on, quickly reacted to that fielding very quickly and denying the single from this to batter. The full toss delivery, and the Balakrishna not happy with himself. We know exactly this is the one delivery he need to capitalize at least for the boundary. And here comes the last time Vijay Raj balls. Just pulls it handsomely, but the ball is gone out of the park. Quite deliberately Vijay Raj pitching it short, inviting the batsman go for the pull shot, taking the invitation, and batter Balakrishna, just have a look at that one in a replay, pulls it away, but ball went out of the park and is back in the pavilion. And wicket number 2 gone. It's a 21 for the loss of 2 wicket after completion of over number 3. CA उल्लाद जगन्नाथ नायक आणि वेदिके रेवका.
This time pulls it away down to mid-wicket for 4 runs. With that boundary scored Mazan to 25 for the loss of 2 wickets. And the short pitch delivery from the bowler. Just start with the loosener. Warm-up delivery. And warm-up for cricketing stroke there from Gautam as well. Pulls it away nicely. This time I played it one into the deep square for a not for the maximum, but he's gone out of the park and is now need to walk towards the pavilion. Disappointment. Just have a look at it in replay. He played it very nicely, but a little bit uppish, and it's good enough for the bowler to send him back into the pavilion. It's 25 for the loss of 3 wickets. Huge wicket back in the pavilion from the point of view of team Mahamaya cricketers. The new batter in is one more tremendous striker of the ball, Sujit. Of course, the man who loves to play in the aerial route, but this is a different cricket, isn't it? How to play that one down the ground. Different technique need to be implemented when you're playing such kind of cricket, 30-yard crickets. It's not so easy, especially when you're playing over-arm cricket in the 30-yard. It's difficult because ball is coming in one bounce. It's so difficult game for the batter. Again, off the back foot, played it very nicely. Sujit just getting his first run with the gentle gap into square leg region for a single. With that single scope, it moves on to 26 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. Both team has got their own supporters supporting their respective teams. Slashed, and I think it is in the pull or not. Yes, it is. Ball is hitting the banner. And he need to walk directly hitting that. We can see that the roof. We can see that yes, it is. The ball is hitting directly into that roof, so that he need to walk. Two batter walk towards the middle in a similar fashion by hitting the ball out of the park. 3 batters, in fact, hitting the ball out of the park, and it's 26 for 4. This is what the beauty of this cricket is all about. 30-yard circle, it's not so easy game, especially when you are handling that short pitch delivery. You need to be very careful while going for the strokes. Shot selection is going to be a key for the success for the batter. The new batter in with the jersey number 7, Sumit Bhatt, will be the striker now. Raghavendra. Again, played it back. Bowler not for run. Excellent bowling performance so far from Raghavendra, excluding that one boundary in this over. But he bowled brilliantly to come, and he's back in the game with the 2 wickets. This time, he slashed it, and a good feeling there by the fielder. No, they're not going for the run. Sujit is not responding for the run. There is some run there. Maybe Sujit wanted to be in the strike in the next over, last over. Over number 4 gone, it's 26 for 4. And last over remaining in the innings of team Ugrana Sevaks, and wait and see how Ugrana Sevaks will going to set a target here. The last over, they have to get at least 10 to 12 runs here if they wanted to win this match. The previous match is a very good chasing by the team Mahamaya cricketers, Jagili Cherkes against Sudhindra Warriors. The first match was won by Agrasali Super Kings against Naganakatte Panthers. Parthav. The first ball played it straight to the hands of extra cover, not for run. Parthav bowling right arm over the wicket. Again, played it down to a deep short square leg region. They completed a single with that single scope. And Muzanto, they're looking for the run and chance of run out. My goodness. Parthav fails to collect the throw from the fielder. They completed a couple of runs with that couple of runs. Scope. And Muzanto, 28 for 4. Parthav and Arnav, looks like they are the twins playing for one team. Arnav is standing at mid-off, and Parthav is the bowler.
It's 28 for 4. Last 4 deliveries left in the inning. Sujit is on strike. Drives, no ball called by umpire, so that Sujit will going to survive. Oversteps from Parthav, so that I think no ball plus 1, couple of runs which is added to total. 30 for the loss of 4 wicket, and here comes Pratham. Parthav bowls a lovely delivery, beautifully bowled, perfect one in delegation there from Parthav. Sujit just wanted to go for the cut shot, missed it completely. A good comeback here by the bowler. शृंगेरी रायझिंग स्टार्स आणि राजांगण रॉयल्साच्या कॅप्टन्सांना हांगा वेदिकेला येवका इमिडिएट टॉस जाता इनिंग जाताना. Parthav again to Sujit. Again, Sujit played it nicely and good piece of fielding. And of course, excellent fielding. The chance of run out again. The wide throw coming from the fielder. They completed a couple of runs. Very good fielding there from Arnav. But the throw which is coming from another fielder is not good enough. Completed a couple of runs. With that, a couple of runs, Kopan was on to 32 for the loss of 4 wicket in the over number. Last is in progress. Last 2 deliveries left in their innings. And here comes the next delivery. Parthav, right arm over the wicket, bowls to Sujit. Again, a lovely delivery. They wanted a single. Sujit is not interested. One more dot ball. This is turning out to be a good over there from Parthav. So far, restricting the runs. Only 6 runs came from this over. Last delivery of the innings of the team Ugrana Sevaks. This time we set a lovely over which is comes to an end. So team Ugrana Sevaks, they completed their 5 overs quota. They won the managed to score 32 and they set a target of 33 to win this match for Mahamaya cricketers, and wait and see how Mahamaya cricketers will go to get this total. Of course, there seems to be a little total to chase down, but in this kind of cricket, it's very difficult to tell anything about the game. And the wait and see how well शृंगेरी रायझिंग स्टार्स टॉस विन जावन फील्डिंग घेतला. धन्यवाद सतीश. तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त महामाया क्रिकेटर्स का 33 इन द स्टिपुलेटेड 5 overs they have to score for victory.
which is set by Ugrana Sevaks, and the innings now going to start. Openers Arna comes out to the middle. Vijay Raj Pai and Vinayak Kini, the openers. Meantime, the bowler starts a fresh proceedings. Is Gautam Pai, और पहली गेंद का इस वक्त इंतजार है. 33 they have to score with a required run rate of exactly 6.60 runs per over. In the stipulated 30 deliveries, that means in the stipulated 5 overs. With the help of 10 wickets, the present equation shows for them. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए तो इस बीच पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के. और जहां तक सवाल हनुमंत कामत मामाना वेदिके कॉमन विनंती करता सच. एक रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. इट्स वन विदाउट लॉस. द बॉल मिसिंग 2 फॉर अ साथ ऑफ स्टंप फ्रॉम द बॉलर गौतम पाई. और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट विजय राज पाई इज नाउ गोइंग टू फेस द बॉल ऑफ द गौतम. और गौतम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट. गुड डिलीवरी फ्रॉम गौतम. जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट. और गेंद को इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में इस वक्त गेंद चली गई है. रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. पहली गेंद वाइड फेंकने के बाद एक बेहतर गेंद यहाँ पर फेंक चुके हैं गेंदबाज गौतम. और अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार खूबसूरत एब्सोल्युटली कॉपी बुक शॉट. दिस इज आउटस्टैंडिंग स्क्वायर ड्राइव. Perfectly just caught to the right of the pitch of that ball and driven that one perfectly square of the wicket. और खूबसूरत मुरलीधर मल्ल्या कोच्चि दुकोना इला सजी तुम्ही दलरी वेदिके का खूबसूरत कवर ड्रॉ इस वक्त खेला विजय राज ने. और ओवर पिच गेंद पर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया इस वक्त कवर पॉइंट पर स्क्वायर ऑफ द विकेट चौके के लिए. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर. 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज गौतम पाई इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज विजय राजपाई इस वक्त सामना करते हुए. और गौतम चौका प्रदान करने के बाद देखना है कि किस तरह की कमबैक को अगली गेंद पर करते हैं. ये गेंद हल्के से गेंद को शेयर कर दिया. गेंदबाज इस वक्त गली की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. और एक रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण करने में सफल. जस्ट गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंप्लीटेड एट लास्ट. एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 6 ऑन द बोर्ड. yet to lose any wicket in the over number first in progress. दर्शकों की संख्या इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ते हुए अंडर फ्लड लाइट्स एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एसवीटी ट्रॉफी 2026 जीएसबी वॉलंटियर्स प्रीमियर लीग सीजन 4 is now progressing here fantastically in this beautiful Canara High School ground. And this tournament is proudly organized by SVT Volunteers Association Castit Mangalore. Official sponsors आभरण. और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो गौतम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार फैंटास्टिक डिलीवरी. इस बार लो फुल टॉस के तौर पर गेंद थी. गेंद को उछालना चाहता चूंकि गेंद सीधे पहुंचे इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. रन बल्लेबाज को नहीं मिला. और ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त गौतम तैयार. विनायक किनी इस वक्त सामना करते हुए. गौतम पाई की गेंदों का दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को मिड विकेट पर. रन से नहीं मिलेंगे. फील्डर वहां पर मौजूद कान गॉट एनी रन फॉर दैट स्ट्रोक इन द स्कोरबोर्ड स्टेज एट 6 विदाउट लॉस. और इस ओवर में अंतिम बार गौतम गेंदबाजी करने के लिए तैयार. द टारगेट फॉर देम इज 33. दैट मींस नाउ दे हैव टू स्कोर 27 रन्स आउट ऑफ देयर रिमेनिंग 25 डिलीवरीज. और इस बीच गेंदबाज गौतम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ के बल्लेबाज विनायक का इस वक्त सामना करते हुए. यह गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट. वाइड का इशारा अंपायर द्वारा. और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर. 7 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और इस बीच गौतम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा चूंकि बेहतर ओवर की समाप्ति. हालांकि एक चौका जरूर इस ओवर में गौतम पाई ने प्रदान किया लेकिन इसके बावजूद बाद के 5 गेंदों में बेहतरीन गेंदबाजी करने में सफल. और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 33 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हैं महामाया क्रिकेटर्स इस वक्त जोड़ चुका है 7 रन बिना किसी नुकसान के. 7 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर चेसिंग द विकेट टारगेट ऑफ 33 in 5 overs. Mahamaya made a steady start. It's 7 for none after first over. And let's straight away coming back to the equation. 33 minus 7. That means 26 runs required from remaining 24 deliveries with a required run rate of exactly 6.5 runs per over. Now they have to score for victory. Or गेंदबाज
इस बीच गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स इज सुजीत बालिगा। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार था ना तो द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ। गेंद पहुंची इस वक्त मिड विकेट पर, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। निसंदेह यहाँ पर कम बैक करना है उग्राना सेवक्स के गेंदबाजों को। तो एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी क्योंकि उनके बल्लेबाजों कुछ ज़्यादा स्कोर यहाँ पर नहीं खड़ा किया है, लेकिन मौका ज़रूर है इस वक्त उग्राना सेवक्स के गेंदबाजों को इस मैच में कम बैक करने का। और इस बीच सुजीत दाइना तो द विकेट इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। और काफी विड्थ था और इस विड्थ को कबूल करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त खेल दिया था खूबसूरती के साथ। और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुका है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था, हल्के से गेंद पर बल लड़ाया और गेंद को खेल दिया इस वक्त गली और पॉइंट के दरमियान चौके के लिए। स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 11 विदाउट लॉस। दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ। और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस जूनियर विभाग में, इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत। ये गेंद ऑफ द टॉस, जस्ट वेल शॉट ऑफ अ फील्डर एट मिड विकेट। अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था, चेक किया था इस वक्त और गेंद हमें में जरूर थी, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर जो थे थोड़े से पीछे तैनात था और आखिरकार आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद उनके हाथों में पहुंचती हुई रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। सुजीत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक, रन के लिए दौड़ पड़े अब इस फील्ड। और इस बीच बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और मिसफील्ड होता हुआ इस वक्त मिड ऑफ फील्डर द्वारा और बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। इट्स 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 in progress. What a fantastic battle is now progressing in the match number 3 of the junior division between Ugrana Sevaks and Mahamaya cricketers. अगली गेंद लेकर तैयार सुजीत। यह गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 12 रनों पर, 12 on the board in the over number 2 in progress. 10 matches to be played on tonight. And this is the match number 3 of the day 2 of this prestigious cricket tournament. SVT Trophy 2026 is now progressing here. और गेंदबाज सुजीत ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट किया इस वक्त और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। कवर पॉइंट और पॉइंट के दरमियान गेंद को इस वक्त निकाल दिया था बल्लेबाज ने, विनायक किनी ने। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 16 रन। 16 विदाउट लॉस आफ्टर 2 overs फॉर महामाया क्रिकेटर्स। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को पंच किया था ऑफ द बैक फुट 4 रनों के लिए। Now 17 to get from remaining 18 deliveries and the things getting easier a little bit at the situation for the batting side. और 17 गेंदें चाहिए 18 गेंदों में। और इस बीच गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए गेंदबाज प्रथम नायक अपनी प्रथम गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार और दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करेंगे, जबकि सामना करते हुए इस वक्त विजय राजपाई जो कि 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 7 गेंदों कब तक उन्होंने सामना किया है। इस बैटिंग ऑन 10 in just 7 deliveries. Vijay Rajpai is now going to face the first delivery of प्रथम नायक। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त शॉट स्क्वायर की दिशा, मिस फील्ड नहीं, वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया है। जस्ट अ सिंगल ही गॉट and with that single run the scoreboard moving up to 17 at the start of the 3rd over in fact. So this is going to be a really testing time progressing here for the bowlers of Ugrana Sevaks. They have to defend the batsmen of Mahamaya cricketers under 33 runs in this situation. 17 runs already scored by the batsmen of Mahamaya cricketers. Is beach off stump se bahar, better gain, that's the line he has to bowl at this situation. और अगेन सीधे पहुंचे इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 17 रनों पर। फिर से एक बार प्रथम अपनी ओर की तृतीय गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथों पर द विकेट कट्स एंड गॉन ओवर द फेंस, कट्स दैट वन परफेक्टली बट full toss Lee just played that one out of the fence, and because of that because of this tournament's rules and regulations is concerned, it's called out. और यहाँ पर देखिए कट किया था, काफी दमदार स्ट्रोक लेकिन फुल टॉस सीमा रेखा से बाहर। So first wicket fallen is 17 for 1, 2.3 overs gone. Now 16 to get from 15 deliveries। 3 बेहतर गेंदें
इस ओवर में गेंदबाज यहाँ पर फेंक चुके हैं। राघवेंद्र इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और प्रथम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 3 बेहतर गेंद इस ओवर में गेंदबाज प्रथम पे फेंक चुके हैं और अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस गेंद हल्के से स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ। थर्ड मैन पर 4 रनों के लिए। Just a low full toss delivery, just he's steering that one. Just went at the gully feeder and finds the gap as well at last. दुर्गा बचे राजेश की निमन वेदिके रेवका. So just have a look at this in the replay, and he just played that one delicately, and he finds the gap as well at last. और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अभी 21 रनों पर 21 for 1 इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। प्रथम फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार रहा। ये गेंद पटकी हुई गेंद कट करना चाहा, चूंकि बेहतर गेंद थी। गेंद इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। 12 रन चाहिए, 13 गेंदें बाकी। 12 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 13 डिलीवरीज। और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। प्रथम दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद राघव, दैट वाज अ गुड डिलीवरी, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस। लेकिन विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर रहा है। बैकअप होता हुआ शॉट थर्ड मैन पर और चौका प्रदान करने के बाद बेहतर कम बैक कर चुका है यहाँ पर गेंदबाज प्रथम नायक। 2 लगातार डॉट गेंदे फेंकने में सफल। 3 गॉन आफ्टर 3 overs, it's 21 for 1, now 12 to get from remaining 2 overs, that means in 12 deliveries. तो काफी लंबी बातचीत के बाद आफ्टर बीइंग अ लॉन्ग डिस्कशन द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द ट्रैक। और गेंदबाज जो कि इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए 12 गेंदे 12 रन चाहिए। और जो घातक गेंदबाजी की इस वक्त ज़रूरत है उग्राना सेवक्स के गेंदबाजों को, उस घातक गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नंबर 16 जर्सी पहने हुए गेंदबाज बाला यानी बालाकृष्णा इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार विजय राजपाई। इस बैटिंग ऑन 11 of 8 डिलीवरीज। और पहली गेंद लेकर इस वक्त बालाकृष्णा यानी बाला गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए निश्चित रूप से डॉट गेंदों की सख्त दरकार उग्राना सेवक्स के गेंदबाजों को यहां पर कम बैक करने के लिए इस मैच में। दाहिने हाथों पर द विकेट पहली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर एंड स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट। With that single run, the scoreboard moving up to 22 for the loss of 1 wicket at the start of the 4th over. In fact, now 12 balls left, 11 runs required. और राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज बालाकृष्णा। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद और इस बार गेंद को छोड़ दिया। Surprisingly, just left the ball at the last moment. ये अंदाजा लगाते हुए गेंद को छोड़ा था कि गेंद शायद वाइड हो सकता है, लेकिन न गेंद को ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। एब्सोल्युटली मिस जजमेंट इस वक्त करते हुए बल्लेबाज। और इस बीच गेंदबाज बालाकृष्णा अगली गेंद फुल टॉस, बाउंड ऑफ हिज लेग्स और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है विजय राजपाई का। लो फुल टॉस गेंद पर ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहता, थोड़ी सी सफल होते हुए स्टंप से कुछ हद तक एक्सपोज कर चुके थे और गेंद सीधे जाकर स्टंप्सों पर टकराती हुई स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाते, बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, जस्ट पुल्ड ऑफ हिज लेग्स एंड विजय राजपाई डिपार्ट्स एंड सेकंड विकेट फॉलन फॉर महामाया क्रिकेटर्स। नाउ द स्कोर इज 22 for 2. Eleven runs required out of their 10 remaining deliveries. New batsman, number 4 batsman is now comes out to the middle. लक्ष्मीश नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और वो इस वक्त सामना करेंगे बालाकृष्णा की गेंदों का। और बालाकृष्णा इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए एक और विकेट की तलाश में इस वक्त बालाकृष्णा दाहिने हाथों पर द विकेट अगली गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक मिड ऑफ की दिशा में रन का खतरा, निशाना चूक चुका है।
निशाना इस वक्त चूक चुका है। अगर निशाना टकराता तो निश्चित रूप से यहाँ पर बल्लेबाज लक्ष्मीश की पारी पर पर्दा गिर सकता था। It's definitely curtain on the innings of Lakshmish if the throw was directly to the stumps at the last moment at the non-striker end. लेकिन भाग्य बल्लेबाज का साथ देता हुआ और जोखिम भरा रन दोनों बल्लेबाज यहाँ पर पूर्ण करते हुए 10 required from 9 deliveries now. The equal battle is now on. और बाड़ा अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। राघवेंद्र शणा इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने तो बड़ा विकेट कट किया। बेहतर अपील फॉर कॉट बिहाइंड दिस टाइम नो सेज अंपायर। तो इस वक्त जहां तक सवाल है, कट करना चाहता बैकफुट पर जाने के बाद, क्योंकि विकेट कीपर के हाथ में पहुंची जोरदार अपील, लेकिन इस अपील को अंपायर ने नकार दिया और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 23 रनों पर 23। द स्कोर स्टेज 8 balls लेफ्ट आउट एंड रन्स रिक्वायर्ड। बालाकृष्णा एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। राघवेंद्र जो कि इस वक्त सामना करते हुए बड़ा फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ द टॉस गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, लेकिन सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल ही गॉट with a single run. The scoreboard moving up to 24 on the board for losing 2 wicket. Now 9 to get from 7 deliveries. Still I must say it could be anybody's game at this situation. और बराबर का संघर्ष जो कि यहाँ पर जारी। बेहतरीन ओवर अब तक साबित हो चुका है बाला का, यानी बालाकृष्णा का। और जहाँ तक का सवाल है, इस वक्त सिर्फ 3 रन इस ओवर में पहले 5 गेंदों में वो अब तक प्रदान कर चुके हैं। बाला conceded just 3 runs in the first 5 deliveries of this over। और जहाँ तक सवाल है, अंतिम गेंद उछाला, गेंद इस वक्त गैप पर जाती है। एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल ही गॉट। फैंटास्टिक ओवर केम फ्रॉम बालाकृष्णा। जस्ट 4 runs from this over, and from this over I must say Ugrana Sevaks are now back in the game a little bit, and now 8 to get from 6 deliveries। और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा, मैच अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। तो इस वक्त जो घातक गेंदबाजी की तलाश इस अंतिम ओवर में उग्राना सेवक्स के गेंदबाज के लिए, उस घातक गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए गेंदबाज संजय राव, the bowler starts the fresh proceedings and the match deciding over starts in their innings। 6 balls 8 runs required। और सामना करते हुए इस वक्त लक्ष्मीश बालिगा। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और पहली गेंद लेकर संजय तैयार। 8 of 6 here we go। लेकिन बल्लेबाज इस वक्त तैयार नहीं थे और आखिरकार गेंदबाज एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हैं। पहली गेंद लेकर गेंदबाज संजय राव गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। रन के लिए दौड़ पर थ्रो पहुंचा, लेकिन यहाँ पर इससे पहले के थ्रो पहुंचा। बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 1 run added to the total. Now the equation stands 7 to get from 5 deliveries. Still I must say it could be anybody's game at this situation. The pressure is now building up on both sides. और विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। दर्शक काफी खामोशी के साथ इस दिलचस्प मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए, और दबाव इस वक्त दोनों टीमों के खिलाड़ी के ऊपर साफ बढ़ता दिखाई देता हुआ। संजय इस वक्त गेंदबाजी करेंगे राघवेंद्र शनाई के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, विकेट कीपर गेंद को और रन आउट का खतरा, लेकिन निशाना चूक चुका है। रन आउट चांस मिस्ड बाय द विकेट कीपर, बट द बैट्समैन गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। यहाँ पर देखिए बल्लेबाज के पास काफी वक्त था कि गेंद ऑन साइड पर खेल सके, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए और बेहतर स्टॉप करते हैं विकेट कीपर। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। नाउ द इक्वेशन स्टैंड 6 of 4। 6 रन चाहिए, 4 गेंदें बाकी। तो संजय राव इस वक्त टीम के अन्य खिलाड़ी से कुछ बातचीत इस वक्त करते हुए, और इस वक्त विकेट कीपर बाड़ा जो है इस वक्त संजय राव गेंदबाज की ओर आए, कुछ समझाया कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए इन बचे हुए 4 गेंदों में। तो इस वक्त संजय दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, टर्न्स एंड स्टॉप दैट रन, फैंटास्टिकली स्टॉप। बेहतर तरीके से इस वक्त गेंद को रोकते हुए स्क्वायर लेग के फील्डर, और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। तो 3 balls 3 runs conceded by संजय, and now 5 to get from 3 balls। तो मैच अगर टाई होता है तो पॉइंट्स बांट दिए जाएंगे। पॉइंट्स विल बी शेयर्ड इफ द मैच एंडेड इन अ टाई।
और संजय इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद इस बार कट किया इस वक्त गली की दिशा में और इस बार एक रन मिलेगा जरूर. जस्ट अ सिंगल got 4 fantastic delivery ball by Sanjay Rao in this over. Now the equation stands 4 to get from 2 balls. और 2 प्रमुख गेंदें इस वक्त बाकी. 2 important deliveries are remaining in this match. और देखते हैं इन 2 गेंदों में आखिरकार क्या होता है, विजय किसके पक्ष में जाता है. और इस बीच संजय राव गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स. और गेंदबाज संजय राव गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मीश बालिका के लिए. दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार, लंबे रनअप के साथ अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद का मोड़ा. इस वक्त स्क्वायर लेग पर रन का खतरा, थ्रो पहुंचा इस वक्त लेकिन नहीं. रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं बल्लेबाज. 1 run added. Now last ball remaining, 3 to get, 2 for tie, 3 for win. और 3 रन न बनाते हैं तो मैच को जीत जाएंगे, 2 रन न बनाते हैं तो मैच टाई होगा. अगर 1 रन या डॉट खेलते हैं तो मैच को हार जाएंगे. तो देखना यह है कि यहाँ पर इस अंतिम गेंद पर बल्लेबाज क्या करते हैं. ऐसा कहना पड़ेगा उग्राना सेवक्स का भविष्य इस वक्त गेंदबाज संजय के हाथों में, जबकि महामाया क्रिकेटर्स का भविष्य इस वक्त बल्लेबाज राघवेंद्र शनय के हाथों में. 1 ball, 3 runs required. Still must say it could be anybody's game at this situation. The pressure is now building up on both sides. दर्शकों के दिल की धड़कनें यहाँ पर तेज होती हुई, हार्ट बीटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं. और देखते हैं अंतिम गेंद पर क्या होता है. फील्डिंग में जमावट इस वक्त विकेट कीपर करते हुए. और गेंदबाज संजय राव 5 बेहतरीन गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं. इस ओवर में अंतिम गेंद, द मैच डिसाइडिंग बॉल कम्स, लास्ट डिलीवरी रिमाइनिंग, 3 runs to get. Here we go. दाहिने हाथों पर द विकेट. संजय ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर. इस बार in fact they come back for the second. This could be trouble. This could be trouble. Yes, Ugrana Sevaks are won the match by a single run. This is an outstanding effort made by the fielders of Ugrana Sevaks, and finally they won the match by a single run. 1 run thrilling victory for Ugrana Sevak against Mahamaya Cricketers in a thriller, and with that victory they back the complete points. So what a fantastic match has been, came to an end, which won by Ugrana Sevaks against Mahamaya Cricketers by 1 run, and with that victory they back the complete points. So the next match number 4 is now going to play between Sringeri Rising Stars versus Request officials to announce man of the match for the first 3 matches. Sringeri Rising Stars will take over Rajangan Royals in the next match, and that match is now coming up live exclusively. That match is now coming up live exclusively right in front of you within just short while. Meantime, Rajangan Royals playing their first match in this competition, and they will face Sringeri Rising Stars in the match number 4 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2026 GSB Volunteers Premier League Season 4. चौथा मैच यहाँ पर शुरू होगा. We got a boundary for that, 4 without loss of any wicket. Karunasagar. Oh, beautifully bowled, perfect run. Karunasagar is a very good bowler. Sometimes he can surprise with extra bounce. He got height and he getting some exploiting some condition of the pitches, getting some extra bounce, and keeps the batsman quiet. Here comes next delivery, 4th time in this over. Again, lovely shot, beautiful. This is absolutely glorious. The perfectly back foot struck. The back foot square cut played by Adi in the occasion. Not an easy stroke to play in the book. And you need to come under the line of the delivery. Slight a bit of making room to play the square cut, and he got a boundary for that. 8 without loss of any wicket. Again, it repeats that one, but this time a better fielding there by the fielder. And young Hari there in that backward point region fields the ball. First over completed. No, it's 1 ball remaining. 9 already on the board. Man of the match का let करता sir. So Bala receives man of the match of the previous match, the nail biter match. Again, played it a little bit. The third man, Rajan misfield there by the fielder. The young man down at third man need to realize that ball will go into deviate, because ball is not that the stroke which is not coming from the middle of the bat.
And Narsim Shanai is got his boundary. Just have a look at the replay. And pretty ordinary effort there by the fielder in the deep third man. Young man need to learn a lot. Of course, this is a beginning. And it's 13 without loss of any wicket. Good start for the team. And good start for the team. Rajangan Royals. They got a good start with the opening batters. 13 without loss of any wicket. Rajangan Royals. Second over. Pawan Bhagat, one more young talented bowler brought into attack. This time full toss, slashed it away, down to deep extra cover region for 4 runs. Very good technique again from Adi. Not really tried to take that one in the aerial route. He tried to play every delivery down the ground. And he got success so far. 17 without loss of any wicket. Here comes Pawan bowls. Aditya this time tried to get the ball on the onside region. But this time a better line. Ball just coming from the good line spot. Almost targeting the mid-line leg stump. And Aditya but played it back to bowler, not for run. 17 without loss of any wicket in the over number. Second is in progress. Pawan again from the far end. Right over the wicket. The ball's going to be a wide. Little margin for error. Pissed on the mid-line leg stump. And again the ball is just going away from the left-hand batter outside the line of leg stump, and a wide call by umpire. 18 without loss of any wicket. Now Pawan just wanted to come over the wicket and wait and see how well it's going to help him to get some good line and length. Aditya will going to take the strike. He's looking so good so far. Oh, beautifully bowled. This is what actually, when you're bowling over the wicket for the left-handed batter, and you're angling almost outside the line of off temp, the good line to bowl the left-hand batter. 18 without loss of any wicket. Pawan learning from the mistake so quickly in this particular over. 4th time in this over. Bowls. Beautifully bowled. Identical mirror display of the previous delivery. The same line and same length which is bowled by Pawan. You know, exactly quickly realizing what could be the weak point of the batter. And so far he succeeded to get 2 dot deliveries in this particular over. 5th time in this over. Pawan searching for the dot ball, searching for the wicket, and Aditya is searching for 1 boundary here. Again down the leg side, going to be a wide, little margin for error after he bowled 2 very good line outside the line of off time. Now little bit experiment here from Pawan, tried to get the ball around the legs of the batter. The ball is missing the line and they got us extra run. 19 without loss of any wicket. Narsim Shanai just having some word with Aditya, but maybe he's talking about that we have got a very good run rate, no need to panic at all. Even though it's a 2 dot ball, we have got runs what they really wanted in this particular over. Pawan again from the far end. Pawan Bhatt to Aditya Bhatt. Oh, this is 3 similar deliveries. You can see that he bowled that in this particular over. The 3 line, which is almost a similarity. And maybe that little margin, little movement of the front foot here for the left-hand batter, not really getting his front foot into the line of the ball. And again, dot ball. So 3rd dot ball of this over is 19 without loss of any wicket. Pawan bowls. Oh, magnificently bowled. What a fantastic appeal for caught behind. Everyone is up. The wicketkeeper is very, very excited. And looks like sometime it's very difficult for the umpires to judge. Sometimes sometimes the feather touch can and over number 2 which is comes to end. We can see some deviation in the ball, but I think it may be the deviation. No appeal coming from the bowler. So this is what sometime, isn't it? The bowler is absolutely constant. He's not appealing for anything. Only the wicketkeeper going up, and it's very important for the bowler. नेक्स्ट मॅच अग्रसाले सुपर किंग्स आणि गोपूर ग्लॅडिएटर्स दोन्ही टीम कॅप्टन्सान टीम रजिस्टर करका. तशीच ही सेकंड मॅच जगली चरके सदुकुन वेंकटेश भाई मॅन ऑफ द मॅच म्हणलेलो आसा. तुम्ही हांगा येवन तुमगे ट्रॉफी कलेक्ट करका. So 2 overs completed, 19 on the board without loss of any wicket. Good take by Nandu in the behind the stumps. His ball is deviating and he kept very well. And the bowler brought into attack. The Pratham brought into attack the young bowler from the far end.
Again played it back to bowler. Chance of run out. He's trying for the shy at the stumps, but he missed the stumps. And need to appreciate the Pawan's, Pratham's, the commitment in dedication to make the run out in a non-strikers end. But no damage done, no run scored. Second time in this over. Pratham bows to Narsim. Narsim, nothing much to do with the delivery. They're going for the extra run. And they completed. Good running with the wicket. Now the ball is going towards the third man. And well stopped by the wicket keeper. And otherwise it's going to be a extra run in the form of over white call by umpire. White +1, a couple of runs added total with that couple of runs scored. Moves on to 21 without loss of any wicket. Good start and a good start from these left and right batters so far. They got 14 runs in the first over, 13 runs in the first, and 6 in the second. Now they got a couple of runs in this third over. So Pratham, the little master and the young talent is in attack to Aditya Bhatt. Edging it down. This is a lucky run. Maybe it's a deliberately edging it down, but certainly it's going to be a very important run. Just try to make a little room to play the shot, Aditya. Just I want to see that whether it was deliberately done or not. Yes, it is maybe the deliberately done. Is edging it down to third man for 4. Here comes again Prathamesh Bowles. Lovely shot, beautiful shot. That was once again magnificently struck off the front foot. The ball is in the off volley. And when you are getting the ball in the off volley, it's so easy for the batter to get that one into the gap towards extra cover for 4 runs. Just have a look at it. A little bit makes the room to play the shot, makes the placement right, and you got an important boundary. This time ball just passed between the bat and pad, so that no question of that wide ball, because ball is passing between his bat and pad, and it's 29 without loss of any wicket in the over. Number 3 is in progress. Here comes Pratham, right arm of the wicket, cuts it hard and down to long mid-off region. One more addition with the addition of the single scorer moves on to 30 without loss of any wicket. They got a 30 on the board. Big oohs and ahs goes around the ground. The cheers coming from the spectators, the supporters of both the teams, supporting their teams, lifting their level of confidence. This is going to be a tough one. And good piece of fielding there by the fielder at short third man. Great attempt there by Nandu in the negation. The reaction time is a little bit the fraction of second, but he survives. One more over completed after completion of over number 3. It's 31 without loss of any wicket. And we are watching here the spectators absolutely, the cameraman focusing our spectators. We can see that lovely crowd. It's absolutely decent and colorful crowd enjoying the game of cricket. There is no age limits. There are, of course, senior citizens, women's and young ladies, women, everyone is enjoying the game of cricket, because this was the festival of cricket for 3 days for the GSB communities. Thanks to the SVT Volunteers Association for giving this wonderful opportunity for everyone to gather in this under one roof to getting sports and entertainment. Again played it back to bowler. Lovely start from one more young bowler. Brought into attack, Hari Kishan, one more young talented bowler. So this team has got some good players, youngsters, Sringeri. They got some youngsters in the side, rising stars, giving some opportunity for the young talents to come and showcase their talents in this platform. And here comes the second delivery. Narsim off the back foot, cuts it, played it down to cow point region for an easy single with the addition of that single score. But moves on to 32 without loss of any wicket in the over. Number 4 is in progress. You're watching the prestigious SVT Trophy 2026 and which is Agrasali Super Kings and Gopur Gladiators captains and team register karka tumko second call. Here comes the next one. This time lucky run. This is the second time Aditya getting that runs. Lucky run. Just he wanted to go for the square cut. Again he got a healthy edge, and that is good enough for him to defeat the wicket keeper and the third man. Just have a look at the replay again. Off the back foot, nowhere near the pitch of the delivery. Tried to cut to almost close to his body that ball, so that he couldn't manage to get the proper cricketing stroke. But we will going to get the boundary for that. 36 without loss of any wicket. What a shot. Magnificently struck. This is one of the good stroke I want to tell you. Just a poetry in motion.
What a great shot. Of course, the ball is in the off volley. You need to deliver that one in the gap. Great stroke there from Aditya. And Scober jumps into 40 on the board without loss of any wicket. And here comes Arik. Wide outside the leg stump. Still, Aditya wanted to reach for the delivery. And that's why umpire will not going to call that wide. And almost chasing the ball. And he's chasing the ball to hit the ball to that fine leg region. Maybe the ball is passing under his bat, so that umpire is not interested to call that wide. Lucky escape for the bowler. Driven nicely into mid off. They're going for the quick single. Late response coming from Narasimha because he doesn't know where the ball is. So one more single. So one more over completed. After completion of over number 4, it's 41 without loss of any wicket. We can see some exciting faces here. Some players are getting ready for the next matches, and we can see some. They're enjoying the game of cricket. Maybe their husbands are performing here. Maybe the parents coming here to watch their performance of their son. And altogether, it's going to go giving a lot of entertainment for GSP communities in 3 days of cricket. Yesterday, we have witnessed some big number of crowds enjoyed the game. And today is the second day of cricket tournament. Again, played it nicely in the cover point region. And good stop by the fielder Pratham at point region. One more single. With that single scored moves on to 42 without loss of any wicket. Very good start given by the opening batters, but big contribution from Aditya Bhatt. He's batting on 32. Again down the leg side, going to be a wide delivery, rightly so. Srinath, second time in this over. Wide signal by umpire. 43 without loss of any wicket. Second time in this over. Srinath, right arm over the kitty balls. Oh, lovely delivery. Of course, the ball is in the off volley. Now Aditya wanted to back on the strike. And of course, he need to sacrifice this wicket. Narasimha back in the pavilion in the form of run out. But a very good partnership which is comes to an end. 43 run partnership for the first wicket for the team which is comes to an end. And team Rajangan Royals lost their wicket number first. Next match will be played between Agrasali Super Kings versus Gopur Gladiators. I request both the team please get ready for the next match. Now both are having the same name, but surname is different. Aditya Nayak and Aditya Bhatt are in the middle. Srinath will going to continue. Third time in this over, around the wicket. This time, what a placement! What a placement! This has been outstanding cricket there from Aditya. He's absolutely on the art of cricket lovers. The way that he is getting into the position is so beautiful. Just have a look at it in replay. Off the back foot, correcting that adjustment is made to get that placement right, and played it exquisite cover drive for 4. Again, slash it hard. Lovely shot there from Adi. He is unstoppable today. And quickly there goes into 50 now. 50 comes up for the team. The 51 for 1. Team Rajangan Royals. And what innings playing here by Aditya Bhatt. I think it's one of the highest individual score in the day number 2. It's a 40 which is scored by Aditya Bhatt. Yesterday we witnessed 3 centuries by the sub-junior categories. In a 5 hours game of 3 centuries. Can you believe this? And this is all about that young talents did a great job yesterday. And played it very nice in the gap. One more boundary. He's dealing with the boundaries. Hat-trick boundary from Aditya Bhatt. And again, just wanted to go for the sweep shot and quickly seeing that is a full toss delivery. You need to get up again. You need to play the shot. The 44 on the board. Last delivery remaining. And Aditya Bhatt will not going to get the 50 and because only one ball remaining. If the bowler will going to make any mistake of bowling a no ball, then only the chance for Aditya to get his first 50 of this tournament, especially in this category. 55 for 1. He's batting on 44. The last time in this over. Srinath.
Balls off the backward, played it down to extra cover. And they wanted to come back for the second and last ball. Aditya back in the pavilion, but he played a very good innings. 45 out. What innings! One of the fantastic innings. I want to tell you, one of the great innings. The batter Aditya Bhatt is, they are not 56 runs in 5 overs. And they set it up 6 to this match, 57 to this match. We will see how the team of Sringeri Rising Stars will start right with the bat, I can see. And Sringeri Rising Stars, of course, they got some good starts on the side. They got some good players on the side. Definitely they will go to try their level best to win this match, and we'll take a short break in commentary box. After a short break, once again, my friend Gopi will go to take over the microphone in Indian language. Thank you. कुसुम कैटर्स आते गणेश भट्ट ने रघुवीर दोघांनी ಕೈಕೋರ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದ ಪ್ರತಿದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಗ್ರಸಾಲಿ ಸೂಪರ್ किंग्स टॉस विन जाऊन बॅटिंग सिलेक्ट केलेलं सर आता खेळते टीमाक रिक्वेस्ट दोन्ही टीमांना जल्दी दोघी मॅच रेझ्यूम करता आम्ही एक 4 घंटे डिले चलतासाठी आणि मुखासून डिले करू नका त्या निमित्त जल्दी दोघी 1-2 मिनिट भितर मॅच रेझ्यूम करायची धन्यवाद धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त लक्ष्य है लंबा सा 57 द टारगेट इन 5 overs। दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री फॉर श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स विद सेट बाय रंजागन रॉयल्स। और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए विकी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और फर्स्ट बॉल एंड दिस टाइम स्ट्रेट टू फील्डर पॉइंट। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। जहां तक 57 रनों के स्कोर तक लंबे से लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतरीन शुरुआत। और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट पटकी हुई गेंद कट किया इस वक्त, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। इन फैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। गोपाल भट्ट गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। दोनों आरंभिक बल्लेबाज नागराज पई और आदित्य प्रभु इस वक्त मौजूद। और आदित्य प्रभु जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गोपाल भट्ट की गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट पटकी हुई गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त। तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर। निस्संदेह चौके इस वक्त चंद चौके जरूर लगाने होंगे क्योंकि लक्ष्य काफी लंबा है इस वक्त। 57 रनों का लक्ष्य है। 57 टारगेट इन 30 डिलीवरी 30 स्टिपुलेटेड डिलीवरी दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का 3 बेहतर गेंदे गोपाल भट्ट इस वक्त फेंक चुके अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। ये गेंद जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। केपल ओवर टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और गेंद विकेट से हटकर गेंद को खेलना चाहते थे, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। 4 बेहतर गेंदे गोपाल भट्ट यहां पर फेंक चुके हैं और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज विकी सामना करते हुए ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑन पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 3 रनों पर। 5 बेहतरीन गेंदें इस ओवर में गेंदबाज
गोपाल भट्ट यहाँ पर फेंक चुके हैं और अपनी ओर की छठी और अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद, ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल फॉर अ बाउंड्री। सीधा स्ट्रोक था मिड ऑफ पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 7 ऑन द बोर्ड, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्ट्रोक को खेला था, गेंदबाज just played that one just wide of the bowler the last moment and finds the gap as well at last. 7 without loss after completion of first over, and now the equation stands for them. 50 runs required from remaining 24 deliveries, exactly 12.5 runs for the required rate shows for them at this situation. 12 गेंदे 50 रन इस वक्त चाहिए। और जहाँ तक सवाल है पहला ओवर का, तो गोपाल भट्ट अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन यहाँ पर फेंक चुके हैं। दूसरा ओवर शुरू होता हुआ मैच नंबर 4 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एसवीटी ट्रॉफी 2026 डोंगरकेरी गुरुदत्त पैमाम तुम्ही वेदिकेरे कामून निमून घेता सर। GSP Volunteers Premier League Season 4 is now progressing here fantastically in this Kendra High School ground. और इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड बाय द बॉलर आदित्य नायक का। और इस बीच 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 8 रनों पर, 8 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। इनफैक्ट आदित्य नायक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट विक्की के लिए। फुल टॉस अगेन बॉल टू फॉर सादी ऑफ स्टंप, कंसेक्यूटिव वाइड्स फॉर द बॉलर आदित्य नायक। निश्चित रूप से अपनी सही लेंथ और लाइन को प्राप्त करने में काफी दिक्कतों को इस वक्त सामना करते हुए 2 लगातार वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं गेंदबाज आदित्य नायक। और रन इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर, 9 ऑन द बोर्ड। दिस द मैच नंबर 4 ऑफ द डे 2 ऑफ दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। आदित्य नायक अगली गेंद इस बार ड्राइव किया, खूबसूरत, फैंटास्टिक इनटू द गैप एज वेल, फैंटास्टिकली प्लेड बाय द बैट्समैन विकी। और ऐसा कहना पड़ेगा कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गैप छूटते हुए गेंद को खेला था और गेंद सीधे एक्स्ट्रा कवर के सीमा रेखा के फ्लेक्स पर टकराते। और देखिए किस तरह से गेंद को खेला था इस वक्त खूबसूरती के साथ दोनों फील्डरों के बीच चौके के लिए। और इसे चंद और स्ट्रोक्स की ज़रूरत इस वक्त कम बैक करने के लिए यहाँ पर श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के बल्लेबाजों को। और गेंदबाज आदित्य इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए स्ट्रेट अवे द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर, इज जस्ट फीलिंग सम प्रेशर इन दिस सिचुएशन। चौका प्रदान का पहले 2 वाइड फेंके, उसके बाद चौका प्रदान किया और उसके बाद फिर से एक वाइड। और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर, 14 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। 23 बॉल्स लेफ्ट, 43 रन्स रिक्वायर्ड। जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, गेंदबाज तैयार आदित्य। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा, आई थिंक इज गॉट अ बॉर्डर बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट। जब तक शॉर्ट गली पर गेंद को फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 15 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो आदित्य भट्ट अपने ओर की गेंदबाजी इस वक्त, आदित्य नायक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अगर छोड़ते तो शायद वाइड होता था वहां पर, लेकिन इस गेंद पर पहुंचा और नो बॉल इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर। शायद गेंद ऐसा कहना पड़ेगा छाती के ऊंचाई से ऊपर आई थी इस वक्त और बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं। गुरुदत्त पैमामान दैकोन वेदिकेरे का। So 1 + 1, 2 runs now added to the total. 17 on the board, yet to lose any wicket. और भाग्य इस गेंद पर बल्लेबाज का साथ देता हुआ फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। और आदित्य तैयार रहा, फुल टॉस एंड इज गॉन, दिस टाइम ही वोंट सर्वाइव। In fact it's a free hit. That is और एक बार फिर से ऐसा कहना पड़ेगा भाग्य बल्लेबाज का साथ देता हुआ, सिंगल सिर्फ प्राप्त करते हुए। और 2 बार अंतिम 2 गेंदों में लगातार बच चुके इस वक्त बल्लेबाज। और अगली गेंद लेकर तैयार रहा and just wide of the wicket keeper, has got a outside edge on that and it's just beating the wicket keeper at सतीश कामत मम्मान वेदिकेरे का म्हणून विनंती करता सजी। So just wide of the wicket keeper, the ball went over the fence for about. Have a look at this in the replay. Or scoreboard is now moving up to 22 without run. Now 20 balls remaining, 35 runs required. Aditya off stump se bahar, again a wide. Certainly he's just feeling a lot of pressure in this situation. अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए गेंदबाज आदित्य काफी गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं। और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है इस वाइड रन के साथ 23 रनों पर, 23 विदाउट लॉस।
और टीम के अन्य खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाज आदित्य को कुछ समझाते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट अब गेंदबाजी करेंगे आदित्य। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। फुल टॉस, गेंद को खेला just over the bowler set. Gone through for a quick single and collected by the mid on fielder, but won't prevent the single। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 24 रनों पर। 24 without loss in the over number, second in progress। 19 balls remaining, 33 runs to get। The equation stands at this situation for the batting side। अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाज तैयार। आदित्य नायक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त विकी के लिए ऑन साइड पर खेला खूबसूरती के साथ। ब्रिलियंटली स्टॉप्ड बाय द मिड विकेट फील्डर। अपने पैर के जरिए गेंद को रोका था और निश्चित रूप से ये चौका यहां पर बचाते हुए नरसिम शनय जो कि फील्डर थे इस वक्त अपने पैर के जरिए बेहतरीन तरीके से यहां पर इस गेंद को रोकने में सफल और एक बेहतर फील्डर के रूप में जाने जाते हैं नरसिम शनय। और यहां पर जहां तक सवाल है रनों का तो सिर्फ एक रन मिला। 18 runs came from this over, and because of this over I must say the batting side Sringeri Rising Stars back in the game a little bit. Now the equation stands 32. Still they have a long way to go. In fact 32 more runs now they have to score for victory in remaining 18 deliveries। 18 गेंदें 32 रन चाहिए विजय के लिए। सुहास कामत गेंदबाजी शुरू करते हुए starts the fresh proceedings from that side and first ball comes। पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार बल्लेबाज विकी इस वक्त सामना करते हुए सुहास की गेंदों का। कट किया, फैंटास्टिक स्ट्राइक इनटू द गैप एज वेल between two fielders at cover point and extra cover, and he just hit that one pretty hard, square of the wicket। और 29 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। देखिए किस तरीके से स्ट्रोक को खेला था इस वक्त पंजों पर उछलते हुए गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ निकाल दिया एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 28 runs to get from 17 balls। और निश्चित रूप से ये दोनों बल्लेबाज यहाँ पर नागराज पै और आदित्य प्रभु एक बेहतर शुरुआत इस वक्त देते हुए अपनी टीम के लिए। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का तो इस वक्त सुहास कामत गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप से बाहर, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड वाइड, 30 ऑन द बोर्ड। और निश्चित रूप से इस वक्त दबाव गेंदबाज के ऊपर नजर आता हुआ। नाउ 17 balls left, 27 runs required। और ये दोनों बल्लेबाज एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए यहाँ पर अपने टीम के लिए अगली गेंद कट्स एंड स्ट्रेट टू फील्डर, कांट गॉट एनी रन फॉर दैट स्ट्रोक। नॉन स्ट्रोक बल्लेबाज काफी आगे निकल आए थे लेकिन इन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित रन से इस बीच रुक चुका है। 30 रनों पर 30 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। नाउ 16 balls left, 27 runs required। और गेंदबाज सुहास प्रभु गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस एंड दिस टाइम he hammered it away। No ball also called by the square leg umpire। तो 4 + 1 5 runs added to their total। चौका इस वक्त बल्लेबाज और टीम के पक्ष में और नो बॉल रन इस वक्त टीम के खाते में जोड़ता हुआ। एंड विद दैट 5 runs the equation seems to be easier now for the batting side। Now 22 runs to get from 16 deliveries। Also a free hit game for the free hit delivery for the batsman। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, drives and stopped brilliantly but can't prevent the single। फ्री हिट गेंद थी तो एक रन यहाँ पर मिला जरूर और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 ऑन द बोर्ड। नाउ 15 balls 21 runs required। दोनों बल्लेबाज इस वक्त नागराज पै और आदित्य प्रभु पारी के भागदौड़ को संभाले हुए एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देते हुए। और सुहास कामत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फुल टॉस, इस बार गेंद को उछाल दिया मिड विकेट के ऊपर से। इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। He just hit that one full toss down to deep mid wicket and he's backing to pavilion after being playing a fine knock for the side। First wicket gone for Sringeri Rising Stars and now they are 36 for 1। Pawan Bhagat, the new batsman, is now comes out to the middle। 21 to get from 14 deliveries। और इस बीच गेंदबाज सुहास कामत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पवन भगत जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और सुहास अगली गेंद लेकर तैयार। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद तक पहुंचना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन से बल्लेबाज को नहीं मिला।
The scoreboard stays at 36 for the loss of 1 wicket. Now 21 to get from 13 deliveries. कम से कम एक या दो चौके की जरूरत इस वक्त श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के बल्लेबाजों को कम बैक करने के लिए. Full toss, driven down to mid off, gone through for a quick single and get it comfortably at last. 1 run, 37 on the board. 37 for the loss of 1 wicket and 3 overs had been bowled. 3 gone, 37 for 1. 20 runs to get from remaining last 12 deliveries. That means remaining 2 overs. और रिकॉर्ड रन रेट जो है इस वक्त ठीक 10 रन प्रति ओवर. 12 गेंदे 20 रन चाहिए. एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट V4 न्यूज़ 24/7 चैनल द्वारा इस वक्त किया जाता हुआ श्रीमान मानिक इनके सारथ्य में. और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का यहाँ पर वहाँ पर मुआयना करते हुए यूट्यूब पर, जो कि V4 न्यूज़ 24/7 यूट्यूब चैनल इस वक्त लाइव टेलीकास्ट कर रहा है श्रीमान मानिक इनके सारथ्य में. और पहली गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, बट ब्रिलियंटली सेव्ड बाय द पॉइंट फील्डर. और जहाँ तक सवाल है एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. स्ट्रोक दमदार था लेकिन उतनी ही बेहतर फील्डिंग इस वक्त पॉइंट फील्डर द्वारा. 19 रन टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स. विकी बैक ऑन स्ट्राइक और गेंदबाज लेग स्टंप से बाहर और वाइड रन के लिए दौड़ पड़े. इस बीच 1 + 1 2 runs now added to the total. Now 40 on the board. That means 17 to get from 11 balls. और निश्चित रूप से इस वक्त फाइट बैक करते हुए यहाँ पर श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के बल्लेबाज. और कम बैक इस वक्त जहाँ तक राजांगन रॉयल्स का सवाल है, इस वक्त उनके गेंदबाजों को चाहिए चंद डॉट गेंदे और विकेटें यहाँ पर अपनी पकड़ इस मैच में मजबूत तक करने के लिए. और इस बीच गेंदबाज अगली गेंद स्लॉपी. दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी बाय विकेट कीपर. बेहतरीन गेंद थी लेकिन इस बेहतरीन गेंद को कलेक्ट करने में असफल. और बाई के रूप में 4 रन के खाते में जुड़ चुका है. 4 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ. 4 गिफ्टेड रन्स एडेड टू द टोटल. नाउ 44 ऑन द बोर्ड. नाउ 13 टू गेट फ्रॉम 10 बॉल्स नाउ. और गेंदबाज आदित्य भट्ट अगली गेंद लेकर तैयार. फुल टॉस, क्रैक्स इट अवे एंड दिस टाइम फाइंड्स द गैप एज वेल. फाइंड्स द गैप एज वेल एट थर्ड मैन बाय पवन भगत. और इस चौके के साथ आई मस्ट से नाउ श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स आर नाउ स्ट्रांगली बैक इन द गेम. हैव अ लुक एट दिस replay. Delicately played, just opening the pace of the bat and steering it away down to a third man for a boundary. 9 to get from 9 balls. Good one. Lower विकेट कीपर इस नौ सेकंड पर खतरा. और इसी यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज तीसरे अंपायर के लिए यहाँ पर अपील जो कि सौंपी गई है. काफी नजदीकी मामला. इस वक्त विकी काफी आगे निकल आए थे लेकिन यहाँ पर वापिस वो दौड़े जरूर, लेकिन देखना है कि जब विकेटें उखाड़े गए थे गेंदबाज ने गेंद को रिसीव करने के बाद तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं. लेकिन एक बेहतरीन चेजिंग करता हुआ इस वक्त श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स राजांगन रॉयल्स के खिलाफ. और मैच का जहां तक सवाल है अभी भी कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन. और जहां तक सवाल है इस वक्त तृतीय अंपायर के निर्णय का, तो तीसरे अंपायर के निर्णय का इस वक्त इंतजार है. Not out is the call and the batsman survived. Scoreboard stays at 48. That means now 8 balls left and 9 runs required. तो बेहतर गेंद थी. पिछले गेंद पर आदित्य भट्ट की टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए स्ट्रोक खेल में चूक गए थे. और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए विकेट कीपर नरसिम्हा और गेंदबाज इस वक्त आदित्य भट्ट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई. इट्स एब्सोल्युटली डिलिबरेट. नो स्ट्रोक्स ऑफर्ड. कोई भी स्ट्रोक्स खेलने का प्रयत्न नहीं किया था. गेंद को सीधे पैरों पर आने दिया और बिल्कुल सही तरीके से अंपायर ने इस रन को रद्द कर दिया डिलिबरेट के रूप में. 48 2 डॉट बॉल्स इन ए रो बॉल्ड बाय आदित्य भट्ट. अगली गेंद इस बार गेंद को खेला पवन ने. 1 रन मिलेगा. जस्ट अ सिंगल ही गॉट. नाउ 49 the score. That means 6 balls left, 8 runs required. 6 गेंदें बाकी, 8 रन चाहिए. और अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा मैच बराबरी पर रुक चुका है. What a fantastic match is now progressing here. टी गणपती पै आणि प्रशांत पै मामू दयकोरनु दोघांनी तुम्ही वेदिकेर येऊ का. तो पिछले मैच में
पिछले मैच में 6 गेंदों पर 8 रन बनाने थे महामाया क्रिकेटर्स को, तब उग्राना सेवक ने 8 रन बनाने से रोका था महामाया क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों को, सिर्फ 6 रन प्रदान किया था और 1 रन अंतिम गेंद पर 1 रन की रोमांचक विजय दर्ज की थी। तो देखना है कि यहाँ पर गेंदबाज राजांगन रॉयल्स के क्या श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स को 8 रन बनाने से रोक पाते हैं या नहीं। पहली गेंद, फर्स्ट बॉल, इस बार ड्राइव कर दिया स्ट्रेट टू द ग्राउंड एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल। द बॉल वेंट जस्ट वाइड ऑफ द बॉलर। नरसिम्हा की गेंद थी और जिस तरीके से पवन ने इस गेंद को डिस्पैच किया है काबिल तारीफ। It just hit that one just wide of the bowler, played that one hard and hit that into the straight hit area in front of the main stage. Now 4 runs to get from 5 balls. Ugly game. And this time he finds the gap as well. That's it. Fantastic run chase made by the batsmen of Sringeri Rising Stars. They reached the huge target of 57 runs in just 4.2 deliveries. In just 4.2 hours against Rajangar Royals and with that victory they bagged the complete points। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पवन भगत का स्ट्रोक था ऑन साइड पर डीप मिड विकेट पर, ऑन साइड पर मिड विकेट पर गेंद को खेल गए थे 4 रनों के साथ। निश्चित रूप से एक बेहतरीन रन चेस करता हुआ 57 द टारगेट सक्सेसफुली चेस्ड बाय द बैट्समैन ऑफ श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स अगेंस्ट Rajangan Royals in 4.2 with a fantastic victory to bag the complete points। So the match number 5 is now going to begin between Agresali Super Kings versus Gopur Gladiators। So that will start in just short while। Thank you। Thank you very much, DJ, and welcome back once again. We are into the match number the 5 between Agrasali Super Kings versus Gopur Gladiators. Winning the toss, captain of Gopur Gladiators selected to ball first, and opening batters are made their way to the middle of the pitch for the team
Agrasali Super Kings. Agrasali Super Kings, the opening batters came into bat, and batter GK Bhatt and Vignesh, the opening batters, came into bat. They won their first match, and they're playing their second match. Team Agrasali Super Kings. Here comes the first ball. Saurav starts with the warm-up delivery of the evening. Bowled outside the line of leg stump, and white called by umpire, so that team Agrasali Super Kings, they are off the mark. One without loss of any wicket. Right arm over wicket bounce. This time pulls it away straight to the hands of mid wicket, and no chance of any run. And one without loss of any wicket. Saurav again back to his bowling mark with a short run up. Right arm over the wicket to GK Bhatt. This time played it gently down to cow point region. They picked up a quick single. With that single, scoreboard moves on to 2 without loss of any wicket. GK Bhatt is off the mark with a single, and total score now 2 without loss of any wicket. Vignesh Bhatt will going to take the strike. Vignesh, in fact, and played it straight into the mid-off, not for run. Good piece of fielding by the fielder at mid-off. No run scored. Vignesh Kamath will going to take the strike. Saurav again. Good start so from Saurav, excluding that one wide. He maintained the line and line. This time pulls it away, and good stop. Excellent stop. You need to deal with that extra bounce in the relegation. Need to get some extra jump to stop the ball. And meantime, Vignesh completes a single. With that single, score moves on to 3 without loss of any wicket in the over number. First stage in progress. So Saurav again back to his bowling mark. GK Bhatt will go in to take the strike. Pass umpire. Cuts it, and misfielded by the fielder. After that, good stop. Then one sloppy fielding there by the fielder. Couldn't manage to read that movement. Of course, the deviation after when batsman cuts the ball, the definitely ball will go into turn a little bit, and the fielder not really able to judge that one well. The welcome boundary for the team, and Agrasali Super Kings are 7 without loss of any wickets. Last time in this over, this time pulls it. A good stop by the fielder, and there chance of run out, but of course Anantesh fails to gather the throw from the fielder. Completed single, first over completed. After completion of first over, Agrasali Super Kings are 8 without loss of any wicket against Gopur Gladiators. Man of the match of the previous matches goes to Nagaraj Pai. So that I request Nagaraj Pai, please go to the main stage and collect your man of the match award from our chief guest. What a match. That was absolutely fantastic chasing by Sringeri Rising Stars. And even Pawan is also contributed from the bat, a young man who becomes the man of the series in the last edition, season 3. And he and Nagaraj played the match-winning innings for the team. ಸೊ ನಾಗರಾಜ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರೈ, ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಟಂಪ್ ಡಿಡ್ ರೆಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೌಲರ್. Right arm over the wicket balls. This time I played it into the deep and out of the park, and the ball went out of the park, and even batsman is also going out of the park because of that full shot. मंजेश्वर प्रवीण कामत आणि वेदिके राहिल्यांची अंक स्वागत करता म्हणून निमून घेता सर. जशी ती नागराज पै विकी फुडल्या मॅचाक मॅन ऑफ द मॅच म्हणलेला सर. तुम्ही हांगा वेदिके रेव का ट्रॉफी कलेक्ट करू का? Previous match, man of the match, Nagaraj Pai, I kindly request you to please go to the main stage to collect your man of the match award from our chief guest. And a new batter, of course, Vivek, one who played a match-winning knock for his team in the previous match, came into bat. Straight away, just he wanted to go for the sweep shot, missed it completely. Anantesh, the experienced campaigner, brought into attack. Anish Deshpai from the commentary box, and second time in this over.
And this ball full toss, played it down to mid-off region. They're quickly going for the single. Little bit late reaction from the fielder at mid-off to return the throw. And both the batter completed the single. With that single, score moves on to 9 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. That brings Vignesh into strike. Anantesh ball, lovely delivery and equally well played there by Vignesh. Just reading the slow delivery of Anantesh very well and played it gently down to point region for a single. 10 for 1 in the over number second in progress. Anantesh again back to his bowling mark. Second time in this over. Right arm over the wicket, played it upishly. The second batsman playing that one out of the park. And wicket number 2 gone. Anantesh picked up a wicket after completion of over number 2. Total score is number 3 gone. It's 22 for 3. New batter in is Ajit Bhatt. Ajit Bhatt, experienced player for the side of Agrasali Super Kings. Ramesh to continue. Successful bowler, got a wicket of a well-settled batsman Vignesh. Aditya Bhatt played it down to square leg region. They're going for the single chance of run. Oh, direct it might be all over. Direct it might be all over for Aditya Bhatt. Ball just going over the stumps. They completed a risky single. 23 for 3 in the over number 4 is in progress. Ramesh. So far, good comeback by Ramesh after that wide in the first ball. Now Akshay came back to strike after a long time. This time a beautiful shot, diving effort that from the fielder, but not good enough to stop the boundary. The welcome boundary, the runs which is dried in this particular over, and Akshay just a little bit making room to play the shot. Just going back, just have a look at it in replay. Short pitch one, going back, plays it nicely, and the effort from the fielder is not good enough. So with that boundary, score moves on to 27 for 3 in the over number 4 is in progress. Here comes Ramesh again. Right arm over the gate, drives that one down to be down. Good piece of fielding there by the fielder. One more dot ball. Excellent comeback from Ramesh. As he bowled a little bit Yorker and delivery right on the block hold. 27 for 3. Final time in this over. And bowler Ramesh will go into deliver. The last delivery of the penultimate over. Again, going for the cut shot. Anantesh not really getting his two hands to make the run out, to direct it, but no problem. And umpire called it end by call by umpire. It's the end of the over number 4. It's 28 for 3. सुधींद्र वॉरियर्स टीम फाइनल कॉल तुमगे कैप्टन ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ करका. I request the Sudhindra Warriors kindly request you to please register our players' name and please cooperate with the organizers. So next match will be played between Sudhindra Warriors versus Dambekallu Challengers. (28 for 3). Over number 5 will go into start. Mohan brought into attack. Mohan Pai away from us. To Akshay. Akshay slashed it beautifully. And the boundary signal by umpire fantastically struck. Short pitch delivery all the time in the world for Akshay. Just stood tall on the crease and slashed that one into the cover point for 4. And the slow short pitch delivery. And the batsman have to control the stroke. And got a boundary for that. 32 for 3. Again played it. Oh, this is going to be out. And they played it in the pull and outside the boundary line. And it's a 32 for 4. And of course, Akshay just tried to repeat the stroke once again. Short pitch delivery outside the line of off stump. And this time a little bit extra power, which is takes the ball into the out of the park. And it's 32 for 4 in the over number 5 is in progress. So new batter walking towards the middle.
Prathamesh Naik coming to the middle and replacing the place of Akshay as he back in the pavilion of the bowling of Mohan Pai. This is the last over in progress and third time in this over. Right arm over the wicket balls. This time went for the full shot, straight to the answer fielder, but it's not a good direction to throw. The opportunity for the run out in the non-striker's end, and he completed. Prathamesh Naik completed single with that single scored numbers on to 33 for 4 in the over number. Last is in progress. Here comes next delivery, right arm over the wicket ball. This time Ajit Bhatt played it out of the park, and he is also walking out of the park. And just looking for the improvising cricketing stroke, but couldn't manage to keep it down. Played it in the air, and ball went out of the park. And just have a look at the replay, and helping it down and gone outside the boundary line in full. So one more wicket back in the pavilion. It's 33 for 5 in the over number. Last is in progress. Last 2 deliveries left, and a new batter coming to the middle. Anish Bhatt, the man of the match of the previous match. Anish Bhatt came into bat here to contribute. Last 2 deliveries left in their innings, and wait and see how well he's going to contribute. Went for the cut shot, missed it completely. One more dot ball. So last delivery of their innings is coming up. Last delivery of Agrasali Super Kings, which is in progress. Again, played it down to mid-off range, and they're going for the quick single. And the one again, 2-3 fielders, absolutely. They are trying to stop the single. By doing that, they completed 2 valuable runs altogether. I think no damage done. In fact, 35, I think, which is the score. They completed a couple of runs. And 36, which is the target. Which is set for the team of Gopur Gladiators. That means the Gopur Gladiators bowlers did a great job to restrict their opposition for 35, and they set a target of 36 to win this match. And wait and see how quickly they will go and get this total. Agrasali Super Kings will go into chase this total. We take a short break here. Thank you. Bekallo challengers toss win fielding చూసుకెళ్ళాం. अग्रसाली सुपर किंग्स और उनकी पारी की शुरू यहाँ पर होते हुए पहली गेंद को मोड़ दिया. स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. पहले बल्लेबाजी करते हुए अग्रसाली सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने 35 रन बनाए. 36 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा और इस वक्त गोपुर ग्लैडिएटर्स जो कि पहले बल्लेबाजी यहाँ पर करता हुआ, इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर फैंटास्टिक फील्डिंग. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग फील्डिंग मेड बाय द मिड विकेट फील्डर. जहां तक सवाल है, चौका वहां पर बचाने में सफल और स्कोर इस वक्त रुक चुका है यहाँ पर 0 पर. 2 बेहतर गेंदबाज फेंक चुके सी के भट्ट और अगली गेंद लेकर तैयार. फैंटास्टिक डिलीवर. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग वन फ्रॉम द बॉलर. Just wanted to follow that one at the last moment, not succeeded. The ball gets some extra bounce at the last moment and went into the hands of wicketkeeper. This is an outstanding delivery from GK Bhatt.
गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। इस बार गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, बट ही गॉट अ सिंगल। एक रन इस वक्त मिलेगा और एक रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज सीके भट्ट अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करते हुए दिलीप पाई और दाहिने हाथ ओवर द विकेट। फुल टॉस टीयर करना चाहा गेंद को, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज सीके भट्ट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद शेयर किया इस वक्त अंतिम एक्शन में, एक रन का इजाफा, 1 run added to the total. Fantastic over came from CK Bhatt, just 2 runs conceded by him, and after first over chasing the victory target of 36 in 5 overs set by Agrasari Super Kings. Gopur Gladiators made a slower start. In fact, it's 2 for none after completion of first over. And let's straight away coming back to the equation. 36 minus 2, that means 34 runs more are required in remaining 4 overs. And the asking run rate is now gone up exactly 8.5 runs per over. 24 गेंदे 34 रन और चाहिए विजय के लिए। ठीक 8.50 रन प्रति ओवर के औसत से और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अक्षय कामत और सामना करने के लिए तैयार दिलीप भाई। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अक्षय, लेग स्टंप से बाहर, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका, कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। अगर 36 रनों के लक्ष्य तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर देनी होगी बल्लेबाजों को। एंड पल्स एंड इज गॉन, it's gone this time. Just pulled that one, but full tossly the ball went over the fence. First wicket gone, it's 3 for 1. This is the match number 5 of the junior category. Is now progressing here. 10 prestigious teams are participating in this junior category, and match number 5 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2026 GSB Volunteers Premier League Season 4 is now progressing here fantastically in this Canara High School ground. And this tournament is proudly presented by SVT Volunteers Association, Cast Street, Mangalore. और जहाँ तक सवाल है मेन स्पॉन्सर आभरण ज्वेलर्स, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो अक्षय इस वक्त गेंदबाजी करेगा। नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, रमेश कामत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अक्षय की गेंदों का। अक्षय गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार इन द एयर बट फेल जस्ट शॉट ऑफ अ फील्डर एट पॉइंट एरिया, जस्ट टेक द शॉट एट लास्ट मोमेंट, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पर टकराने के बाद कुछ हद तक उछलते हुए और आखिरकार 1 रन बल्लेबाज यहां पर प्राप्त करते हुए इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका, कुल मिलाकर 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और अक्षय फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Pulls and this time he finds the gap, fantastically pulled it away. After first bounce the ball went over the fence and a fantastic strike came from the bat of Anatesh Pai J, और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है, कुल मिलाकर 8 रनों पर 8 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress। और अक्षय एक बार फिर से गेंदबाजी लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए again he finds the gap, fantastically 2 struck came from the bat of Anatesh Pai, और इन 2 चौकों की बदौलत अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। और शॉर्ट गेंद थी और बल्लेबाज के पास काफी समय था कि गेंद को इस वक्त खेल सके। देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्राइक। अब टीम के अन्य खिलाड़ी कुछ समझाते हुए इस वक्त गेंदबाज अक्षय को किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए, और गेंदबाज इस वक्त अक्षय तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज अनंतेश भाई इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बेहतर गेंद थी, that's the line, he has to bowl at this situation, just missing outside the off stump at the last moment, और गेंद सीधे पहुंचे इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। The scoreboard stays at 12 for 1 in the over number 2 in progress। अगली गेंद अक्षय, this time turns it around the corner, gone through with a quick single and get it comfortably at last. 1 run added to the total, 13 on the board, and over number 2 has been came straight, and 2 gone, 13 on the board, 23 to get from remaining 18 delivered. The equation stands for Gopur Gladiators,
And the required run rate, as far as the required run rate is concerned, exactly 7.66 runs per over, the required run rate for them at this situation. And still in overall calculation, it's going to be 9 wickets they got kept intact. 9 wickets they got in their hand. और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ third over starts in the innings. The bowler starts a fresh proceedings is विघ्नेश भाई इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और तीसरा ओवर उनके पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए 18 गेंदों में 23 रनों की दरकार. बराबर का टक्कर इस वक्त जारी ये दोनों टीमों के बीच इस मैच में. और गेंदबाज इस वक्त तैयार था इन्हें तो बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए जस्ट मिसिंग आउटसाइड द लेग स्टंप वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर. और गेंद लगभग लेग स्टंप से कुछ दूरी पर निकले थे. वाइड का इशारा इस वक्त हो चुका है और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. और विघ्नेश भाई अगली गेंद लेकर तैयार. बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी. Just wanted to work it away on the outside, but the ball got his outer of the bat. In fact, it's a leg. The ball struck his leg, in fact, and the batsman got a single for that stroke in the face of leg by. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 17 गेंदें बाकी, 21 रन चाहिए और विघ्नेश भाई इस वक्त तैयार. रमेश कामत जो कि सामना करते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट. विघ्नेश ये गेंद फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल. यूजिंग हिज फीट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले और गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन के लिए. और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 16 रनों पर. 16 for 1 नाउ. 20 runs required from 16 deliveries. और विघ्नेश अगली गेंद लेकर तैयार. लेग स्टंप से बाहर, वाइड अगेन, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रन. रन्स इस वक्त चाहिए गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों को. वो कोशिश होंगे मेरे काफी दोस्त अंग्रेजी के साथ जब यहाँ पर 8 नंबर 6 इस श्रृंखला का शुरू होगा. सुबिंद्रा वॉरियर्स वर्सेस दंबेकल्लू चॅलेंजर. दोन्ही टीमांना दलतीतलोगी मॅच स्टार्ट करका. दंबेकल्लू चॅलेंजर्स फील्डिंग चूज केलेलं आसा. तुमगेल टीमांना दलतीतलोगी फील्डिंग येवका. बॅटिंग टीमाचे बॅट्समॅन तो काय ऑलरेडी आयिल्ले आसा जी. ऑफिशियल्स टाइम काउंट करा जी. कहीं डिले जावंक नाका, इमिडिएट मॅच स्टार्ट जावका. फुल्ली मॅच खेळलेला आहे. प्लेयर्सांना डगआउट क्लिअर करून दिवका. अनंतेश भाई आणि वेदिकेर येवका तुमच्या मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी कलेक्ट करता. Will go on to start the proceedings. Gopala Krishna Pai
and in front of him is Anirudh Bhatt and Vasudev Kamat. Anirudh Bhatt is on strike, and here comes the first delivery, Gopalakrishna. Right arm over the wicket to Anirudh. Anirudh this time tried to get the ball down to fine leg region, but just because of that extra bounce, he couldn't manage to get that one into his bat, and no run scored. And second time in this over, Gopalakrishna bowling from the Kala Mandira end. Right arm over the wicket balls. This time again pulls that one nicely down to fine leg region boundary for 4 runs. This time Anirudh not tried to flick the ball, but he just tried to pull the ball and pulls it nicely down to fine leg for 4 runs. With that boundary, Skobat Namuzan, the correction, the 4 on the board. In fact, the first run for the team. The first run for the team of Sudhindra Warriors. Again, played it nicely into a gap. Beautifully played. Finds a gap between cover and extra cover. Back-to-back 2 boundaries take the total score into 8 now without loss of any wicket. Anirudh just started to open up here with 2 very good boundaries. One down the leg side, one other down the extra cover. 8 without loss of any wicket, Gopalakrishna. The right arm over the wicket to Anirudh. This time far outside the line of off-time, but he is standing well outside the line of off-time. And the umpire called it a fair delivery. Ball pitched in the line outside the line of it, but Anirudh is, of course, a little master. Is standing well outside the line of leg stump so that he couldn't manage to reach that delivery. And right call from umpire. 8 without loss of any wicket. Gopalakrishnan. Once again going for the cut shot. This time too early into the cut shot. If you see, Anirudh wanted to go for the cut shot, but played it too early. A slower one there from Gopalakrishna, and missed it completely. Wicketkeeper behind the stump. Datta did the rest, and no run scored. 8 without loss of any wicket in the over number. First is in progress. And steady start from the opening batters. Got 2 boundaries so far in this over. Oh, again, identical mirror display of the previous delivery. This time, Anirudh wanted to steer the ball, but missed it completely. Good comeback by Gopalakrishna. After completion of first over, it's 8 without loss of any wicket. Team Sudhindra Warriors against Dambekollu Challengers. This is the match number 6 of day number 2. After this, we need to complete another 4 matches. And tomorrow will be the final day of this cricket tournament. It's a huge day because tomorrow we're going to start the day in the morning, exactly at 9 o'clock. And we need to finish the as earliest before 8 or 9 in the evening. And here comes second over. Akshay brought into attack from the far end. Shot outside the line of off-time, played it gently down to cover point region. No power whatsoever in that particular stroke from the batter Vasudev Anirudh. Vasudev, one who played a very good innings in the previous match, and he got his first run. 9 without loss of any wicket. Oh, this time I think it's a caught behind the wicket. And I think it's a caught behind the wicket or stump out. Just we need to clarify. It's a stump out. It's after one bounce collected by the wicket keeper. Maybe the ball is just bumped in and then came into the hands of wicket keeper Datta. And that means it's a run out. And because of the bat, connected the bat, so it's a run out. It's not a stump out, it's a run out. So 9 for 1 in the over number 3rd is in progress. Second in progress, correction. The hero of the previous match, Aditya. But played it gently and misfielded by the fielder and cost the boundary for that. So welcome boundary as well as the first boundary for Aditya. And facing his first delivery, he got a lucky boundary. And much required boundary in this over. The runs which is dried in this particular over. And Aditya, but some hooves and ahs goes around because some promotion from for the fielder from the cover point to mid wicket for that misfield. 13 on the board, and again played it quite edging it down deliberately by Aditya to get the single down to third man. 14 for 1. Vasudev Kamat, the previous match he played very well, but unfortunately he ended in the losing side, even though got a very good runs, but couldn't manage to defend that total. Oh, lovely delivery, beautifully bowled. Appeal for caught behind, but
And batsman is walking. My goodness. Absolutely good sportsman spirit shown there by Vasudev Kamath. This is absolutely feather touch. It's very difficult for the umpire to judge sometime because of the feather touch. You can't hear because it's a soft tennis ball cricket. It's difficult for the wicket keeper, of course, for the umpire. But wicket keeper and batsman will go into judge. Of course, this is a very good spirit shown there by Vasudev Kamath. And that will going to lift the spirit of the game always when you are showing a true spirit of the game. Just have a look at it in the replay. No chance we can see that. Very difficult for the umpire to judge. The ball is just has got a further touch. The wicketkeeper is very confident because he can hear that soft sound, and even the batter is also. It's 14 for 2. In the over number second, it is in progress. Oh, lovely delivery. Just going for the cut shot, missed it completely. Over number 2, which is comes in, and good over from Akshay Pai. In this over, he picked up a wicket as well. 2 wickets in this over. Great bowling, which is comes in, and it's 14 for 2 after completion of over number 2. नेक्स्ट मॅच नागनकट्टे पॅन्थर वर्सेस उग्राणा सेवक्स. दोन्ही टीमा कॅप्टन आणि टीम रजिस्टर करका. दोन्ही टीमा फर्स्ट कॉल आहे. Naganakatte Panthers versus Ugrana Sevaks will go into play their next match. Ramnath brought into attack, one more very useful all-rounder for the side of Dambekal Challengers. And he will go into bowl to Adi. Slashed and good fielding. Oh, mix up and is face the penalty. Now he is lifting the stumps. Umpire asking for the third umpire to give the judgment. And of course, we need to see that the third umpire has been asked for the third umpire. Let's wait and see what could be the addition from the third umpire. Will going to be out or not? And so, of course, the first attempt, the one stumps is uprooted from the leg, but one stumps has got in the position, the bills which is in the stumps. So the second attempt, the bowler uprooted that stumps
Of course, the third attempt which is not comes into play because already, which is in a second attempt itself, the bowler complete the job, wicketkeeper completes the job. 14 for 3, and here comes the next delivery. Right arm over the wicket, bowls, cuts it into mid-off region for a single. With the addition of that single scored, now moves on to 15 for 3 in the over. Number third is in progress. Varun back on strike now. And Varun and one more batter was there, but the batters out there in the middle. Now Varun will go into take the strike. Oh, wanted to go for the cut shot. This time the ball which is very close to the body. Not that much of fit for the cut shot, and lucky for him that ball is just missed his bat, and wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Ramakant bowls again, played it into mid-on, not for run, lack of placement. The good bowling performance so far from the bowler Ramanath in this particular over, and it's 15 for 3 in the over. Number third is in progress. Searching for the right track, Sudhindra Warriors so far. भारत स्टेनलेस स्टीलाचे के वासुदेव कामत आणि वरुण शणे आणि जय कोरनू वेदिकेर येवका म्हूण निमगून घेता आसची वरुण शणे आणि वासुदेव कामत. Again played it down to third man region for boundary there, and 19 for the loss of 3 wicket. Varun and Vasudev are the batters are in the middle. Even chief guest also the same name, Varun and Vasudev. It's absolutely very good coincidence and pitch and in the stage. Same name players and same name chief guests. 19 for 3 in the over. Number third is in progress. Ramanath again bowling with a short run up to Varun. The SVT Trophy Season 4 is in progress. Oh, tries that one, but lack of placement and fielder misfielded. Of course, he fielded well. Tried to return the ball in underarm throw, but he missed the ball. And again, the ball slipped out of his hand. Good over. Naravi Vignesh Pai. Nummidala Riday Kornu Vedikere Oka. Excellent over there from Ramanath. In this particular over, he really managed to tighten up the screws with the good deliveries. 20 for 3 after completion of 3. Last 2 overs remaining in the innings. And wait and see how Varun and Vasudev will go in to get some good total here. Bowler brought into attack to bowl 4th over. Vittal Bhatt starts with the short pitch delivery. All the time in the world for Varun to pick that one. Because we can see that even the batsman is asking for the umpire to give the no ball, but he's seeing that ball is not really coming to the batter. He's have to wait for the ball. Just have a look at the short pitch delivery, and just like a forearm tennis stroke, and just climbing onto that and played it nicely for 4 runs. Nicely done. No need to run for that. Ball went like a tracer bullet. And this is a juicy full toss. He can't do the mistake of bowling that kind of delivery to the caliber of Vasudev Kamath. They absolutely hit that one right from the middle of the bat and scoring some important runs for his team. 28 for 3 in the over. Number 4 is in progress. Vittal Bhatt again. Oh, that ball is maybe that chance of run out as well. Again, one more single. With that single score, move on to 29 for the loss of 3 wicket in the over. Number 4 is in progress. Oh, lovely delivery. Now they're going for the run. Now going for the run in the form of by misfielder by the wicketkeeper behind the stump. 30 for 3. 4th over is in progress. Vittal Bhatt. Bows rise that one. Didn't quite time it. Oh, misfielded. Sloppy fielding there by the fielder. And a welcome boundary again for the team. They're enjoying each and every run. Sudhindra Warriors getting some lucky runs here for the misfield. The fielder is absolutely trying to get the ball by bending his knees, but ball is just defeating him. 34 for 3. One more full toss, one more boundary. The fielder, I think, district युवा मोर्चा बीजेपी प्रेसिडेंट आणि आई लसाजी दय कोरनु तुम्ही वेदिकेर होका.
38 for 3 after completion of 4 over. Last over remaining in the innings of Sudhindra Warriors. नंदन मल्ल्या तुम्ही दयकोरनु वेदिके रेवका तशीजी अविनाश सुवर्ण नंगे लोटसाजी नन्नी दलरी वेदिके रेवका Pawan Pai brought into attack to ball the last over, and the batter will going to take the strike. Varun played it nicely into mid-wicket region for a single. Good partnership is progressing between these two. नागनकट्टे पॅन्थर्स आणि उग्राणा सेवक टीमाका फाइनल कॉल टीम रजिस्टर कोरका. It's 39 for 3 in the over number 5 in progress, and here comes the next one. Again played it very nicely in the late. The late cut comes into play. Lovely shot there from what innings playing here by Vasudeva Kamath. Again he's taking the shit ankle roll for his team, and when the wickets are tumbling in front of him, he's standing tall in the other end, and played a responsible innings so far for his team. 43 for 3. He's batting on 26 now, and now facing Pawan. Is right arm over the wicket, far outside the line of off stump. Pawan maybe looking for some short pitch delivery, but he missed the line completely. Gone far outside the line of off stump. It's a spectra wide. 44 for 3 in the over number 5 in progress. Here comes again Varun, right arm over the wicket. Balls one more wide, one more extra. The bowler is absolutely in trouble. The fails to get that line and length what he is looking for. 45 for 3 in the over number 5 in progress. Pawan Pai again. Ball slash it hard and down to cover point for one more boundary. Once again, what innings is playing here for the team. The very important runs coming in this last over as well. 49 for 3. And in the over number 5 in progress. Varun Kamath is batting on 30. Out of 49, he himself scored 30. And that means more than 60% of the runs which came from his bat. One more extra fielder has been added to onside region towards the square leg. There's a mid-wicket, the mid-on, which is wideish. The fielder at long off is also wideish. Almost you can say that extra cover. There's cover point, gully and third man. Just getting away from the line of the ball, wide outside the line of leg stump. And 50 comes up. 50 comes up here for Sudhindra. This is the second 50 for them. The first match also they scored 50 plus runs, but fails to defend. And now they once again crossed the 50 plus. Driven like a placement, straight to the hands of fielder, no run scored. The first better delivery in this over there from Pawan Pai. And last two deliveries left in their innings. Again, the fifth time in this over. Again, played it and good piece of fielding. Excellent fielder. Over. Oh! The fielder. Oh, no. Very lucky for him that ball is not really traveled quickly. Otherwise, it's going to be a disaster. And very lucky escape. And last delivery will go into comments of their innings. 50 for 3. Vasudeva, but can he get one big shot here? Varun, correction. Played it nicely into the long bid-on for boundary. So with that boundary, they finished their innings in a style. 54 for 3 now. And Varun Kamath, correction. Varun Kamath once again played the excellent innings for his team. He remains unbeaten after scoring 34. And he played a sheet ankle roll, Varun Kamath. And after completion of over number 5, it's 55 needed for the victory. And wait and see how quickly they will going to get this total. And Dumbekal challenges will going to take play the next innings. I request Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you.
नेक्स्ट मॅच उग्राण सेवक टॉस विन झालेला त्यांनी फिल्डिंग चूज केला. The scoreboard says 16 for the loss of 1 wicket, 21 balls left, 39 runs required. New batsman Pawan Pai is now comes out to the middle. एक बार फिर से लगातार गेंद थी इस वक्त, धीमी लगातार गेंद और गेंद को इस वक्त कट करने का प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. यह गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, and this is going to be a absolutely fantastic over progressing here so far from the bowler पंचम. और सिर्फ एक चौका इस ओवर में अब तक वो प्रदान कर चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था. इन हाथों पर द विकेट लेकटर pulls and he's gone this time, not quite hold of that stroke and he just paid the penalty for that. So 2 overs completed, 16 for 2 for Dampekalo Challengers chasing the victory target of 55 in 5 overs set by Sudhindra Warriors. They are really struggling out in the middle. 16 for 2 after 2 overs. That means now they have to score 39 in remaining 18 deliveries. And the required run rate is now straight away gone up to exactly 13 runs per over. 3 ओवर में 39 रन इस वक्त बनाने हैं. और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, गोपाल कृष्णा नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद नए बल्लेबाज के रूप में गेंदबाजी शुरू करते हुए लेग स्टंप से बाहर इस वक्त गेंद थी, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट एंड wide declared by umpire, and with that wide run the scoreboard moving up to 17 on the board for losing 2 wickets at the start of the third over in fact. और गेंदबाज अनिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था. इन हाथ अनिरुद्ध माफ कीजिए गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और श्री दत्त जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी दम्बेकल्लो चैलेंजर्स के बल्लेबाजों को. और अनिरुद्ध लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 18 रनों पर. 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. Still 3 overs left in overall calculation in their innings. 37 more runs now they have to score for victory. और निश्चित रूप से जहां तक चौकों की ज़रूरत है इस वक्त, चौकों का जहां तक सवाल है इस वक्त चंद चौकों की सख्त ज़रूरत दम्बेकल्लो चैलेंजर्स के बल्लेबाजों को इस मैच में कमबैक करने के लिए गेंद को खेल दिया. मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा हो चुका है. Just a single run he got, and with that single run the scoreboard moving up to 19 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. 2.1 overs bowled in their innings. और गेंदबाज अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. इस बार ऑन साइड पर मोड़ा finds the gap as well. This time he finds the gap as well. और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए बल्लेबाज fantastically struck this time. He just turns it around the corner. And at last he's got the boundary for that. 23 on the board for losing 2 wicket in the over number 3 in progress. और अनिरुद्ध भट्ट इस वक्त अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार. अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके का खेल. बैक टू द बॉलर के दिशा में स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद को ढकेल दिया था इस वक्त गेंदबाज के दिशा में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 23 रनों पर. 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट
in the over number 3 in progress. Anirudh off stump से काफी बाहर, white का इशारा. 1 run added to the total in the face of extras. 24 on the board. Losing 2 wicket in the over number 3 in progress. 15 balls already bowled in this over. 15 have to come, and in remaining 15 balls they have to score 31 more runs for victory. Anirudh on side पर मोड़ा, मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े. एक रन मिला जरूर. जोखिम भरा रन यशस्वी पूर्ण करते हुए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रन पर. 25 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. What a fantastic match is now progressing here. और इस बीच अनिरुद्ध दाहिने हाथ राउंड द विकेट. फुल टॉस गेंद थी और वाइड गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर. बल्लेबाज ने गेंद तक पहुंचना था लेकिन गेंद उनके पहुंच से काफी बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड किस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 26 रनों पर. It's 26 for the loss of 2 wickets. This is the third over of their innings is now progressing here. 14 balls remaining, 29 runs required. They badly required couple of force boundaries at this stage to get back into this match. The asking run rate is not creeping up for them. Again, Dujala just over the bowler side, and this time he finds the gap as well. Straight hit area पर गेंद को उछाला था गेंदबाज के सिर के ऊपर से और स्ट्रेट हिट एरिया पर चौका प्राप्त करते हुए. देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. और अंपायर ने गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया झुकते हुए और चौका इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल. 30 for the loss of 2 wicket. That means 25 runs required from 13 balls. अनिरुद्ध इस बार उछाला मिड विकेट पर और यहां पर आसान सा रन आउट हो चुका है. स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे लेकिन नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं और आखिरकार ये विकेट यहां पर गिर चुका. देखिए यहां पर किस तरीके से गेंद को उछालने के बाद दौड़ पड़े थे और थ्रो पहुंचा मिड ऑन फील्डर का सीधे विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने अपना कम तमाम विकेटों के पीछे किया. 3 overs completed, 30 for the loss of 3 wicket. 25 to get from remaining last 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. New batsman Ramnath is now comes out to the middle और गेंदबाज पहली गेंद लेकर तैयार रहा. ये गेंद fantastic delivery this time. Absolutely fantastic delivery this time. Just missing outside the off stump. और इस गेंद पर पूरी तरह बल्लेबाज बीट हो गए अंतिम क्षण में और रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. गेंद को टॉस किया था इस वक्त. बल्लेबाज को ललचाया था कि स्ट्रोक्स खेले और यहाँ पर बल्लेबाज स्ट्रोक्स खेलने में चूक चुके हैं और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद बेहतर गेंद लेग स्पिन गेंदबाजी और डॉट गेंद एक बार फिर से उनके खाते में जुड़ता हुआ. नाउ द आस्किंग रन रेट इज नॉट क्रीपिंग अप फॉर देम. 25 टू गेट फ्रॉम 10 बॉल्स. और निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके ही यहाँ पर दम पे कल्लू चैलेंजर्स के बल्लेबाज को इस मैच में वापस ला सकते हैं. और गेंदबाज आदि भट्ट क्वैक्स एंड फाइंड्स द गैप. इस बार धीमी लेग कटर गेंद थी और बल्लेबाज के पास काफी समय था स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को ऑन साइड पर पुल करने का. देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था एंड ही जस्ट हैमर्ड इट अवे टू द ऑन साइड फॉर अ बाउंड्री. 34 for the loss of 3 wicket. 21 to get from 9 balls. Again turns it over the corner down to square leg. Gone through a quick single and get it comfortably. In fact it's a boundary. और गेंद को फील्ड किया गया था लेकिन शायद फील्डर का पैर सीमा रेखा को इस वक्त टकरा चुका था और यहाँ पर देखिए एक्चुअली किस तरीके से हुआ था. दिस टाइम यस इट्स अ बाउंड्री और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 38 रन पर. 17 रन टू गेट फ्रॉम 8 बॉल्स नाउ. एक या दो चौका लगातार निश्चित रूप से दम्बे कल्लू चैलेंजर्स को इस मैच में वापस ला सकता है. और गेंदबाज आदि फैंटास्टिक flighted delivery from the bowler, just missing outside the off stump. Just wanted to follow that one by the right-handed batsman, not succeeded and collected by wicketkeeper behind the stumps. There is no possibility of any run. Now 7 balls left, 17 runs required. अंतिम बार इस ओवर में आदि गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. Quicker, absolutely quicker comparing to the previous delivery. और एक तेज गेंद के साथ ओवर की
समाप्ति कर चुके हैं. 38 for 3, 4 overs bowled, and now last over remaining, 17 runs to get from the last over. That means in remaining 6 deliveries for Dambekallu challengers. वरुण कामत इस वक्त गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए दर्शकों से लगभग मैदान इस वक्त भर चुका है. Absolutely jam-packed stadium. We are just watching here in this beautiful Canberra High School ground. और जहां तक सवाल है ओवर की पहली गेंद वरुण कट किया गेंद और इस बार क्या छूट चुका है लेकिन चौका बचाने में सफल हो चुके हैं. सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में यहां पर जुड़ता हुआ. नाउ 5 balls remaining, 16 runs to get. और अब ऐसा कहना पड़ेगा दम्बेकल्लू चैलेंजर्स के बल्लेबाजों को सिर्फ चौके ही इस मैच में वापस ला सकते हैं. और इस बीच गेंदबाज वरुण कामत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए driven and finds the gap as well. No, in fact it cuts it off brilliantly just inside the fence by the point fielder. बेहतर फील्डिंग वहां पर सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ. अब अंतिम अवकाश. ऑलमोस्ट 4 fours रिक्वायर्ड इन द लास्ट 4 डिलीवरीज. 4 गेंदे 15 रन चाहिए. लगभग 4 चौकों की जरूरत अंतिम 4 गेंदों में. अंतिम अवकाश. द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ दम्बेकल्लू चैलेंजर्स. और गेंदबाज वरुण कामत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रामनाथ के लिए मिसेस. दैट्स इट. नाउ 15 टू गेट फ्रॉम 3 डिलीवरीज. और इन 3 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो यहां पर सुधींद्र वॉरियर्स की विजय निश्चित है. लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए. क्रिकेट जो कि अनिश्चितताओं का खेल है. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज. और देखते हैं इन बचे हुए 3 गेंदों में गेंदबाज तीनों गेंदों को सही फेंकते हैं या नहीं. और इस बीच गेंदबाज वरुण कामत कट किया. बेहतर स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल. गॉट ऑन अ बाउंड्री. 44. नाउ 2 balls left and 11 runs required. 11 रन चाहिए 2 गेंदों में. और इस बीच वरुण कामत तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. Again chipped away and stopped brilliantly just inside the fence. Just a single. 45. Now last ball remaining, 10 runs required. निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा सुधींद्र वॉरियर्स अपने विजय के द्वार पर आकर यहाँ पर रुक चुका है. अंतिम गेंद पर चाहिए 10 रन. And the last ball of the match is now coming up from the hands of Sudhir Varun Kamat to Gopala Krishna. Misses. That's it. 9 runs victory for Sudhindra Warriors against Dambekallu Challengers in the match number 6 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2025. And with that victory, Sudhindra Warriors back the complete points. So now the 7th match is now going to start between Nagarkatte Panthers versus Ugrana Sevaks within just short while. And we'll be back right after the short break with my friends Satish in English, where the next match will going to start. Now it's time for break. Also, it's time for DJ. Thank you. Dhanyavad. नेक्स्ट मॅच इमिडिएट स्टार्ट जाऊ का उग्राणा सेवकांना फील्डिंग घेतला तशी संकट प्लेयर्स इन्फॉर्मेशन कोणाला जेवण जायनी जल्दी की फुटबॉल वचून प्लेयर्स कसं जेवण करून येऊ का वरलांनी मागिरी जेवण कर का मॅच इमिडिएट स्टार्ट कर का.
So thank you very much, and we're into the match number 7 of the day, number 2, between team Naganakatte Panthers versus Ugrana Sevaks winning the toss. Ugrana Sevaks selected to ball first, and opening batters came into bat to open innings. Arshit, the previous match, man of the match, which goes to Varun Kamath. Varun Kamath of team Sudhindra Warriors will going to receive the man of the match award. I request Varun Kamath, please go and collect your man of the match award. Here comes the first ball. Gautam bowls a beautiful shot there from Arshit. Off the back foot, he got the width in dedication. So using that width off the back foot, Arshit played it just a square of the wicket between backward point and cover point for 4 runs. A good start and positive start there from Arshit for the team Naganakatte Panthers. Naganakatte Panthers, they played their first match against Agrasali Super Kings, but they lost the match. So very important for Naganakatte Panthers to bounce back in this particular match. Driven nicely, but misfielded by the fielder. The ball is just passing between two legs of the fielder. Frustration for the bowler Gautam, and the boundary which takes the total score into 8 on the board. 8 without loss of any wicket. Again played it down to mid-on region for one more single. With that single, Scoba Namuzan to 9 on the board for no loss. So good start there from Arshit, getting that 2 boundaries and then followed by the single. And now that brings the batter Nagesh into strike now. Nagesh, wait and see how well going to contribute from the bat. For Nagesh, the fielder down at short third man, the fielder at backward point, one at cover point, one at mid-off, which is wide-ish. The mid-on, short mid-wicket, short square leg, and one at short fine leg. Gautam to continue. Away from us, 4th time in this over. The first time to Nagesh. Oh, lovely delivery, beautifully bowled. Just tried to yoke the batsman in relegation. Of course, Nagesh just shuffled across the line of the delivery and tried to work the ball on the onside region, but they missed it completely. It's 9 without loss of any wicket in the over number, first is in progress. Here comes Gautam, right arm over the wicket, he bowls. Oh, this time full toss delivery, low full toss, but Nagesh too late to react to that full toss. And not really able to get his bat into the line of the ball. Ball just passing under his bat, and back-to-back 2 dot balls. Good comeback by Gautam. And the last 2 delivery remaining in this over of first over. Nagesh will going to face the last delivery. Gautam just wanted to change the field. Of course, not the changing the field, but he's changing the fielder. The mid-on fielder coming towards the mid-off, and mid-off fielder going into the mid-on region. And Gautam once again back to his bowling mark with a short run up away from us. Past umpire Dikshit. Bowled him, cleaned him up. He's just exposing his stump. All 3 stumps. Tried to play across and pays the penalty. Gautam know exactly where to pitch the ball. And he bowled right on the block hold of the batter. And uprooting all 3 stumps. Just have a look at that one. Disturbing the furniture. And wicket number first is back in the pavilion. Struggled innings of Nagesh, which is comes to an end. It's 9 for 1. Naganakatte Panthers. So new batter coming to the middle after the dismissal of Nagesh. Srinivas Pai need to build the innings for the team Naganakatte along with the Arshit, experienced campaigner. Arshit know exactly how important this match is going to be. And after their loss in the first match, they need to get back into that track of winning this match. 14 for 1 14 for 1 in the over number 2nd in progress. Welcome boundary for team Naganakatte Panthers. Pratham again. Short run off. Balls, full toss delivery. Played it down to mid wicket, not for run. And
one more dot delivery in this over. The support range is coming for both the teams. Each and every dot ball, Ugrana Sevaks encouraging the bowler. Each and every boundary. Naganakatta Panthers also they are encouraging their batters. Going for the cut shot, missed it completely. Great over which is comes in, and after completion of over number 2, searching for the right track, Naganakatta Panthers are 14 for 1. So very good number of spectators gathered in the around नेक्स्ट this cricket मॅच ground. जगली चर्केस वर्सेस श्रृंगेरी रायझिंग स्टार्स दोन्ही टीमांना रजिस्टर कर का. Enjoys this beautiful atmosphere and absolutely the festival atmosphere. You can see here everyone enjoying this cricket tournament. 2 days of festival of cricket. 14 for 1. Sujit brought into attack. The experienced campaigner brought into attack to bowl the third over from the commentary box, and it's going to be a great contest between Arshit and Sujit. And wait and see how well these two batters will going to, these two players will going to play each other. Sujit, first time, full toss delivery, and Arshit fails to make a contact with the ball, trying for the run out. A good backup by the fielder Sanjay, and one run completed in the form of a leg by. With that leg by, Scuba moves on to 15 for 1 in the over number 3rd is in progress. That brings Srinivas into strike now. So far, he is looking very confident after he's scoring 2 boundaries from his bat, and he now he's appealing for leg before wicket, quite interestingly, but it's a good delivery, no doubt at all from Sujit. He's bowled a Yorker line delivery, and quite interesting kind of reverse sweep which is attempted by the batter Srinivas. Is absolutely received by the beautiful Yorker line delivery, and 16 for 1. 2 leg buys. Good start there from Sujit. Bowling away from us. Third time in this over. This time nothing much to do with the delivery, and Arshit left the ball rightly so, and umpire Dikshit in his own style, just like the bird is spreading the wings and giving the signal to our scorer, and it's 17 for 1 in the over number 3rd is in progress. Sujit again away from us, and some kind of disturbance coming inside the ground, and so that Sujit have to run back once again to his bowling mark to bowl the next delivery of this over. Right arm over the wicket. Balls drives that one, and Arshit is so quick to react to that run. Good running between the wicket. All along the stroke, he went for the run, and with that single scope, moves on to 18 for 1 in the over number 3rd is in progress. So far in this over, Sujit managed to tighten up the screws with a great line and length, not really given any width for the batter so far, excluding that one wide. He bowled really very well. 4th time in this over. Oh, beautifully bowled, lovely line, extra bounce as well. When you see that Sujit is running from the edge of the line, boundary line, coming very close to the stumps, and he's just targeting the line, which is so good for the right-hander batsman. Moving a little bit away from the right-hander batsman, and very good delivery and very good line. Sujit again, full toss, played it down to cover point region, no chance of run out, and he's looking for the run out again, the second attempt for the run out. Oh, well, Gautam wanted the wicket of Arshit quite badly, but very, very lucky indeed there for Arshit is that ball missing the stump, but lucky for Gautam is that good backup by the fielder. Otherwise, it's going to be another extra 4 runs in the form of overthrow. It's 19 for 1. What a great over is in progress now. But job is not yet over. The Sujit have to get one good delivery here. But Srinivas have to get one good stroke. Just taps the ball in front of cover point. Picked up a single. Will going to retain the strike for the next over. Fantastic over which is comes to an end here from Sujit Baliga, and fantastically bowled. Just the 3 runs conceded, 4 runs in that over. After completion of over number 3, it's 20 for the loss of 1 wicket. Team Naganakatte Panthers.
Correction, it's 19, it's not a 20, it's 19 for 1. And over number 4 will going to start. Bala, the previous match, man of the match, Bala, for his wonderful bowling. Oh, he's bowled a beamer. He's bowled a beamer, and umpire called it no ball. So with that, no ball, score moves on 20 for the loss of 1 wicket. Bala, maybe the ball slipped out of his hand. नंदन मल्ले हांका एक धन्यवाद समर्पण करता साजी. Improvised beautifully by Srinivas Bhai, fantastically done. Played it into the square leg region by shuffled across the lineup delivery, taking that in the pull. And Srinivas played it exquisite, improvising shape shot. Just have a look at the replay. Almost he need to bend down a little bit, standing a little bit deep in the crease, and got the boundary for that. 24 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. So this is 1 over, the penultimate over, and the batters of Naganakatta Panthers have to get some acceleration in the run rate. And here comes the Balakrishna balls. Switch it, and lovely stop by the fielder. Excellent work. And even in the crowd is also acknowledging that effort there from the fielder. Why not? With the clap, the great effort there by the fielder. Because ball is went very quickly to the fielder, and you have to very quickly to stop the ball. 24 for 1, Balakrishna. Srinivas again looking for the same improvising stroke onto the onside region. This time too clever Bala, following the batsman, not giving that much of width for the batter to go for that improvising sweep shot, and the ball just down the off stump, outside the line of off stump. 24 for the loss of 1 wicket, Bala. Balls full toss, and this time he will going to get the boundary. Again making a mistake here by Bala, that bowling the full toss delivery. He may be trying for the Yorker line delivery, seeing the batsman is shuffled across the line of delivery. He thinking about, I can hit the stump by bowling the Yorker line delivery. But this is a slow full toss, and all the time in the world for Srinivas to pick that one into the square leg for 4 runs. 28 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. You are watching this prestigious cricket tournament in the name of SVT Trophy 2026, day number 2 and match number 7 in progress. Bala again with the short run up to the right-hander batsman Srinivas. One more full toss, this time a chance of run out, and oh my goodness, what you call the fortune favors the brave. Ball hits the stump. Even LED lights also, bells are blinking, but bells which is not disclosed from the stumps. This is what sometimes the luck is a fundamental ingredient in the success. It's 29 for 1 in the over number. Last 4th is in progress and last delivery. Wait and see how Arshit will go into capitalize this luck he has got in this previous delivery. Final time in this over. Driven firmly, but lack of placement. Now this again, opportunity of run out again. Arshit is lucky there. And lovely piece of fielding there by the fielder. Powerfully struck. And excellent fielding by the fielder. 1 more over completed. Over number 4 gone. And after completion of 4 over, searching for the right track, Naganakatte Panthers are 29 for 1. Time is exactly 10 o'clock in the night. And after this, still we have to complete another 3 matches of the day number 2. The next match will be played between Jagali Cherkes versus Sringeri Rising Stars. And I request both the teams, please get ready and complete the formalities of registration. Sanjay brought into attack to bowl the last over of the innings of Naganakatte Panthers. So far it's equal battle is on between these two teams, because Naganakatte Panthers desperately wanted a victory. Short pitch delivery and straight to the answer fielder. It's absolutely frustration for the batter. He got that one right from the middle of the bat, but Sujit is absolutely in the right position to stop the boundary. The placement is not good enough there from the batter.
And just have a look at the replay. Sujit is experienced campaigner. And no runs scored. Just have a look at the reaction there from Sujit. Absolutely good one. 29 for 1. Here comes second delivery. Oh, beautifully bowled. Perfect Yorker line delivery there from Sanjay. Is bowled the Jaffa. Fantastically bowled. Unplayable Yorker line delivery. And Srinivas maybe thinking about to bowl that Yorker line, thinking about to play the inside out cricketing stroke. Just have a look at the delivery. Absolutely perfect one. It's a 29 for the loss of 2 wicket. Over number 5 in progress. So new batter in is Sandy coming to the middle with the jersey number 14. Sandesh, his nickname is Sandy. And wait and see how Sandy will going to contribute in remaining deliveries of their innings. Sanjay. Away from us. Balls, clever cricket there from Sandy. You know exactly, Arshit is a man who is settled down in the middle. His job is to pick the single and get him into strike to deal with the final two deliveries of their innings. 30 for 2. Full toss! He just mistimed it, and but of course Arshit is searching for the umpire. Usually umpire is standing at square leg. And he realizing there is no umpire at all. Now he's looking at umpire in the backward point region, taking it. And umpire says it's a fair delivery, sir. And 30 for the loss of 2 wicket. Here comes the next ball. Driven nicely into mid wicket and complete the single overthrow, but back up by the field. No, and coming back for the second. This is absolutely absence of mind. This is absolutely absence of mind because Sandy need to be stay in that striker's end. Arshit have to run for that if he wanted to retain the strike, but he unfortunately back in the pavilion. One more wicket back in the pavilion. 31 for 3. Ashok is the new batter in, and this is going to be a last delivery of their innings. Left-hand batter Ashok. Experienced campaigner will go into face Sanjay. This is turning out to be a fantastic last over for the team Ugrana. Oh, what we are talking about, the fantastic last over. And he bowled that wide outside the line of off stump. So 32 for 3 now. Last time, Sanjay. Okay, played it. Beautiful shot. Ashok finished the innings in a style. That one delivery has become a very costly from Sanjay. He bowled a wide and the very next ball he bowled a full toss. Got the boundary for that. Ashok played it very straight. Nice looking drive. Good placement. And in that boundary they completed their innings of 5 overs with the 37 and 38 will be the target for the team Ugrana to win this match. Ugran Sevaks, how well they managed to get this total. Wait and see. We'll take a short break in commentary box and after
धन्यवाद सतीश. So the target is 37 in 5 overs for Ugrana Sevaks set by Nagaragatte Panthers. And their innings now going to start. 37th they have to score in the stipulated 5 overs follows with a required rate of exactly 7.40 runs per over. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा. शिन्नी गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए शिन्नी यानी श्रीनिवास पई. और जहाँ तक गेंद बल्लेबाजी का सवाल है तो और बाला सामना करने के लिए तैयार और नॉन स्ट्राइक रन पर गौतम इस वक्त मौजूद. फर्स्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. 37 दे हैव टू स्कोर इन द स्टिपुलेटेड 5 ओवर्स. फर्स्ट बॉल फुल टॉस. गेंद को खेल दिया इस वक्त. गेंद पहुंची पॉइंट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है उग्राण सेवक के लिए. और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइक का तो स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार अब गौतम पई और श्रीनिवास पई. गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद श्रीनिवास पई अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था. यहाँ तो ओवर द विकेट. फुल टॉस ड्राइव कर दिया गेंद को. मिड ऑफ की दिशा में गेंद पहुंची. रन इस वक्त नहीं मिलेंगे. स्कोर रुक चुका है 1 रन पर बिना किसी नुकसान के. 1 विदाउट लॉस द स्कोर बोर्ड स्टेज. निश्चित रूप से नागरगट्टे पैंथर्स को एक घातक गेंदबाजी की इस वक्त जरूरत है. यहाँ पर ये गेंद कट किया बैकफुट पर जाने के बाद कवर पॉइंट की दिशा में 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित बल्लेबाज. देखा कि गेंद को कवर पॉइंट पर फील्डर फील्ड कर चुके हैं. जैसा कि मैं फरमा रहा था नागरगट्टे पैंथर्स के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी की जरूरत. अगर उन्हें 37 रनों के अंदर उग्राना सेवक के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है. और इस बीच श्रीनिवास ये गेंद बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी. जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप. स्टीयर करना चाहता चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. और जहां तक उग्राना सेवक के सलामी बल्लेबाजों का सवाल है इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर शुरुआत अगर 37 रनों के लक्ष्य तक पहुंच रहा है तो. और इस बीच श्रीनिवास पई अपने जूते के फीते को बांधने के बाद इस वक्त तैयार गौतम पई जो कि सामना करने के लिए इस वक्त तैयार. श्रीनिवास पई की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए. पहले ही खाली क्षेत्र को भांप लिया था इस वक्त गौतम पई ने. हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त और शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को मोड़ा था. मिड और लेग स्टंप पर गेंद थी. स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद को हल्के से इस वक्त स्वीप कर दिया फाइन लेग पर 4 रनों के लिए. और अगली गेंद लेकर श्रीनिवास पई इस वक्त तैयार. ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त. नॉट कनेक्टेड दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर. Good over came from Srinivas Pai who conceded just 6 runs in this first over and after first over chasing the victory target of 37 in 5 overs which is set by Nagaragatte Panthers. Ugrana Sevaks are made a steady start. In fact, they managed to score 6 runs on the board yet to lose any wicket after completion of first over. एक बेहतरीन exquisite live telecast V4NEWS 24/7 चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है. श्रीमान मानिक इनके सारथ्य में बेहतर लाइव टेलीकास्ट, बेहतर टेक्नीशियन, बेहतर कैमरामैन और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस मेगा श्रृंखला का मुआयना करते हुए. और इस बीच नागेश नई ओवर की पहली गेंद नेक्स्ट पर आते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया इस वक्त फाइन लेग पर विकेट कीपर के पहुंच से बाहर 4 रनों के लिए. अंतिम क्षण में अपना बल्ला इस वक्त अड़ाया था गौतम ने जैसे ही गेंद लेग स्टंप पर निकल रही थी. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था. इट जस्ट गॉट अ डिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट. द बॉल में जस्ट वाइड ऑफ द विकेट कीपर एंड क्रॉस्ड ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री. अगली गेंद के लिए तैयार नागेश. ये गेंद कट किया खूबसूरती के साथ अगली की दिशा में. थोड़ी सी मिसफील्ड इस वक्त. 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर. 11 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. और नागेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस बाला. इज बैटिंग ऑन 1. अगली गेंद ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्राइक केम फ्रॉम द बैट ऑफ बाला. मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में इस वक्त गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त निकाल दिया. और यहाँ पर देखिए मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी और पहले खाली क्षेत्र को भांपते हुए गेंद को इस वक्त निकाल दिया मिड विकेट फीडर की दाईं ओर से चौके के लिए. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर. यह गेंद ड्राइव किया. एक बार फिर से रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ 1 रन प्राप्त करते हुए. शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे नागेश बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का.
और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। सैंडी फील्डर थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया था और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर, 16 विदाउट लॉस। और गेंदबाज नागेश अगली गेंद कट किया इस वक्त पॉइंट पर, 1 रन का इजाफा। ये दोनों बल्लेबाज जान चुके हैं इस वक्त, सेंसिबल बल्लेबाज यहाँ पर अपनानी है। लक्ष्य कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, 37 रन सिर्फ उन्हें बनाने हैं और एक सेंसिबल बल्लेबाजी निश्चित रूप से उगराना सेवक्स को अपनी सही मंजिल तक पहुंचा सकती है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों आरंभिक बल्लेबाज एक सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, जस्ट मिसिंग 2 फॉर साथ ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा। और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 18 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और जहाँ तक का गेंदबाजी का सवाल है तो नागेश एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट बाड़ा के लिए अगली गेंद। ये गेंद ड्राफ्ट ऑन इज फॉलो थ्रू, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन। गेंद को ड्राइव किया था इस वक्त, लेकिन फॉलो थ्रू में कॉटन बॉल लपकना उतना आसान नहीं है किसी भी गेंदबाज के लिए। खासकर आप गेंद को डिलीवर करने के बाद, अपने आप को संभलने के बाद कैच को अगर आप लपकते हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन कॉटन बॉल कहलाता है। और यहाँ पर लपकने की कोशिश जरूर की थी गेंदबाज ने, लेकिन आखिरकार गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज इस बीच जीवदान प्राप्त करते हुए। 2 overs completed, 18 without loss. They are looking in a good situation now. Straight away coming back to the equation. 3 overs left, 18 balls remaining, and they have to score 19 more runs for victory. 18 गेंदें बाकी, 19 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट एग्जैक्टली 6.33 रन पर ओवर। और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त गेंदबाज पहली गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर मोड़ा 4 रनों के लिए। फैंटास्टिकली स्ट्रक केम फ्रॉम द बैट ऑफ गौतम। शिवानंद की गेंद थी, क्विकर जितनी तेजी के साथ गेंद आए उतनी तेजी के साथ शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर मोड़ा था। हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले एंड ही just finds the gap as well at last. 22 on the board, 3rd over in progress. शिवानंद एक बार फिर से into the gap, consecutive boundary for Gautam and he is looking very confident. 2 लगातार चौके, 26 now for the loss of no wicket, and this partnership is now building up here for उगराना सेवक्स। और इस बीच शिवानंद अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार ऑन साइड पर अगेन 3 in a row, 3 in a row for Gautam and he is now just looking on fire। और इस मैच को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश में इस वक्त बल्लेबाज, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। और शिवानंद फिर से एक बार तैयार, शॉट गेंद कट करना चाहा, विकेट कीपर चुके और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 34 on the board and now it looks like just a formality is now remaining in this match। ऐसा लग रहा है सिर्फ औपचारिकता ही इस मैच में बाकी रह गई है। सिर्फ 3 रन चाहिए अब विजय के लिए, जबकि 14 गेंदें उनके पारी में बाकी। और शिवानंद अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद, और इसी के साथ उगराना सेवक्स registered a comprehensive victory। They won the match by 10 wickets handsomely, the big margin victory for them with 13 balls to spare. And with that victory, Ugrana Sevaks backed the complete points against Nagarkatte Panthers. So match number 7 has been completed, which won by Ugrana Sevaks against Nagarkatte Panthers. And now the match number 8 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy, is now coming up between Jagali Cherkes versus Sringeri Rising Stars. The man of the match, Gautam, who scored unbeaten 31 runs in just 13 deliveries, including 7 fours. And also he picked up 1 wicket in his bowling performance. 1 over no wicket, 9 runs, 1 wicket, and 31 unbeaten runs in just 13 deliveries by Gautam Pai. And because of that, Gautam Pai engaged the man of the match of this match. And now, next match, Jagali Cherkes will take over Sringeri Rising Stars. वो मैच यहाँ पर शुरू होगा एक छोटे चंद्राल यानी प्लेयर जेवण काय नाचलेलं जल्दी दोघे फुटबॉल होतो जेवणा प्लेयर ग्राउंड आशिल्ले इतर सदस्य कोणाला जेवण नाही जाल्यार जल्दी दोघे जेवण येवपा फुटबॉल क्लोज जाता जशें की गौतम पैना मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी कलेक्ट करता आता नेक्स्ट जगली चर्केस फिल्डिंग आयलांची इमिडिएट एक 2 मिनिट भितर मॅच स्टार्ट जाता।
Right, welcome back once again. The match number 8 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2026 is now going to start between Jagali Cherkes versus Sringeri Rising Stars, and the first ball outside the off stump, and the batsman gone through for a single. So news is here from the centre that the captain of Jagali Cherkes, after won the toss, he elected to field first, and because of that, the openers are now comes out to the middle for Sringeri Rising Stars, and the first run scored in the very first delivery of their innings. और जहां तक सवाल है, अगली गेंद को हल्के से पुश कर दिया इस वक्त एक रन के लिए बल्लेबाज ने, और एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर। 2 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस, और पहला ओवर प्रगति पर। पवन नायक इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को इस वक्त मिड विकेट की दिशा में। मिसअंडरस्टैंडिंग लेकिन मिसफील्ड वहां पर, और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज एक रन यहां पर पूर्ण कर चुका है। इस वक्त निश्चित रूप से वहां पर रन आउट हो सकता था अगर ठीक तरह से गेंद को फील्ड कर देते फील्डर। देखिए किस तरीके से होता है, वो लोग कहते हैं इन द रिप्ले इन द एलईडी स्क्रीन, और बार बार गेंद को टटोलते रहे। ते कमेंट्री बॉक्स एद्राक आशिल्ले आमगेले प्लेयर्सांचो कड साइड वचोका, तांकां कश्ट जाताच काही, तांकां एक क्लियर विजन आसा, थंय दुखून तुमगेले डग आउट साइडा काही वचाची। नेक्स्ट वन आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और गेंद को खेल दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, और इस बार विकेट पर निशाना टकरा चुका, और अंपायर इस वक्त तीसरे अंपायर की ओर इशारा कर चुका है। नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। डायरेक्ट हिट इस वक्त लग चुका था, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर फील्डर का सीधे स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ, और देखना है कि जब विकेटें बिखेरे गए थे तब यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या फिर क्रीज से बाहर थे। तो तृतीय अंपायर, तीसरे अंपायर इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। जगली चरकेस और श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के बीच इस वक्त मैच जो कि शुरू हो चुका है, मैच नंबर 8 इस दूसरे दिन का इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एसवीटी ट्रॉफी 2026 जीएसबी वॉलंटियर्स प्रीमियर लीग सीजन 4 विच इज proudly organized by एसवीटी वॉलंटियर्स एसोसिएशन कास्टेट मैंगलोर। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स आभरण ज्वेलर्स। और जहां तक सवाल है इस वक्त कमेंट्री बॉक्स एद्रासचे प्लेयर्सांका वापस रिक्वेस्ट करता सची, कमेंट्री बॉक्स एद्रासचे प्लेयर्सांना साइड वचुका, थंय बसचाना, तांकां एक विजन क्लियर करून दियाची। तुमी साइड डगआउटा खुर्चे समजता, थंय बसयता प्लीज। तो तीसरे अंपायर इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए, जस्ट वेट फॉर द थर्ड अंपायर डिसीजन, और देखते हैं आखिरकार वो क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं इसका परिशीलन करने के बाद। काफी नजदीकी मामला है यहाँ पर, और आखिरकार इंतजार है इस वक्त तीसरे अंपायर के निर्णय का। इस मैच के बाद आज 2 मैचेस और खेले जाएंगे। अगला मैच महामाया क्रिकेटर्स और गोपुर ग्लैडिएटर्स के बीच खेला जाएगा। उसके बाद 10वां और अंतिम मैच खेला जाएगा राजांगन रॉयल्स और दम्बेकल्लो चैलेंजर्स के बीच। और जहां तक का सवाल है इस मैच का, इस मैच में जगली चरकेस का मुकाबला इस वक्त होता हुआ श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के साथ मैच नंबर 8 में। तो इस वक्त परिशीलन जो कि जारी है तीसरे अंपायर द्वारा, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है अंडर फ्लड लाइट्स, ऐसा कहना पड़ेगा। फेस्टिवल एटमॉस्फेयर, त्योहार का माहौल यहाँ पर नजर आता हुआ इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एसवीटी ट्रॉफी 2026। तो जहां तक सवाल है इस बीच तीसरे अंपायर का, तो काफी नजदीकी मामला यहां पर है, और बार बार इसका परिशीलन करते हुए इस वक्त तृतीय अंपायर, और एक बेहतरीन एंगल प्रोवाइड इस वक्त करते हुए V4 न्यूज़ 24/7 के टेक्नीशियंस। और जहां तक सवाल है इस वक्त देखते हैं आखिरकार तृतीय अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद आखिरकार क्या निर्धार देते हैं यहाँ पर। So absolutely jump pack stadium we are just watching here, and it's
Looks like a festival atmosphere in this ground under this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2026 GSP Volunteers Premier League Season 4. और जहां तक का सवाल है इस वक्त एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। देखिए दर्शक इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं, पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस वक्त जीएसपी समाज के इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट का मुआयना यहां पर करते हुए, और लगभग मैदान इस वक्त दर्शकों से भर चुका है। V4 न्यूज़ 24/7 के कैमरामैन इस वक्त फोकस करते हुए उन सारे प्रेक्षकों पर जो इस वक्त सीमा रेखा के बाहर कुर्सियों पर कुछ बैठे हुए, कुछ खड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से इस मैदान की शोभा को और यहाँ पर बढ़ाते हुए केनरा हाई स्कूल का एक बेहतरीन मैदान और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर एक शानदार प्रगति करते हुए। और जहाँ तक का सवाल है मैच नंबर 8 का, तो मैच नंबर 8 में इस वक्त भिड़ रहे जगली चरकेस और श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स। और जगली चरकेस के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप इस वक्त श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स का पहला ओवर, पहली पारी का यहाँ पर चलता हुआ रनआउट के लिए जो मांग इस वक्त की गई है, यहाँ पर देखते हैं इसका परिशीलन करने के बाद तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। काफ़ी कूलंकुश होकर इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए, और आखिरकार देखते क्या निर्धार उनके द्वारा यहाँ पर आता है। No doubt is the call and the batsman survived. तो यहाँ पर बल्लेबाज बच चुके, काफी नजदीकी मामला था और काफी बारीकियों के साथ कुलंकुश होकर इसका परिशीलन करने के बाद इस वक्त तीसरे अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट घोषित किया है। तो सब कुछ सही सलामत बल्लेबाज के लिए। और इस बीच गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पवन नायक और नागराज भाई इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट पवन नायक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए नागराज के लिए अगली गेंद ड्राइव किया, इस बार बेहतर फैंटास्टिक फील्डिंग ऑन हिज फॉलो थ्रू। दिस इज अ फैंटास्टिक फील्डिंग मेड बाय द बॉलर ऑन हिज फॉलो थ्रू। और निश्चित रूप से फील्ड करने के बाद एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर, और गेंद लेकर एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पवन नायक का पटकी गेंद ऑन साइड पर मोड़ा, शॉट स्कोर लेग पर मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक्त, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित। फैंटास्टिक ओवर comes to an end from Pawan Nayak, and after completion of first over, after being losing the toss and put into bat by Jagali Cherkes, Sringeri Rising Stars made a slower start. In fact, they managed to score only 4 runs on the board, yet to lose any wicket after the completion of first over. So still in overall calculation, it's going to be 4 overs remaining in the innings. 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में यहाँ पर श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। गेंदबाज द बॉलर स्टार्ट्स फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम दैट साइड एंड फ्रॉम द स्टेज एंड इज वेंकटेश पाई एंड द स्ट्राइकर इज आदित्य प्रभु। और दूसरा ओवर उनकी पारी का शुरू होता है। सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स। पहली गेंद लेकर गेंदबाज वेंकटेश पाई इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। पहली गेंद, oh, this is an outstanding one. Terrific delivery from Venkatesh Bhai. Absolutely perfect yorker, and he just got the lead of the batsman. This is an absolutely unplayable delivery. तो इस वक्त replay पर दिखाते, have a look at this in the replay. Oh, this is an absolutely zapper. This is an absolutely magnificent delivery from the bowler Venkatesh Bhai, and finally got the wicket of the right-handed batsman. बल्लेबाज ने अपनी जीतोड़ कोशिश जरूर की थी गेंद को रोकने की, लेकिन गेंद लगभग ब्लॉक होल पर टिप्पा खाते हुए और सीधे मिड और ऑफ स्टंप को बिखेर कर ले जाते हुए बेल्स गिल्लियां डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ एक बेहतरीन गेंद के जरिए ये विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज वेंकटेश भाई।
आदित्य की पारी समाप्त और इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए पवन भगत। और जहां तक पवन का सवाल है, पिछले मैच में जब अंतिम ओवर में 8 रन चाहिए थे तब 2 चौके झड़कर अपनी टीम को उन्होंने विजय दिलाई थी और इस वक्त क्रीज पर मौजूद और वेंकटेश भाई की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। और वेंकटेश भाई इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पवन भगत सामना करते हुए इस वक्त वेंकटेश भाई की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ना चाहा, फॉरवर्ड शॉट की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर लपके जरूर फॉरवर्ड शॉट लेग पर, लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाया और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 5 रनों पर। 5 on the board for losing 1 wicket in the over number 2 in progress. A partnership is now badly required for the batsmen of Sringeri Rising Stars. So if they have to post a huge target in front of the opposition side, this time he lost his wicket. He just pulled that one full tossly down to a mid wicket, and because of that he lost his wicket. Second wicket lost. Now I must say Sringeri Rising Stars are now looking in trouble, in fact, for the first time in this match. और स्कोर है इस वक्त 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। It's 5 for the loss of 2 wicket. Number 4 batsman is now coming out to the middle. नेक्स्ट मॅच महामाया क्रिकेटर वर्सेस गोपूर ग्लॅडिएटर. दोन्ही टीम कॅप्टनानं तुमगेल टीम रजिस्टर करू का. प्रथम क्षण है इस वक्त क्रीज पर मौजूद नए बल्लेबाज के रूप में और अपनी प्रथम गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार रहा। और गेंदबाज वेंकटेश भाई गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद क्विकर गेंद थी, कट किया बैकफुट पर जाने के बाद पॉइंट पर रन आउट का खतरा, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित। पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जा चुका था फील्डर द्वारा, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। प्रथम एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार रहा वेंकटेश भाई की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए और स्वयं फॉलो थ्रू में गेंदबाज वेंकटेश भाई ने दाहिनी ओर जाकर गेंद को फील्ड कर दिया। फैंटास्टिक ओवर प्रोग्रेसिंग हियर फ्रॉम वेंकटेश भाई, जस्ट सिंगल रन कंसीडर्ड बाय हिम इन दिस ओवर and he just got the wicket of Aditya last time in this over. Here he comes, right arm round the wicket, leg stump से बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी विचित्र शैली के साथ गेंदबाजी करते हुए और स्टंप्स पर पहुंचते हुए अपने हाथों को एक बार पूरी तरह फिरा कर तुरंत वो गेंद को रिलीज करते हैं। यहाँ पर बेहतर एक्शन और सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त वो गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार कट करना चाहा चूंकि ओवर की समाप्ति। फैंटास्टिक ओवर केम टू एंड फ्रॉम वेंकटेश भाई। सो आफ्टर 2 overs still I must say the batsmen of Sringeri Rising Stars searching for the right track. It's 6 for 2. The first 2 overs completely belongs to the bowlers of Jagli Charkes. They conceded just 6 runs in the first 2 overs and captured 2 wickets of Sringeri Rising Stars. 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं यहाँ पर इन बचे हुए 3 ओवर में श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ द बॉलर स्टार्ट्स ऑफ फ्रेश प्रोसीडिंग्स इज संकेत राव फ्रॉम दैट साइड एंड फ्रॉम द स्टेज एंड और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद ऑन साइड पर मोड़ा इस वक्त पवन ने, लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड द स्कोरबोर्ड स्टेज एट 6 for the loss of 2 wicket in the over number 3 started just short while ago. निश्चित रूप से चंद चौकों की इस वक्त सख्त जरूरत श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के बल्लेबाजों को अपनी टीम की रन की गति पर एक्सेलरेशन लाने के लिए ड्राइव किया इस वक्त पवन ने, लेकिन एक बार फिर से गैप ढूंढने में असफल। बैक टू द बॉलर की दिशा में रन्स नहीं मिलेगा। 2 बेहतर गेंदबाज संकेत राव इस वक्त फेंक चुके हैं और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए कट किया खूबसूरती के साथ into the gap. Oh, brilliantly saved. This is an absolutely perfect save made by the extra cover fielder. और वेंकी जो फील्डर थे जिन्होंने इस गेंद को खूबसूरती के साथ सीमा रेखा के अंदर ढकेला था और चौके को यहाँ पर बचाते हुए सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिला। और देखिए यहाँ पर किस तरीके का स्ट्रोक था और किस तरीके की फील्डिंग थी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जस्ट इनसाइड द फेंस। सिंगल रन एडेड 7 for 2। गेंदबाज फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ा और गेंद इनटू द गैप एज वेल। फर्स्ट कॉन्फिडेंट स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ द राइट हैंडेड बैट्समैन। प्रथम क्षण है ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा था इस वक्त और चौका यहाँ पर वो प्राप्त करते हुए फुल टॉस गेंद थी और आखिरकार स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 11 रनों पर।
संकेत ऑन साइड पर मोड़ा, लेकिन रन्स नहीं मिलेंगे जरूर। एक रन स्ट्रोक से साथ ही दौड़ पड़े थे, ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप होता वो वहां पर और एक रन का इजाफा। It's 12 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Still 1 ball left in this over. Fantastic bowling performance continuing here from the bowlers of Jagli Cherkes at this situation. इस बार ड्राइव करना चाहा और फॉलो थ्रू में बेहतर स्टॉप, हाफ स्टॉप, लेकिन बैकअप होता हुआ। 3 overs gone, and after 3 overs, still I must say the batsmen of Sringeri Rising Stars are now searching for the right track. अपनी सही राह को तलाशते हुए सिर्फ 12 रन जोड़ चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की संपूर्णति के बाद। 3 gone, it's 12 for 2 and 2 to go in the innings. विनोद द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक और नया ओवर इस वक्त तो प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार प्रथम क्षण सामना करते हुए 2 ओवर में कम से कम 25 से 30 रन यहां पर बटोरने होंगे बल्लेबाजों को अगर उनकी टीम को एक चुनौती पर स्कोर यहां पर खड़ा करना था, लेकिन यहां पर गेंद को स्कूप कर दिया सीमा रेखा से बाहर, फुल टॉस और अपना विकेट प्रथम क्षण यहां पर खो चुके हैं। विकेटों के ऊपर विकेटें गिरते हुए और हर विकेट के पतन के साथ परेशानियां बढ़ती हुई श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के बल्लेबाजों के लिए फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज जगली चरकेस के गेंदबाज और नए बल्लेबाज न्यू मैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल, नंबर 5 बैट्समैन नरसिम्हा नायक का, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार ना, और गेंदबाज विनोद कामत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था। हाथ ओवर द विकेट ऑन साइड पर बोलना चाहा, गेंद गई ऑफ साइड पर, रन के लिए दौड़ पड़े काफी तेज पवन भगत, एक रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। गेंद को फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद गई ऑफ साइड पर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था जोखिम भरा एक रन यशस्वीतम पूर्ण करने का। 13 रन बन चुके हैं चौथा ओवर प्रगति पर। गेंदबाज इस बीच विनोद कामत अगली गेंद लेकर तैयार था, इन हाथों पर द विकेट। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन फीडर मौजूद, जस्ट सिंगल ही गॉट। एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर। रन सिंगल्स के रूप में बनते हुए इस वक्त श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स के लिए चाहिए चंद चौके इस वक्त अपनी टीम की रन की गति पर एक्सेलरेशन लाने के लिए। अगली गेंद कट किया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, एक रन मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 15 रनों पर। 15 for the loss of 3 wicket. Still in overall calculation, it's going to be 8 balls remaining in their innings. और गेंदबाज विनोद कामत अगली गेंद लेकर तैयार पवन भगत के लिए। Ball just misses outside the off stump. In fact, the ball kept low, uneven lowness कहते हैं जिसे अंग्रेजी में। जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंद बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान लगाया था, गेंद उनसे काफी नीची रहती हुई और सीए गौतम पै आणि नरसिंह पै वेदिकेर स्वागत। गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। अगली गेंद को इस वक्त ड्राइव किया पवन भगत ने, गेंद पहुंची मिड ऑन पर, एक रन का इजाफा। Single to end the over, 4 gone, and after 4 over, still the struggling time continuing here for the batsmen of Sringeri Rising Stars. 16 for 3 after 4, and just 1 over to go in their innings. मामाया क्रिकेटर्स आणि गोपर ग्लॅडिएटर्स टीम रजिस्टर करायची। दोन्ही टीम फायनल कॉल, मामाया क्रिकेटर्स आणि गोपर ग्लॅडिएटर्स। अनिरुद्ध नया ओवर प्रारंभ करते हुए, अंतिम ओवर शुरू होता हुआ श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स की पारी में, और देखते हैं इस अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। पवन भगत सामना करने के लिए तैयार। द फर्स्ट बॉल ऑफ द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। लेग स्टंप से बाहर, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट, एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th एंड द फाइनल ओवर ऑफ द इनिंग्स। और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा। परफेक्ट लेग कटर, मिस जजमेंट, एब्सोल्युटली मिस जजमेंट। पवन ने पूर्वानुमान लगाया कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर गुजरेगी, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद कुछ हद तक टर्न घुमाव लेती हुई उनके पैरों पर टकराई और एक बेहतर लेग कटर गेंद इस वक्त फेंकी थी गेंदबाज ने। अगली गेंद लेकर तैयार रहा, दाहिने हाथों पर था विकेट। पटकी हुई गेंद ड्राइव किया, मिड ऑन पर, रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहां पर प्राप्त करने में सफल।
With that single run, the scoreboard moving up to 18 for the loss of 3 wickets. Now just 4 balls left in overall calculation in their innings. और बल्लेबाज नरसिम नायक इस वक्त सामना करेंगे अनिरुद्ध भट्ट की गेंदों का और अनिरुद्ध अगली गेंद लेकर तैयार. Onside Parmoda, fantastically, intelligently played by the batsman. After exposing the stumps at the last moment, in a full toss delivery, it turns it over on the corner and finds the gap as well. आप देखिए किस तरीके से गेंद को मोड़ा था. Absolutely fantastic. Just wide of the square leg feeder. 22. Now 3 balls left in their innings now. Gopur Gladiators, final call. और गेंदबाज अनिरुद्ध इस वक्त तैयार रहा नरसिम्हा के लिए. अगली गेंद लेकर तैयार रहा. इस बार एक बार फिर से बोल्ड जा बैक टू द बॉलर की दिशा में और धीमा थ्रो इस वक्त और बल्लेबाज एक रन यहां पर प्राप्त करने में सफल. 23 for 3 now. Now just 2 balls left. Pawan Bhagat is now back on strike. और गेंदबाज अनिरुद्ध अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए उनकी पारी की दूसरी अंतिम गेंद लेकर तैयार. द सेकंड लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए left it and is gone. Hit that one full tossly out of the fence at the last moment and he lost his wicket. Pawan Bhagat departs and one more wicket fallen. Now it's 23 for 4. Now just a last ball remaining. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था फुल टॉसली. स्ट्रोक पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाए और आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए. द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस करुणा सागर प्रभु. अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार और एम अनिरुद्ध भट्ट इस वक्त तक गेंदबाजी करते हैं उनके पारी की अंतिम गेंद. बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी, डॉट डिलीवरी, गॉन थ्रू क्विक सिंगल, बैकअप होता हुआ लेकिन और इस बार ऐसा कहना पड़ेगा ये विकेट गिर चुका है. अपने दूसरे प्रयत्न में यहाँ पर रन आउट करने में सफल फील्डर रहा है और इसी के साथ इनिंग्स इज अप फॉर श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स. वाइड का इशारा हो चुका है. दैट मींस 1 बॉल स्टिल लेफ्ट. 1 बॉल स्टिल लेफ्ट. कुछ देरी से इस वक्त वाइड इस वक्त घोषित किया था और जहाँ तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त मिलेंगे 1. नाउ द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 24 on the board. Still a ball left in this over. In fact, still a ball left in their innings in overall calculation. और अनिरुद्ध इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. अंतिम गेंद लेकर तैयार. ड्राइव किया और बेहतर स्टॉप और रनआउट का मौका, निशाना चूका, ओवर थ्रो, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन यहाँ पर दूसरा रन नहीं मिलेगा. Single added and a wicket lost in the final delivery of the innings, and they finished with 25 for the loss of 5 wickets in the stipulated 5 overs. And fantastic bowling performance given by the Jagli Charkes, and because of that they restricted the batsmen of Sringeri Rising Stars for just 25 runs. Now the target for Jagli Charkes is 26. 26 रनों का लक्ष्य जगली चरकेस के सामने Sringeri Rising Stars रकम के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 25 रनों पर रोक कर रखा Sringeri Rising Stars के बल्लेबाजों का. अब 26 रनों का लक्ष्य 26 के target 5 over down to the victory. The required rate of exactly 5.20 per over. Shows for them out कितने यहाँ पर जगली चरकेस के बल्लेबाजी से 26 का लक्ष्य पहुंच पाते हैं या नहीं. फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे यहाँ पर जगली चरकेस की पारी की शुरुआत. तो अब वक्त है थैंक यू धन्यवाद और सब टाइम वो दीजिए. थैंक यू. ಮಂಗಳೂರು MLA ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ವೇದಿಕೆ ರೈಲ ಸಜಿ ಅಂಕ ಸ್ವಾಗತಿತ ಸಜಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ మహామాయ క్రికెటర్స్ టాస్ విన్ ఫీల్డింగ్ చూసుకెళ్ళా.
సారీ గోపూర్ గ్లాడియేటర్స్ టాస్ విన్ చేసి ఫీల్డింగ్ చూసుకెళ్ళా. Thank you so much, Gopi. Welcome back once again for the innings of team Jagali Cherkes against Shringeri Rising Stars. 26 is the target in the stipulated 5 overs, and wait and see how Jagali Cherkes will going to get this total. And the very important match here for both the teams, and wait and see how well these two teams are going to battle for the victory. Signal came from umpire to start off the match, and from the far end, it's going to be a bowler brought into attack. Karuna Sagar will going to start the proceedings, and batter will going to take the strike. Vinod Kamath, first ball, lovely delivery, beautifully bowled. This is what the target line the bowler Karuna Sagar have to target for Vinod, just outside the line of off stump, and just a bit of a deviation of the ball pitched outside the line of off stump, and wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler Karuna Sagar. Right, I'm over the, oh, this time a definite chance here for the wicketkeeper. And of course, he just tried his level best to get the catch, but I think he's hit the knee pretty hard into the ground. A slight a bit of problem for him, but I think it's going to be a difficult chance, isn't it? The thick is outside the bat. Wicketkeeper have to react quickly to the catch, but unfortunately, ball just missing his hand went into the boundary for 4 runs. With that boundary, they started their journey. Here comes delivery number 3. Right arm over wicket bounce. This time played straight runs of the fielder. Chance of run out. Direct it. And umpire will go into refer for the third umpire to give the decision. Well. The fielding side is very confident that he got the wicket, but you need to see that whether the batter is safe or not. A very interesting decision. It's definitely going to be a touch and go here for the third umpire to give the decision. And the team Shringeri Rising Stars desperately wanted to get this wicket of Venkatesh by the very dangerous left-hand batter. Just have a look at in a replay. After Vinod taps the ball right in front of bowler, and bowler on his follow-through, Karuna Sagar picks the ball and returns the ball to the hands of course, hit the stumps in the striker's end. And at that time, whether the batter is safe or not, a wonderful cricket tournament is in progress. Day number 2 of prestigious SVT Trophy 2026, which is proudly presented by SVT Volunteers Association, Karshit Mangalore, and which is powered by Abharan Jewelers since 1935. And wait and see what could be decision from third umpire here. Everyone's eyes into the commentary box whether the batter is safe or not. And even the time is exactly 10 past 45, but still we can see that fantastic crowd enjoying the game of cricket. This is day number 2. Tomorrow will be the last day and final day, and champion decider day in the junior category, sub-junior category, the senior category, and of course in this particular category. And wait and see which team will going to become the champion. And very attractive trophies, the champions trophies, which is then left of the main stage, and with the silver coated, each and every team's dreams to lift that prestigious SVT trophy. 6. Night. The cool night, isn't it? And month of December, January is probably a little bit the winter season, and perfect condition for cricket as well. So it's going to be a tough one for the umpire to decide whether it's going to be out or not. And technical department of V424x7 channel under the great leadership of Manika will going to provide some angles which is for the third umpire to decide whether the batter is safe or not.
खंयचे प्लेयर आले जेवण जायन जाल्यार आनीक नेक्स्ट 10 मिनिट भितर तुम्ही वचून जेवण करून येवका. फूड कोर्ट एक 15 मिनिट्स भितर क्लोज जाता. जाल्यार तितलोगी जेवण जायना तिले प्लेयर्स जावं की ग्राउंडा कोणूय आसा जी जेवण जायना तिल्यांनी ओग्गी फूड कोर्टा वचून जेवण करून वापस येवका. तई अंपैर अफिशियल्स कोणे वच्चानज दयकोर्नु कंचे टीम प्लेयर अट्ला तगदेवंकते कोणे जवा मागीर नाव पण तगदेवंक जाता दयकोर्नु
So he's gone, third umpire addition, which is came here. The Venkatesh is short of his crease.
इमिडिएट मैच स्टार्ट जाऊ का गोपुर ग्लॅडिएटर्स फील्डिंग ओवर टू कमेंट्री टीम ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಶಾಸಕರೇ. SVT ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಸೀಸನ್ 4ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೇನ್ ಗ್ರೌಂಡಿನಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. V4 ನ್ಯೂಸ್ ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಗೋಪುರ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಗೋಪುರ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ won the toss. Yes, Gopur Gladiators have won the toss and they have elected to field first. ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಯಾವುದೇ ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥವ್. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನಿನ ಮುಖೇನ. ಎಸ್, ಮೊದಲ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 4ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾನ್ಮೆ ಆಟ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಸ್, 5ನೇ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕು ಸೌರಭ್. ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತ, ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎದುರಿಸುವಂತ ದಾಂಡಿಗ ಪಾರ್ಥವ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಗುಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್. 5 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಸೌರಭ್ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯರಾಜ್ ರವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಎಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅನಂತೇಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಧಾಟುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು 1 ರನ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಬೇಕು ಅನಂತೇಶ್. ಪಾರ್ಥವ್ ಎದುರಿಸುವಂಥ ದಾಂಡಿಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾನ್ಮೆ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಥವ್. 1 ಸುಲಭ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಎಸೆಯಬೇಕು ಅನಂತೇಶ್.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಕೂಡ. 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ವಿಜಯ್ ರಾಜ್ರವರ ದಂಡು ಗರ್ಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ ಬಂತಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಂತೇಶ್ ಎದುರಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗೆ ವಿಜಯರಾಜ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕು ಅನಂತೇಶ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಮೆಂಟೇಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಪಾರ್ಥ್ ಅವರವರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ದಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಓಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 19 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಎಸ್, 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ತಾನನ ಭರವಸೆ ಎಸೆತಗಾರ ಪುಂಡಲಿಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ತಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥವ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತ, ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಕವರ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರ್ಥವ್ ರವರ ದಾಂಡು ಮುಖೇನ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಪುಂಡಲಿಕ್ ಟು ಪಾರ್ಥವ್. ಇಲ್ಲಿ 30 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉತ್ತರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಪಾರ್ಥವ್ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಆಟಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶನೈರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಐಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರಾಜಾಂಗನ್ ರಾಯಲ್ ವರ್ಸಸ್ ದಂಬೆಕಲ್ಲು ಚಾಲೆಂಜರ್. दोन्ही टीमा कॅप्टनानं तुमगेल टीम ರಿಜಿಸ್ಟರ್ कोरका. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ನಿನ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ 24 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ವಿಕೆಟಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು ಪುಂಡಲೇಖ. ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ವಿಜಯರಾಜ್ ಪೈ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುಡ್ಡಲೆಕ್ಕ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೀಜನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಮೈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. तशीच ही फाय फर्स्ट मॅच अग्रसाले सुपर किंग वर्सेस उग्राण सेवक. दोन्ही टीमानं 8:30 रिपोर्टिंग करका. 9 घंट्याक शार्प मॅच स्टार्ट जाता. पाय सुमार मॅच अशिल निमित्त आम्ही टाइमार स्टार्ट करता ती. अग्रसाले सुपर किंग आणि उग्राण सेवक साक नोटीस 8:30 रिपोर्टिंग. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ರಮೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ತಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು 4ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟ. 30 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವಾದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಣೈರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ವಿನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕಾಮತ್ ರವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಪುರ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕಡೆಯಿಂದ 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 30 ರನ್. ಎಸ್, ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಪೈರ್ ಮುಖೇನ. ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಎಸ್, 3ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಯಬೇಕು ರಮೇಶ್. ವಿಜಯರಾಜ್ ಪೈ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ವಿಜಯರಾಜ್ ತಮ್ಮ ದಾಂಡು ಮುಖೇನ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಮೇಶ್, ಎಡಸೊಂದ ದಾಂಡಿಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯರಾಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯರಾಜ್. 3ನೇ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕಾಮತ್ ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಎದುರಿಸುವಂಥ ದಾಂಡಿಗೆ ಹೊಸೊಬ್ಬ ಅರ್ನಾವ್ ಯುವ ಆಟಗಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, ಯುವ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು ರಮೇಶ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಮತ್ತೊಂದು 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ 44 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟ ಮಾಮಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮೋಹನ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಕಪ್ತಾನನ ಭರವಸೆಯ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ. ಎಸೆಯುವಂತ ದಾಂಡಿಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು
ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಸುಲಭ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಎಸ್, 5ನೇ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ತಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ, ಕವರ್ಸ್ ಮುಖೇನ 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಮಾಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸತತ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 3ನೇ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನದ್ದು. ಅಶ್ವಿನ್ ದಂಡು ಗರ್ಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು ಮೋಹನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸತತ ಬೌಂಡರಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮೋಹನ್ ಪೈ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಹೊಡೆತ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಪುರ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ. राजांगण रॉयल आणि दंबेकल्लू चॅलेंजर कॅप्टनाना वेदिकेर काटोसाक. ಎಸ್, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ತಂಡದ ಗೋಪುರ್ ಗ್ಲಾಡಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 55ರ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಮಾಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. इस एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने फिर राष्ट्रभाषा हिंदी में गोपी सर के सामने आपके सामने कमेंट्री के लिए एक और बार गोपी सर. थैंक यू, धन्यवाद. धन्यवाद शैलेश, आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए. राज्य भाषा कन्नड़ में बेहतरीन आंखों देखा हाल आपने सुनाया. और जहां तक सवाल है इस वक्त 55 रनों का, 55 द टारगेट. गोपुर ग्लैडिएटर्स के लिए पिच
55 the target set by Mahamaya cricketers for Gopur Gladiators. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है. Exactly 13.7. In fact, the required run rate is exactly 11 runs per over. They have to score for victory 55. They have to score with the stipulated 30 deliveries. That means they are stipulated 5 overs. And the innings now going to start. Lakshmish गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर विकेट. पहली गेंद अच्छी गेंद थी इस वक्त पैरों पर टकराई और इस बार रनों का खतरा, लेकिन निशाना इस वक्त टल चुका है. निशाना इस वक्त चूक चुका है, खतरा टल चुका है और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर. अपने कंधे पर कुछ हद तक बॉलिंग आर्म पर कुछ हद तक दर्द महसूस करते हुए गेंदबाज लक्ष्मीश और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. इस बार पैरों पर टकराई, एक बार फिर से गेंद को उछालना चाहता, चूंकि टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती हुई और गेंद जब तक फील्ड बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. निश्चित रूप से एक आक्रामक शुरुआत, एक्सप्लोजिव स्टार्ट की इस वक्त जरूरत है गोपुर ग्लैडिएटर्स को. उन्होंने 55 रनों के विशाल से लक्ष्य तक पहुंचा है तो निर्धारित 5 ओवर में. और इस बीच गेंदबाज लक्ष्मीश गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद कट किया, स्टीयर किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. Just struck to the back foot at the last moment. Is just steering it away down to a gully area for a boundary. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर. बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ पुंडरीक और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर. 5 ऑन द बोर्ड और लक्ष्मीश गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस मोड़ दिया इस वक्त. स्क्वायर लेग पर 1 more बाउंड्री. कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर पुंडलीक. और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ 55 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचना है तो ऐसे स्ट्रोक्स इस वक्त खेलने ही होंगे. पहले ओवर से राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर और हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ. स्क्वायर लेग पर 4 रनों के लिए लक्ष्मीश अगली लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर था विकेट. ये गेंद स्टीयर करना चाहा, बेहतर गेंद इस वक्त. फैंटास्टिक डिलीवरी, kept lower at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. And the scoreboard stays at 9 on the board in the over number first in progress. Still a ball left in this over और लक्ष्मीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त. once again good one और गेंद को हल्के से कट करना चाहता चूंकि ओवर की समाप्ति फर्स्ट ओवर कंप्लीट. फर्स्ट ओवर गोपुर ग्लैडिएटर्स chasing the victory target of 55 in 5 overs. Steady start for them. It's 9 for none after completion of first over. Now 46 to get in remaining 4 overs and the required run rate is now straight away gone up to exactly 11.5 runs per over. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज राघवेंद्र शनय RS और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अनंतेश भाई. जहाँ तक अनंतेश भाई का सवाल है पिछले मैच में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था और इस बीच सामना करने के लिए तैयार. इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा चूंकि लगभग बल्ले का अंदरूनी किनारा बॉटम में टकराने के बाद गेंद इस वक्त फील्ड होते हुए विकेट कीपर द्वारा रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर. द स्कोरबोर्ड स्टेज एट 9 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर. इन फैक्ट इस बीच ये बेहतर गेंद थी इस वक्त. ये गेंद काफी बेहतर थी इस वक्त. ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद को इस वक्त खेलना चाहा चूंकि भाग्यशाली रहे कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा इस वक्त नहीं टकराया. बेहतर गेंद थी गेंदबाज राघवेंद्र शनय द्वारा और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए इस वक्त खेल दिया. Just rocked on the back foot and punched it away through the offside. Then finds the gap as well. और इस चौके के साथ और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर. 13 on the board. Have a look at this in the replay. This is an outstanding struck and he just hammered it away, pulled it away on the onside for a boundary. Good one, perfect leg cutter. ऑनसाइड पर गेंद को उछालना चाहता शफल होते हुए थोड़े से, लेकिन चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका इस वक्त 13 रनों पर. स्कोर स्टेज एट 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस. और अगली गेंद ड्राइव्स परफेक्टली. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक, लेकिन फील्डर मौजूद एक्स्ट्रा कवर पर और इंपीरियस कवर ड्राइव इस वक्त खेला था खूबसूरती के साथ.
लेकिन फील्डर वहां पर एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद था। स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ अब पहुंच चुका है 13 रनों पर, 13 विदाउट लॉस कॉपी। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार राघवेंद्र शनाय। ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना, 4 रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर रनआउट का खतरा नहीं। दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी, नो वन इज बैकिंग अप देयर एट मिड ऑफ, और कोई बैकअप वहां पर नहीं था। विकेट कीपर का थ्रो इस वक्त पहुंचा, लेकिन बैकअप करने वाला कोई नहीं मिड ऑफ पर। और देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था, रिप्ले पर दिखाया जा रहा है एलईडी स्क्रीन पर। So 4 gifted runs added into the account of Gopur Gladiators, 5 runs total added into their total। और इस रन पंचक के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर, 19 without loss, 2 overs completed। Now the equation stands 36 to get from 18 deliveries। और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ विजय राज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं। विजय राज पई जो कि ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का। और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 20 रनों पर, जबकि तीसरा ओवर राउंड की पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। विजय राजपाई अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए कट करना चाहा, परफेक्ट ऑफ कटर गेंद थी इस वक्त और चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। हर डॉट गेंद के साथ दबाव बढ़ता हुआ इस वक्त गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों के ऊपर। जहां तक चौकों का सवाल है, इस वक्त चंद चौकों की उन्हें सख्त जरूरत है यहाँ पर इस मैच में कमबैक करने के लिए। और विजय राज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ड्राइव कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर पर तेजी के साथ 1 रन के लिए अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 21 रनों पर, 21 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और जहाँ तक अगले मैच का सवाल है, जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, Rajangan Royals will take over Dambekallu Challengers in the next match and that will be the last match of tonight, will be played right after this match। Next up से बाहर, fantastically turned it away, turns it away fantastically by अनंतेश भाई। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 25 रनों पर। बिडो लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त मोड़ दिया था अंतिम अक्षर में। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को इस वक्त मोड़ा खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग पर चौके के लिए अनंतेश भाई ने। 25 रन, 15 balls gone, 15 balls still have to come, 25 runs already scored, 30 runs more run now they have to score for victory in remaining 15 deliveries। और विजय राज अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप से बाहर, डिफ्लेक्टेड, 1 more बाउंड्री। और गोपुर ग्लैडिएटर्स की उम्मीदों को इस वक्त बरकरार रखते हुए बल्लेबाज विजय राज कुल मिलाकर स्कोर इस वक्त बढ़ चुका है 29 रनों पर, 29 विदाउट लॉस। एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले, डिफ्लेक्टेड दैट वन फाइन, जस्ट वाइड ऑफ विकेट कीपर एंड फाइंड्स द गैप एज वेल एट लास्ट। और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। विजय राज 26 टू गेट फ्रॉम 14 डिलीवरीज, 2-3 चौके लगातार अगर गेंद बल्लेबाज लगाते हैं तो निश्चित रूप से इस मैच में वापस आ सकते हैं। और विजय राज अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप पर अगेन अ बाउंड्री, द होप्स इज स्टिल अलाइव फॉर गोकुल ग्लैडिएटर्स। In fact, the hopes is still alive for गोपुर ग्लैडिएटर्स। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त मोड़ा था अनंतेश भाई ने, काबिल तारीफ। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। नाउ 22 टू गेट फ्रॉम 13 डिलीवरीज। और विजय राज कुछ हद तक महंगे इस ओवर में साबित हो चुके हैं। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंपर, बेहतर, ओ मिसेस एंड दे गॉन थ्रू फॉर क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली। विकेट कीपर का थ्रो इस वक्त चूकता हुआ और बाई के रूप में दोनों बल्लेबाज 1 रन यहां पर पूर्ण करते हुए और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 34 रन पर। 3 गॉन, 34 फॉर नन, 21 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 2 overs, दैट मींस इन रिमेनिंग 12 डिलीवरीज।
अर्नव गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए चौथा ओवर शुरू होता हुआ गोपुर ग्लैडिएटर्स की पारी में पानी ग्रहण इस वक्त करते हुए बल्लेबाज अनंतेश पै और क्रीज पर वापस लौटते हुए फर्स्ट बॉल कम्स अर्नव 21 टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज और अनंतेश पै इस वक्त उम्मीद की किरण दिखाई देते हुए गोपुर ग्लैडिएटर्स के लिए एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए तैयार। बेहतर गेंद थी एक्स्ट्रा मच स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द बॉलर अर्नव और गेंद को खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। 11 गेंदें बाकी 21 रन चाहिए। 21 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 11 बॉल्स। अर्नव इस बार चूके और इसी के साथ विकेट गिर चुका। फ्रस्ट्रेशंस इस वक्त दिखाई देता हुआ अनंतेश पै के चेहरे पर और निश्चित रूप से 2 लगातार डॉट गेंद खेलने के बाद यहाँ पर कुछ हद तक फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे और आखिरकार स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूका और विकेट कीपर ने आसानी के साथ पर बिल्स गिल्लियां उड़ा दिए। Now the equation seems to be stiffer a little bit. 21 to get from 10 balls now for Gopur Gladiators. Or new batsman is now comes out to the middle. सौरभ भक्ता नए बल्लेबाज के रूप में और वो इस वक्त सामना करेंगे अर्नव की गेंदों का। अब ऐसा कहना पड़ेगा गोपुर ग्लैडिएटर्स को सिर्फ चौके ही इस मैच में वापस ला सकते हैं। अर्नव अगली गेंद लेकर तैयार। सौरभ भक्ता नए बल्लेबाज सामना करते हुए get some extra bounce, get some extra bounce. This is a good one from the bowler Arnav. Just missing outside the off stump and went into the hands of wicket keeper and there is no possibility of any run. और फिर से एक बार अर्नव गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए again a beaten, asking for wide, no says umpire because the ball not so missing too far inside the off stump. और निश्चित रूप से बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए अर्नव और हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों के ऊपर। अर्नव the next delivery comes, full toss, firmly fielding. This is an absolutely fantastic fielding made by the bowler himself on his follow through और रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। Now equation start 21 of 7, 3 runs per ball. Now they have to score for victory. 3 रन प्रति गेंद पर बनाना जरूरी बन चुका है इस वक्त। अर्नव वाइड पहला रन इस ओवर में। पहला रन 5 डॉट गेंद फेंकने के बाद पहला रन वाइड के रूप में प्रदान कर चुके गेंदबाज अर्नव। 35 on the board now, 20 runs to get from 7 balls. अर्नव ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड अगेन। 36 now for 1 और इस बीच अर्नव इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, हियर ही बॉल्स लास्ट टाइम इन दिस ओवर। Good one, fantastic delivery to end the fantastic over. Just 2 wides conceded by Arnav in this over, and because of this over, I must say, Mahamaya cricketers are now looking right on top. Now, 19 runs to get from the last 60 overs. That means from the last over for Gopur Gladiators. तो इस वक्त अर्नव का बेहतर ओवर समाप्त हो चुका है और उनके जुड़वे भाई इस वक्त ट्विन ब्रदर पार्थव इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और देख रहे हैं कि अपने जुड़वे भाई की तरह, अपने ट्विन ब्रदर की तरह क्या पार्थव भी इस अंतिम ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी कर पाते हैं या नहीं। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। 19 टू गेट फ्रॉम 60 डिलीवरीज। फर्स्ट बॉल, पहली गेंद of break गेंदबाजी and this time he pulled that one. Now 15 to get from 5 balls. हर गेंद पर चौका लगाना इस वक्त जरूरी बन चुका है गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों के लिए इस अंतिम ओवर में। पुंडली का बल्लेबाज हैं
लगभग 5-6 गेंदों में 5 चौके लगाने जरूरी थे, अब 5 गेंदों में लगभग 4 चौकों की जरूरत है विजय के लिए। 15 रन चाहिए 5 गेंदों पर। और गेंदबाज पार्थव Sear, and this time production out that he just got a single. Now 4 balls left and almost 4 boundaries required. 14 to get from 4 balls. The last chance in front of the batsmen of Gopur Gladiators. 3 चौके और एक कपल की जरूरत बचे हुए 4 गेंदों में। और पार्थव इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पार्थव अगली गेंद लेकर तैयार। Lofted and is gone. It just hit that one full tossly over the fence at mid-on, and because of that he lost his wicket. Now अगर 3 गेंदों में गेंदबाज पार्थव कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो महामाया क्रिकेटर्स की विजय यहां पर निश्चित है। 14 रन चाहिए 3 गेंदों पर, लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना अंतिम गेंद फेंकी जाए। और देखते हैं यहां पर जहां तक सवाल है, देखते हैं 3 गेंदों में क्या होता है। के हत्तमतो एम क्यू 0453 ಕೆ 19 ಎಂ ಕ್ಯೂ 0453 ಈ ನಂಬರ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಕೆ 19 ಎಂ ಕ್ಯೂ 0453 ಈ ನಂಬರ್ನ ಕಾರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ನ ಲೈಟನ್ನು ಕೂಡ ಉರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तो इस वक्त गेंदे बाकी है 3 और रन चाहिए 14। बातचीत इस वक्त चलती हुई पार्थव के लिए टीम के अन्य खिलाड़ी इस वक्त कुछ समझाते हुए कि किस सही तरीके से उन्हें बचे हुए 3 गेंदों को इस वक्त फेंकना है। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। पार्थव नए बल्लेबाज न्यू मैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। तो इस बीच पार्थव गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। टर्न्स बाउंड्री रिजल्ट्स नाउ 2 balls left and 10 runs required। अगर 2 चौका भी लगाते हैं तो यहाँ पर लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर गेंदबाज को नो बॉल या वाइड फेंकते हैं यहाँ पर तो शायद कुछ बात बन सकती है यहाँ पर गोपुर ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों के लिए। और पार्थव अगली गेंद लेकर तैयार। ड्राइव्स अगेन अ बाउंड्री, नाउ 6 रिक्वायर्ड फ्रॉम द लास्ट बॉल। और इस वक्त पार्थव को चाहिए एक सही गेंद, 1 राइट डिलीवरी नीडेड फॉर पार्थव उनकी टीम को विजय दर्ज करने के लिए। तो अगर कोई नो बॉल या वाइड इस अंतिम गेंद पर पार्थव फेंकते तो शायद यहां पर गोपुर ग्लैडिएटर्स के लिए मौका पैदा हो सकता है। और अंतिम गेंद लेकर पार्थव इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नॉट कमिंग अप। सही गेंद ड्राइव किया चौके के लिए, हैट्रिक बाउंड्री, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर देम। दे लॉस्ट द मैच बाय जस्ट अ सिंगल रन। 1 run thrilling victory for Mahamaya cricketers against the Gopur Gladiators, and with that 1 run a single thrilling victory, they are moved to the next round. In fact, with that 1 run thrilling victory, they back the complete points. So the match number 9 of the day 2 of this prestigious cricket tournament is now going to end, and the 10th and the last match of the night is now going to play between Rajangan Royals versus Tamil Nadu Challengers of this prestigious cricket tournament. SVT is now going to start with just short while. धन्यवाद. लास्ट मॅच दब्बेकलो चॅलेंजर्स ट्रॉफी फील्डिंग येतील असं आता मॅच झालेला आहे. महामाया आणि गोपुर तुम्ही ग्राउंड क्लिअर करून देऊ का दयकोरनो. महामाया क्रिकेटर्स आणि गोपुर ग्लॅडिएटर्स टीमानं तिथलो की ग्राउंड क्लिअर करून देऊ का.
राजांगण रॉयल्स टीम आणि दब्बेकल्लू चॅलेंजर्सांना दलतीतलोकी क्रिकेट खेळू येवका 20 मिनिट्स डिले आसाती थंय कोरनो दलतीतलोकी मॅच स्टार्ट करा तशी ती आमगेल्या ऑर्गनायझिंग कमिटी हांगासरची ऑर्गनायझिंग कमिटी ग्राउंडा खंय आसतारी दलतीतलोकी वेदिकेर येयाती मॅच जातरी इमिडिएट येयाती organizing committee ಬೈಕ್ ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರಾಜಾಂಗಣ ರಾಯಲ್ ದಬ್ಬೆಕಲ್ಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಲ್ದ ಶೂಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಲ್ದ ಶೂಟಿ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ನಾಮ್ ಕರ್ದ अश्विन पైన దర్శకులకి వేదిక మీద మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ సెలెక్ట్ Royals winning the toss. Rajangan Royals captain elected to ball first, and a signal came from umpire Dikshit, and everything is ready here for the match, last match of day number 2 and day night, in fact, number 2 of this prestigious cricket tournament. Tomorrow will be the day night match. We're going to start the first match in the morning exactly at 9 a.m. The first ball, the bowler brought into attack, Gopal Bhatt to right-hander batsman Vittal Bhatt. Lovely delivery, beautifully bowled, perfect one in the negation. The batsman absolutely not to mind whether go for the cut shot or not, because the line is so good in the negation. Batsman almost catches in the crease, tried to get the ball into the offside region, missed it completely, no run scored. Vittal Bhatt is on strike. Gopal Bhatt, right above the wicket, nicely driven, a beautiful shot. Oh, this time I think the fielder won't get that one. Vivek in the negation, down attack, long mid-off region, tried to stop the ball from his feet, but missed it completely in the wicket, and ample time. Of course, the ball defeats the fielder and went into the boundary for 4 runs. 4 without loss of any wicket in the over number first is in progress. And Gopal Bhatt trying for restriction of the runs in the first over. And here comes the next one. Beautifully ball. Again, almost the ball is coming into the batter off the leg. And angling round the wicket, and that will be the very good line to bowl when you're bowling round the wicket, pitching the ball almost in the midline leg stump and keeping the batsman in the crease, and that means the good bowling there from Gopal Bhatt. Good comeback after that boundary. Again with his effort, slashed it, and this time a big man has to field the ball. A big round of applause coming for the big man down at backward point region, fields the ball. And 4 without loss of any wicket. I'm really love to see that excitement and in the crowd. Even the time is exactly at 12 o'clock in the night, late night, but still they are very excited to watch cricket. Down the leg side, nothing much to do with the delivery. Left the ball into the hands of wicketkeeper Narsim Pai behind the stump. And fields the ball, and white call by umpire. With that, extra score moves on to 5 without loss of any wicket. Gopal Bhatt still searching for the right track, and here comes the next one. Right arm over the wicket, bows driven, beautiful shot, perfectly driven there by Vittal Bhatt. Ball is absolutely in the slot, and batsman just need to drive the ball in the perfect placement into the mid-off region, straight down the ground. A lovely stroke. Second bound of this over, and no chance for the mid-off fielders to stop that one. 9 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Gopal Bhatt again to Vittal Bhatt. Again, square of the wicket, plays it very nicely. No one there in that gully region. Quite deliberately, Vittal Bhatt rocks back and plays it very nicely. Square of the wicket, played it very late.
3 boundaries in this over. And with that 3 boundaries, team Dambekollo Challengers has got a flying start. It's a good start. 13 without loss of any wicket after completion of over number first. This is the last match of the day, number 2, day night of prestigious SVT Trophy 2026 tournament, which is played under floodlight. And tomorrow we are going to play under natural light as well as under floodlight. And of course, in the night we will going to decide which team will going to become champion. Lovely shot, a beautiful shot. After Vittal Bhatt scored some boundaries, now Datta is joining the party. Sri Datta just rocks back and plays it absolutely beautiful square cut. Just have a look at the stroke. Played it between cow point and backward point. One more short pitch delivery, but this time a little bit away from his body. Datta just wanted to reach to that delivery, which is a shot outside the line of off temp. The bowler brought into attack to bowl the second over, Aditya, but good all-rounder for the side. Played it nicely in the mid-off, not for run. Rightly so. He's sending his back, Aditya, but no, exactly, there is no chance at all for any run. Now, straight away, the batter, Vittal Bhatt, having some word with the Aditya Bhatt, maybe about the game plan, how to get the runs. Again, Aditya Bhatt balls far outside the line of off time. Nothing much to do with the delivery. White call by umpire. And with that extra score, but moves on to 18 without loss of any wicket in the over number. Second is in progress. Again, slashed it. Good piece of fielding. Excellent work. Vivek, the big man, is in the picture again. Absolutely. Now have a look at that. Just like in international stadium, Virat, less like Vivek in this round. A lovely delivery. He missed it completely, missed the line completely, and uprooted the middle stump, Aditya Bhatt. Fantastic ball in the negation from Aditya Bhatt. Just have a look at it in the replay. Coming down the track, using his feet, but the inside edge of the bat drags it into the stumps. The first wicket back in the pavilion. 18 for 1 in the over number second in progress, and Aditya Bhatt has got a vital breakthrough for his team, and the new batter came into bat, Gopal Krishna. Gopal Krishna, the new batter in as a number 3 batter for the side of team Dambekollo Challengers. This time, lovely delivery. The perfect delivery toward the fresh leg. The last delivery, which is a dot one. After completion of over number 2, it's 18 for 1. Team Dambekollo Challengers against Rajangan Royals. Rajangan Royals in their opening match, of course, they faced a defeat, and they need to come back very strongly in this particular match if they wanted to win this match. And Dambekollo Challengers coming back, these two teams also, they faced a defeat. So this is a battle for the victory. Two defeated teams in the league stage matches. Both the teams desperately wanted to open the accounts in the points table. Narsim Shenai brought into attack, the experienced campaigner, and wait and see how well Narsim Shenai will going to restrict the runs of their opposition, and fielding arrangement is made here in the offside region. The fielder at gully, one fielder at backward point, one at cover, extra cover, mid-off. Altogether 5 protection has been given in the offside region. There is a mid-on, there is a square leg, and one at short fine leg. 3 fielders in the onside region, and Vivek is standing behind the stump. This time, short pitch delivery all the time in the world. Easily done by Vittal Bhatt. And short all the time in the world, just like a Natraj stroke. And usually that stroke which is invented by Kapil Dev, our former Indian captain. And here comes next one. Right arm over the wicket, off the back foot, played it nicely in the gap. And once again, one more boundary, back-to-back 2 boundaries here. And again, Narsim Shenai is pitching his shot outside the line of off temp, and good enough for Vittal Bhatt to read that short pitch delivery and plays it off the back foot into the gap for 4 runs.
So 26 for 1, and Vittal Butt is batting on 20. Again off the back foot, pulls it away in the gap. No one there in the mid wicket. Fantastic placement. Hat-trick, 3 boundaries. 3 deliveries and 3 boundaries from Vittal Butt. Takes the total score into 30 now for the loss of 1 wicket. This time driven, and 4 in a row. The 4 in a row, and he is absolutely on fire. Vittal Butt seeing the ball like a football now, after he spent time in the middle, and King is facing 5th delivery of this over. Driven, this time first much required dot ball. Not Simpson at last managed to get his line and length after 4 consecutive boundaries in the field last time in this over. Right arm above the wicket, he bowls, and chance for the fielder to take the catch, and he completed. That's it. Vittal Butt's entertainment innings, which has come and played some enterprising cricketing stroke, and is definitely will going to get standing ovation and from the teammates, the way that he batted in this particular match, absolutely fantastic. Scored 28 runs and 34 for 2 after completion of over number 3. So still it's a good number of crowd enjoying the game of cricket here, and they just wanted to see their favorite players, favorite teams. They wanted to encourage. This is one of the very good concept from the organizer, SPT, Volunteers Association, Karshit, to have a golden opportunity for every categories, the sub-junior, junior, senior. The first ball of the over number 4 starts with a dot ball. Bowler brought into attack to ball. The first delivery of the 4th over, Aditya Nayak brought into attack. Tall man. This time again played it. This time Narsim Sen quickly react to that ball, which is deflected from the leg of Gopal Krishna Pai, and GK Pai will going to face next delivery of Aditya. Right arm over the wicket. Oh, helicopter shot is attempted, but straight to the bowler. Just a roll of the wrist which comes into play. GK maybe try to play that one just wide off the bowler on his follow through, and played it back to bowler, not for run. 34 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Aditya again. This time played it a square of the wicket, and the big man this time missed it. After that 3 stops by Vivek, this time I think mischarging that bounce in the relegation, and ball defeats his trying hands and went into the boundary. 38 for the loss of 2 wicket. Some fireworks coming here from the teammates for Vivek, but absolutely is doing his best. It's not so easy having such a heavy body and moving that much of quickly. So maybe that was a big ask for him. Here comes the next one. Oh, wanted to go for the pull shot. Will going to miss the line. White call by umpire. 39 for the loss of 2 wicket. Aditya back to his bowling mark, searching for the wicket, searching for the dot ball for his team. Here comes again, right arm over the wicket, he balls. Try to turn the ball on the onside region. Quickly they're going for the single chance of run out. The young man then at short final region has in a 2 mind whether go for the hit or himself run towards the stumps to make the run out. But it's too late for the fielder to make the decision. Narasimha, the very young player down at short fine leg, is 40 for the loss of 2 wicket. And again outside the line of off stump, and one more over completed. Altogether there is 2 Narasimha in that team. One is the senior Narasimha, one is the junior Narasimha. One is the Rohit Sharma, the 45 jersey number, another is 7, MS Dhoni. So last over remaining now in their innings, and wait and see how many runs the team Dambekallo Challengers will going to get that remaining. Suhas brought into attack to ball the last over, and GK will going to take the strike of Suhas. First delivery. Short pitch. My goodness.
GK smashes that one, but unfortunately ball went out of the boundary line. He need to pack in the pavilion for that pull shot. And a lucky breakthrough for the bowler as he bowled a short pitch delivery. Suhas Kamath and new batter in, coming to the middle with one more experienced campaigner for the side. And Ramanath, the very good striker of the ball, is coming down in the order as number 5 batter for the side of Dambekul Challengers. And wait and see how well Ramanath will go into face. Ramanath, 5 deliveries remaining of this over. Suhas again, second time in this over. Again, shot outside off attempt. So easily Ramanath smashes that one into the mid-off for a boundary. The very short indeed there from Suhas Kamath. And thank you very much from Ramanath for the bowler for that loose delivery. 44 for 3 now in the over number last is in progress. Have to restrict the runs. Already there are 44 on the board. Good runs on the board for the team. Dambekul Challengers. Both the teams desperately wanted the victory here because they lost their first match in the league stage. Again, right above the wicket off the back foot. Played it very nicely in the gap. A good fielding there by the fielder. Excellent stop. 45 for 3. No power whatsoever in that stroke there from Ramanath. That's why the ball didn't travel quickly to the fence, but completed a single. 45 for 3. Again, lovely delivery indeed. Batsman this time overthrow, wanted to get the single. Vivek returns the throw and Ramanath managed to complete that run. And one more single in the form of overthrow. They got the runs of 45 for 3 in the 46 for the 3 correction. And last 2 balls remaining in the innings. Ramanath will go into face Suhas, 5th time in this over. Again, played it straight to the hands of Extrakawa. Off stop by the fielder, completes a single. 47. Now Akshay will go into 47 for 3. Last time Suhas. Lovely shot and good fielding. Excellent fielding by the fielder. Just a single. Now Vivek, absolutely. They complete the single, not more than a single. Then that's it. Dambekul Challengers finish. Subramanya played a fantastic fielding performance there from Subramanya in that mid-on. Diving effort, saving the boundaries. And 49 is the target now for the team. 49 to win the match for team Rajangan Royals. And wait and see how Rajangan Royals will going to get this total. And before the next innings will going to start off Rajangan Royals. There's a time for change in commentary box. Final time today. We'd like to invite Shailesh will going to have the mic here, and the one more young commentator in state language, Kannada. It's over to Shailesh. Thank you. Yes, thank you, Saji sir, Madhu Gopi sir, throughout the day for the wonderful voice of this prestigious cricket tournament. Yes, it is the last innings of this prestigious cricket tournament, day 2. Yes, ಮೊದಲ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪೈ ಎಸೆದ ದಾಂಡಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಭಟ್
ಅಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಮೆ ಆಟ ಸುಲಭ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಆದಿತ್ಯ ಭಟ್ ಕೆನರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಡಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ದಾಂಡುಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಭಟ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ, ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಎಂಪೈರ್ ಮುಖೇನ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಾಡಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಟಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಭಟ್. ಎಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸಿಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಜಾನ್ಮೆ ಆಟ ಮುಖೇನ 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಜಾನ್ಮೆ ಆಟವನ್ನು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ. ಕೊಂಚಾಡಿ ಕಂಡಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ದಾಂಡುಗಾರ ಈ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ. ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ, ಯಾವುದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ. ತೃತೀಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಸೆತ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪೈ ಟು ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಅದೇ ಶೈಲಿಯ 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತವಿದು. ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈರವರ ದಾಂಡು ಗರ್ಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿದೆ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಐದನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, ಐದನೇ ಎಸೆತ ಎದುರಿಸುವಂತ ದಾಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ರನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ರನ್ನಿನ ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಟು ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಮೆ ಆಟ ಒಂಟಿ ಮುಖೇನ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ವಿಠಲ್ ಭಟ್. ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈರವರಿಗೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ ಆದಿತ್ಯ ಭಟ್. ಮೊದಲ ಎಸೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ.
ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ. ಒಂಟಿ ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಠಲ್ ಭಟ್ ಬಂಪ್ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಸಕಾರವಾದ ತೀರ್ಪು ಎಂಪೈರ್ ಮುಖೇನ 2 ಓಟಗಳು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬಲವಾದ ಮನವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಕಾರವಾದ ತೀರ್ಪು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಠಲ್ ಭಟ್ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರ ಆದಿತ್ಯ ಭಟ್ಟನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮ, ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬೌಲರ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲಕ್ಕೆ. 5ನೇ ಎಸೆತ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಲಯಬದ್ಧ ಹೊಡೆತ ಆದಿತ್ಯ ಭಟ್ನ ದಾಂಡುವಿನ ಮೂಲಕ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ತ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34 ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ರವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ मत्तोम्मे इस बार गेंदबाजी विभाग में रामनाथ और बल्लेबाजी के लिए नरसिम्हा। इस बार सीधा सीमा रेखा के पार 4 रन टीम के खाते पर जोड़ते हुए नरसिम्हा काफी आक्रामकता से खेलते हुए आते ही शानदार चौके के साथ इधर स्वागत किया नरसिम्हा ने। एक कहावत याद आ रही मुझे नरसिम्हा द्वारा। इस बार नरसिम्हा रिवर्स खेलने का कोशिश, सीधा सीमा रेखा के पार और एक 4 रन टीम के खाते पर जोड़ते हुए टीम का स्कोर हो चुका है 42। नरसिम्हा इस बार तीसरी गेंद इस ओवर की और एक बार रिवर्स खेलने की कोशिश और एक 4 रन। एक कन्नड़ा फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೋಪ ವಿಷ್ಣುವಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ನರಸಿಂಹನ ಕೋಪ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಈಗ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಬಾರಿ। ನರಸಿಂಹ ಇಸ್ ಬಾರ್ आखिरी गेंद क्षेत्र रक्षक ने बहुत ही अच्छी तरह से इधर फील्ड करते हुए बचा लिया। इसी के साथ 3 रन की आवश्यकता 14 गेंदों में। रामनाथ इस बार रनआउट की संभावना है, लेकिन ओवर के समाप्त होने पर टीम का स्कोर हो चुका है 46 फॉर नो लॉस। 3 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज आदित्य भट्ट इस वक्त राजांगण रॉयल्स की ओर से बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए। इस बार गेंदबाजी विभाग में अक्षय उतर चुके इधर गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद सामना करते हुए आदित्य भट्ट काफी हद तक मैच को अपने मुट्ठी में कर लिया इधर राजांगण रॉयल्स की टीम ने। इस बार पहली गेंद खूबसूरत सा शॉट, लेकिन इसको आउट करार दिया जाता है क्योंकि 30 यार्ड्स
जो श्रृंखला है इसमें अगर गेंद सीधा सीमा रेखा के पार जाती है तो आउट माना जाता है। इसी के साथ लेजेंडरी खिलाड़ी विवेक बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए राजांगन रॉयल्स की ओर से। काफी हद तक एक अनुभवी युद्ध खेलने वाला दोनों खिलाड़ी इस वक्त मैदान में उतर चुके। एक और 45 नंबर जर्सी के साथ नरसिम्हा और स्ट्राइक पर इस वक्त विवेक। काफी हद तक अनुभवी खिलाड़ी दोनों। अक्षय गेंदबाजी में इस वक्त रिवर्स खेलने की कोशिश, सिंगल चुरा लिया। इस बीच एक रन टीम के खाते पर जोड़ते हुए 2 रन की आवश्यकता 10 गेंदों में, सिर्फ 2 रन की आवश्यकता। क्या देखना पड़ेगा इस बार? नरसिम्हा एक स्टाइल के साथ, एक नोट के साथ इस मैच को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। इस बार खेलने की कोशिश जरूर थी लेकिन चूक गए उधर नरसिम्हा। 2 रन की आवश्यकता 9 गेंदों में। नरसिम्हा इस बार खूबसूरत सा शॉट लेकिन फील्डर मौजूद। 1 रन। ओहो हो, विकेट पतन होता हुआ वापस पेविलियन की ओर नरसिम्हा। रन आउट होते हुए इधर नरसिम्हा और नए बल्लेबाज राजांगन रॉयल्स की ओर से आधी 47 on the scoreboard, 2 more runs required. 2 गेंद चाहिए, 2 रन्स चाहिए, माफ कीजिएगा 2 रन्स चाहिए इस बार 8 गेंदों में। विवेक इस बार काफी हद तक खूबसूरत सा शॉट, सिंगल चुरा लिया। मैच अब बराबरी के हंत पर खड़ा हो चुका है और इसी के साथ 1 रन के आते ही राजांगन रॉयल्स इस मैच पर अपनी जीत कायम कर देगी। इस बार सिर्फ 1 रन के साथ इस बार रन आउट के चांसेस, लेकिन काफी हद तक खूबसूरती से रनिंग बिटवीन विकेट के साथ इस मैच को जीत लिया है इधर राजांगन रॉयल्स ने। थैंक यू।